माफी तलाफी की काफी पर आई काम नहीं जी आप वो लेती मेरा नाम नहीं pills pop I let the weed smoke sometimes just talking does not make the pain go तू ही आग तू ही उस पे पड़ती बारिश मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस तू ही छाँव तू ही धूप रंगों के साथ रूप तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसा रहे हंसा रहे जमाने को खुद से परेशान वो पढ़ती थी किताबें मैं पढ़ता हूँ इंसान भी क्या चीज है एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है इंसान भी क्या चीज है मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज एक तेरा नंबर नहीं है You left the city and you're gone बात करने को है बस ये माइक्रोफोन वही कागज वही कलम लहजे सख्त दिल नरम बदबख्त बस करो उदासी हर तरफ झूठे तेरे भरम किस बात पे तू बरहम पर हम क्यों अभी stuck like a jam on a one way but someday तू समझ जाएगी दूर होके हमसे कि हम में वो करार नहीं पहले वाली बात नहीं तुझे किया आजाद या दी है खुद को सजा लेकिन दिल के मोहल्ले में अब तेरा मकान नहीं आज फिर तू आई नहीं याद तेरी आई थी बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी आज फिर तू एक गुमान आज फिर तू शायरी सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती पर God damn it girl आज फिर तू आई नहीं याद तेरी आई थी बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी राजी दिल तो रजामंदम क्यों नहीं नई टापी पिल गाने लिखे ये शऊर भाई आज जिए बागी इसको कहते हम गुरूर नहीं दिले मगरूर तू भी खूब तो आराम देना सूद फिर I'm just a text away इतना भी दूर नहीं feels like yesterday सच का सबूत नहीं तू ही जवाल मेरा तू ही है उरूज ए लोगों से पूछे कलम लिखता झूठ नहीं गम देकर फिर दिला से कैसे मुंह पे तसल्लियां तो दुनिया में तमाशे कैसे हम आज भी कहते ना कोई रकीब ना हरीफ हम थे गरीब न जाने काटी हैं वो रातें कैसे कलम छोड़ या कलम तोड़ा वजन तोल नहीं हजम शोर ये हजम खोज तू सुरंग खोद तराजू ही नहीं जो तोलेगा ये डजन बोल तू रकम सोच इन लफ्जों की आजा जख्म तोल ए इंसान भी क्या चीज है एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है इंसान भी क्या चीज है झूठ की सजा नहीं तो तोहमतें लगाने पे यार ढील है तू जैसे रहमत तू ही हूर तू ही नूर कोई नूर तू ही साया तू ही धूप तू फितूर ये फतूर तू इतनी खूबसूरत के मैं लिखने पे मजबूर बादल सिराना क्योंकि दूर तूने तो हेलो भाई आज हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट मंदार भाई हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम सिंचन भाई ने क्या मैसेज लिखा है ये मेरे को तो नहीं समझ आ रहा भाई सिर्फ कैन हम लोग बेबी रैक फर्स्ट वन अरे मंदार भाई आप तो रोज के फर्स्ट हो भाई अब तो मेरे दिमाग में भी आप ही आते हो सबसे पहले अगर मैं सोचता हूँ कुछ स्ट्रीम करने का सबसे पहले मंदार भाई का मैसेज आता है भाई ये बात तो है आवाज़ वगैरह सही आ रही है क्या जल्दी बता दो बेबी रैक ब्रो वाज आवाज़ हाँ चल तो रहा है माइक लेट्स गो मंदार भाई ओजी है भाई मंदार भाई का स्टेटस वो हो गया अभी ओजी स्टेटस हो गया मंदार भाई का हेलो ध्रुव वेलकम टू द स्ट्रीम वो यार ज़रा पॉकेट निकाल लूँ जेब में से फ्रैक्चर और पर्ल हटा दिया क्या मतलब जब नेक्स्ट वो स्टार्ट होगा ना बढ़िया डैड यू से बढ़िया अभी घर आया हूँ यार मतलब असल समझो कि 5 मिनट हुए हैं घर आया हूँ आप ही सीधा स्ट्रीम शेड्यूल किए भैया एक हेल्प कर दो बोलो ध्रुव भाई हाँ पर यार आराम स्लीव वगैरह पहनना पड़ेगा पहले पानी पीऊँ यार मुझे 1 मिनट आ रहा हूँ 1 मिनट
FPS नहीं आ रहे, अब सब करके देख लिया। ध्रुव बता करता हूँ हेल्प, पर अभी मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं क्या हेल्प करूँ और क्या दिक्कत हो सकती है तुम्हारे उसमें। वो ना जब कंप्यूटर हाथ में हो ना तो ही चेक कर पाती हो आप अच्छे से। मेरे को भी एक चल चाहिए, बता दो भाई, आप भी बता दो क्या है, क्या हेल्प चाहिए पूछ लो आप। मेरा पूरा लुक खराब हो रहा है ये पहन के तो। चलो कोई नहीं, लुक का क्या करना है, कौन देख रहा है हमको। नया चेयर ले ले, पीठ दर्द नहीं करती क्या तेरी? स्पॉन्सर कर दो भाई। तो आज वार्म अप करना पड़ेगा, सुबह से अभी पीछे चालू किया है। अबे इसमें से ये तो मैं लूंगा नहीं, ये मुझे लेनी चाहिए निगाह घोस्ट है। ग्लिच पॉप फैंटम ले लूं क्या? बॉम्बे ऑनलाइन है, बॉम्बे एक स्किन दिलाने वाला है हमको। Match found. यार 70 तक आ रहे हैं, चल तू ले ले, बिल भेज देना। नहीं यार ये तो वो वाली बात हो गई। नहीं आप गिफ्ट कर दो भाई, हमें गिफ्ट आर एक्सेप्टेड, अदरवाइज नो। हाय वेजी अंकल, वेलकम टू द स्ट्रीम इंद्र नील भाई। अरे आदमी ने पोल नहीं डाला, छोड़ो यार मेरा मन नहीं कर रहा पोल वोल डालने का। ओह तुम्हें दिख नहीं रहा ना गेम। मंदार भाई राइजन 9 Dominating. ओ भाई इसमें तो 400 FPS आने चाहिए भाई, राइजन 9 में तो 400 FPS आने चाहिए। हाँ हाँ मार लो इसको, मारना है, अभी अभी चालू किया है सुबह से गेम, इसको मारना है तो मार लो। मंदार भाई जो भाई Dominating. देखा व्हाट द फक भाई, लैपी है क्या? हाँ है तो लैपटॉप, फिर भी आने चाहिए यार। Do what we do. Get back to chilling. Fight. मैं क्या बोलने वाला Let's था see how यार। it goes. देखा इंद्रनील का आपका कीबोर्ड भी नहीं चाहता मुझे अंकल बोलना, इसलिए गलत स्पेलिंग टाइप हुई थी। And you're done. हट। Got him. इतना लेट की मालिक बाहर गया था यार, अभी आया हूँ घर पे। गेड़िया मार रहे थे भाई। Bop. चैंपियन फैंटम लेने से क्या होता है हार्बर भाई? I'm good for 3. Got 4. ये होता है हार्बर, मेरा एस ले लिया चैंपियन फैंटम से। पूछना तो नहीं चाहिए पर चार्जर कनेक्टेड था। जेन्युइन क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन एकदम। मंदार भाई एकदम सही क्वेश्चन पूछा आपने। ओ भाई ये तो मुझे मार रहा है चैंपियंस फैंटम वाला तो। चलो चूजे See ya. वो तो नहीं बना, मैं सोच रहा हूँ नहीं नहीं वो उतना नहीं। Dominating. हाँ हाँ हाँ
ध्रुव ये डेथ मैच के बाद ना मैं बता दूं तुम्हें क्या क्या चीजें चेक करनी है तुमने ना एक Not बार के today, लिए। Fade. हट यार 30 GB खाली पड़ी, थोड़ा और खाली कर दो उसको। कुछ एम जिम नहीं है स्किन का, बता रहा हूँ। तो यार इंद्रनील भाई सबके पास स्किन है ना भाई, मेरा अकेले के पास थोड़ी स्किन है। और क्राउच क्यों किया मैंने? Folded. हाँ आपके पास क्रोनोवाइड है ना, चलो ओनी चलाता हूँ बस। मत कहना कि ओनी भी अब डिफरेंस मेकर है। Cállate. 10 kills जबकि remaining. फैंटम चलानी बंद कर दी है मैंने। I'm good for 3. और रे। ये होता है फैंटम, देखो बेकार गन है साले। फिर वही होता है अभी। 5 kills remaining. I'm good for 3. Got 4. Damn. 1 kill remaining. Dominating. क्रॉसर वफ है क्या? आईजी पर फॉलो कर लो, स्ट्रीम नहीं है तो डीएम स्पैम कर Much देना। love, team. अभिनव भाई का है यार, उनका भी डीएम आया था मेरे को 5-6 लोगों का डीएम आया भाई। स्ट्रीम आज की स्ट्रीम अभी देखा मैंने घर आके। फोन भी 1% था, मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा वार्म अप लगेगा भाई आज तो। हाँ अभी पूरा देख लेते हैं क्या क्या। ध्रुव किधर है? ध्रुव देखो तुमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले इधर जाना है और इसमें थोड़ा स्पेस कर देना सी ड्राइव में जहाँ पे तुम्हारा वैलोरेंट इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है तुम्हें। दूसरा काम ये करना है %10% डाल के ये सब उड़ा देना। बेसिक चीज़ें पता ही होगा तुम्हें वैसे तो। और चार्जर कनेक्टेड है वो देख लेना। और सेटिंग में जाके तुम्हें ये चीज़ करनी है तुम्हारा तो यार। हाँ मेरी वाली सेम ही कर लो ये चीज़, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेज फोर्टनाइट खेल के आई और ये होगा ऑन प्लस बूस्ट लगा देना। लिमिट एफपीएस ऑलवेज कर देना। अभी 200 कर दो, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि जैसे तुमको अगर 350 एफपीएस आते हैं मैक्स, है ना, तो 300 पे कैप कर लो। अगर 400 तक फ्लक्चुएट होता है 350 कैप कर लो, समझ रहे हो। जितना मैक्सिमम जाता है ना उससे थोड़ा सा कम कैप कर लो। इससे क्या होता है कि वो फ्लक्चुएशन नहीं होती है और तुम्हारे हार्डवेयर को डिसाइड नहीं करना पड़ता कि कितना एफपीएस देना है इसको। वो 200 तक ही देगा, तो ना उस पर लोड पड़ेगा ना फ्लक्चुएट होगा, तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। फिर ये सब ऑफ कर देना और हमेशा ना फुल स्क्रीन विंडोड पे रखना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये मेरी ऐसे ऑल टैब दबाने की आदत है बहुत ज़्यादा। अगर ये फुल स्क्रीन पे रखते हैं ना तो वो ऑल टैब होने में टाइम लगता है। फुल स्क्रीन विंडोड रखते हैं तो फुल फटाफट होता है। ये चीज़ कर लेना बस। अभी के लिए इतना देख लो। और क्या देखना है तुम्हें, क्या चीज़ें हो सकती हैं जो तुम्हारा एफपीएस रोक रहा है। फिर हाँ ये देख लेना कि तुम्हारा कंट्रोल, ये टास्क मैनेजर खोलना बेसिकली। परफॉर्मेंस में जाना, मेमोरी पे क्लिक करना और ये देखना स्पीड कितनी है। अगर स्पीड कम है तो इसको बढ़ानी पड़ेगी एक बार तुम्हें, ठीक है भाई। ओपी वीडियो कौन सी वाली? S1 वाली भाई।
वेलकम टू द स्ट्रीम बाय द वे ब्रदर। मुझे भाई टाइटल एक्सप्लेन करो ना। अरे नया मैप आ रहा है ना, मतलब नया नहीं आ रहा है, फ्रीज मैप जो है वो वापस आ रहा है। और लगे रहो। थैंक यू ब्रदर। एसएन माली भाई तो सब्सक्राइब कर देना आप, और प्लीज़ पिन माय कमेंट। अभी स्ट्रीम पे पिन करो क्या? कर दूंगा कर दूंगा। अरे उसका हाई पे भी 250-300 आना चाहिए। राइजन 9 विथ 3060। हाँ हाँ, तभी बोल रहा हूँ मैं कि 300 पे कैप कर लूँगा। अभी आता हूँ 5 मिनट में। मेरा एफपीएस भी ड्रॉप हो रहा है। कितनी यूजेज कितना है मेरा? 80% जा रहा है। राइजन देंगे 3060 की लैपटॉप होगा शायद उस पास। ऐसे माली भाई ज़रा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ यार, चैनल के लिए सब्सक्राइबर बढ़वा दो थोड़े से। ब्रीज तो कंप्लीट ही न्यू मैप हो गया। हाँ फ्रैक्चर की मैप कॉल में तो साइफर में था, वो क्यों जा रहा है? कोई बात नहीं यार, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मैप रोटेट हो रहे हैं। मैं तो चाह रहा था हेवन चला जाए भाई, कॉल तो नया नया मैप यार, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। अब मुझे वो देखना पड़ेगा कि फॉल पे मैं एजेंट कौन सा खेलूँगा। पहले तो मैं फॉल क्या ब्रीज पे, पहले तो मैं सोवा खेल लिया करता था। उस पर क्या बोलते हैं, ब्रीज पे जेट बहुत अच्छा है, सोवा ऑब्वियसली अच्छा है, केओ भी अच्छा है शायद। तो कुछ सोचने दो थोड़ा, क्या कॉम्प होता था यार ब्रीज का। स्काई स्काई बहुत अच्छा है, सोवा अच्छा है। डबल इनिशिएटर खेल सकते हो उस पर, क्योंकि बड़ा मैप है, इन्फो भी चाहिए होती है। पॉल तो अभी अपडेट हुआ था। हाँ पॉल हटाने की जरूरत नहीं थी वैसे मेरे हिसाब से भी। हेवन हटा देते यार, सबसे सबसे पुराना मैप है और अभी तक एक भी बार चेंजेस में नहीं गया, एक भी बार चेंजेस में नहीं गया है भाई। बोरिंग हो गया है वो मैप यार। प्रो मैचेस देखने के लिए तो मुझे तो बोरिंग ही लगता है भाई, बहुत बोरिंग लगता है मुझे। वैसे सही बताओ तो असेंट भी अभी तक चेंज भी नहीं गया है, बट फिर भी असेंट काफ़ी अच्छा कंपेरेटिव मैप है। हेवन हटा देना चाहिए था भाई। स्काई, हाँ ब्रीज पे स्काई अच्छा है भाई, क्या बात करें, बहुत अच्छा है स्काई ब्रीज पे। असेंट हटा देते। नहीं यार असेंट फिर भी नहीं, एक बार हेवन हटा देना चाहिए था। हेवन क्योंकि ना यार, हेवन असेंट दोनों यार, कोई टीम ना उस पर कॉम्प चेंज कर रही है ना कुछ, सब टीम सेम कॉम्प खेलती है उस पर। थोड़ा सा चेंज हो जाता है उन दोनों मैप में से किसी एक मैप में एटलीस्ट।
ओ भाई हेलो गुड इवनिंग, हेलो पिंक ड्रेप, व्हाट्स अप। आज मैं भी लेट आया, अभी आया स्ट्रीम करने। मैं सोच रहा था पहले शाम को करूँगा स्ट्रीम जल्दी, मतलब रेगुलर टाइम पे मेरे, बट मैं लेट हो गया थोड़ा सा, मैं बाहर गया था। ध्रुव भाई वैसे तुम्हारा लैपटॉप में स्विच हुआ गेम के टाइम ऑन कर लेना। हाँ गेमिंग मोड वगैरह होते हैं उसमें। ब्रीज जल्दी आ जाए भाई, मज़ा आएगा, एटलीस्ट नया मैप देखने मिलेगा। आज लाउड PRX है भाई, आज फुल एंटरटेनमेंट है। Dominating. कोई ना, अभी फ्री Dominating. हूँ मैं, अभी फ्री हुई सब काम करके। नमस्कार। खोपड़ी टूटी नहीं कि स्पॉन, हाँ वो वार्म अप के टाइम ऐसे ही होता है, कुछ तो ग्लिच है, वो डिले होता है वार्म अप के टाइम, मतलब जब इसमें वार्म अप लिखा हुआ आता है ना उस टाइम। किसी ने नहीं देखा भाई। No match. भाई वो उल्टा ही भागे जा रहा है तब से। क्यों भाई मेरे साथ क्यों? Why you bullying me? Silva's dead. Too late. आ जाओ वेजी को कैरी करने, आ जाओ, कोई तो मुझे बूस्ट करे। Amateur. हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? ईश। वाइपर भाई तो मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। Retired. क्लिक ही नहीं हुआ। Dusted. Three out. I'm back। क्या लौंडो भाई। फ्रैक्चर वॉज एपिक ब्रो, एग्जैक्टली मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग नए मैप्स क्यों हटा रहे हैं। हेवन हटाओ भाई, हेवन हटाओ, एसेंट हटाओ प्लीज। बाइंड तो चलो अभी आया है वापस, हेवन एसेंट कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ भाई, शुरू से कुछ चेंज नहीं हुआ उन दोनों मैप्स में। आप बताइए कैसे हैं सर? मुझे लग रहा है अब गेम में ही जाके होगा वार्म अप, जो भी होगा। इधर तो लोग मार रहे हैं मुझे। RKDUM बढ़िया भाई। RHTDM लिख देता भाई।
kills remaining. Free out! अबे यार अरे रे 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 भाई, पैंटम में तो स्प्रे ही करते रह जाता हूँ मैं। Hey door. Five kills remaining. अरे 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 मूवमेंट तो है भाई। हमें जज्जी के खेल ले, उससे थोड़ा चैनल प्रमोट हो जाएगा। One kill remaining. भाई मेरी बॉडी बहुत पानी मांग रही है। Next one, I'll take it all. चलो भाई देखा जाएगा वार्म अप पर क्या। क्या खरीद कर रहा है? कुछ नहीं भाई। Match found. हेलो पीएसएफ, रोज अबे यार Stand in my way. I dare you. ब्रीच खेलना पड़ेगा यार। जो टी शर्ट पसंद आई थी चैट में कोई खेलेगा पहले मेरे साथ? तुम चैट में से मत ले जाओ मेरे लोग, यहाँ उन्हें स्ट्रीम देखने दो भाई। हैशटैग बजी अमित के साथ खेल। मैप कब रिलीज हो रहे हैं दोनों? एक्ट खत्म होते ही न्यू एक्ट न्यू मैप। आई लाइक द कॉम्प जो लोगों ने एजेंट ठीक लिए। तेरी ओके मारा जिंदगी जान। चॉप चॉप आया क्या सामने? लेट्स गो चॉप। रिम जेट रेस साइफर और केओ। चलो एडवांटेज तो होना चाहिए हमें। वैसे 12 लोग देख रहे, फट से लाइक कर दो। मैं फ़ोन वोन सब बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं एड्रेस शॉर्ट वापस आ गए भाई। आपको अनहाइड किया चैनल से तो आप फिर आ गए। न्यू एक्ट मतलब मेरी रैंक जितनी थी उतनी गिर जाएगी? नहीं नहीं नहीं, रैंक रीसेट होती है एपिसोड के बाद, और ये जो चेंजेस है वो इस एक्ट के बाद आ रहे हैं। एपिसोड 7 चल रहा है ना अभी, तो ये जब एपिसोड पूरा खत्म होगा तभी रैंक रीसेट होती है। रैंक रीसेट हर एक्ट के बाद नहीं होती है, एपिसोड के बाद रैंक रीसेट होती है। और वैसे ठीक करते हैं वो लोग रैंक रीसेट करते करके ना, क्योंकि अब से सिर्फ तारीफ करूंगा ब्रो। मुझे आपकी ना तारीफ चाहिए, और बुराई तो आपकी मर्जी, करनी कर लो। आप शांति से स्ट्रीम देखो भाई, चैट में चू 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 नहीं करना। वो न्यू एक्ट मतलब मेरी रैंक। आज बग्गे ने शर्ट
शर्त लगाई थी ओनली शेरिफ मार्शल एंड ओपी में ज़्यादा किल किसके होते हैं मैच में 9-13 से हारे लेकिन 19 किल्स शेरिफ एंड ओपी ओनली उसके 17 लॉल अब कॉफ़ी पिलाएगा। मैं हूँ बिल्कुल रफ एंड टफ लड़की कहती हो बॉय नाइफ से ये मार लो नाम है मेरा बच्ची बॉय। ये भी ठीक है भाई। What did Kingdom get itself into? कौन डिस्कनेक्टेड है भाई? पूरी ओ मेरी टीम में सबकी पिंग इतनी जेट भाई की पिंग भी जा रही है। डजंट लुक गुड। चलो देखते हैं। भाई दो लोगों की 100 पिंग आ रही है ऑलमोस्ट। रैंक अप मैच है बाय द वे मेरा ये। रेस भाई उधर नेड कर दोगे इधर। Right there. हाँ ये तुम लोगों की इतनी पिंग ज्यादा क्यों आ रही है भाई? इतनी आती है कि अभी ज्यादा आ रही है? इतना ही आता। इंस्टेंट ऐड करो। यस क्या मैन ग्रेज थर्टी ऑन ब्रिम दोनों है मैन। Smoke's down. One enemy remaining. ओहो Spike down A. स्पाइक है। और ले ले रेस अगर दिमाग है थोड़ा सा भी तो। नाइस शॉट। जो टी शर्ट थंबनेल में है वो मेरे पास भी है पेल ग्रीन कलर। मिंत्रा से ली थी क्या? किसकी है वो? अरे भाई लोग अरे भाई कर लो ना सब लोग यार। सब लोग ही पिस्टल खेलोगे क्या भाई? यस हाँ गोवर बर्ड। रेस भाई नेड कर दो। हाँ कर रहा हूँ। Concussing. चलो चलो पुश करेंगे। चलो चलो चलो। हाँ बस Flash out. One main. Blinding. Right there. Satchel out. स्मोक Spike spotted B. Reloading. One enemy remaining. जेट इज लर्किंग। Flawless. रेस मार के और भी लेता है। You can trust my boss. मार के और भी लेता है क्या? Only man- Functioned that one time, and honestly, she won't miss that finger. Placing sentry. ऑटो प्ले में कुछ भी चल गया क्या? कोई बात नहीं अमित भाई। मेरे को स्टिंगर देगा ब्रीच मैं क्या चलाऊं? मार्शल। ये ऐसा क्यों? फिर मुझे शेरिफ भी दे। फिर मुझे शेरिफ भी दे। चल स्टन करूंगा। पे स्टन देना। रुक जा। अच्छा बी हो रहा है। ये ले मार्शल देते मेरे को। अरे क्या बहुत से डर के की तरह कर रहा है। ये आता तो मैं मार देता। एयर ड्रॉप। आउटसाइड है। रेस फ्लैश करूंगा हाइड करके रख। Flash out. बस एक और प्रेम रे Spotted A. Launching smoke. 50 साइफर 50। अभी से ही आ रहा हूँ मैं। रिमूव की टी शर्ट ब्रांडेड होगी। अभी नहीं है स्टिल मैन। साइफर इज 50। फिर भी Bomb grenade out. आ रहा हूँ। Spike planted. Last player standing. 65 raise. Enemy kill. Guardian.
Their मैंने jet भी is कुछ nothing हाँ on me. I got 900,000 बाय कर रहे हो? मैं ओपन लेता हूँ। हाँ भाई तीसरा राउंड बाय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? रेस पे पैसा नहीं। है तो भाई 3800 रुपये और कितने चाहिए? साइबर हमेशा आ रहा है दूसरे साइड से, ठीक है? आर्केड या ड्रॉप हाँ हमेशा आ रहा है। अरे इधर यहाँ स्टन करते हैं जरा ना। Right there. One brimstone is enough. Concussing. Smoke's down. अरे यार 3 है में 3 है में। साइफर भी इधर ही है, साइफर उधर ही है। ओह Cypher also there or what? yeah everyone there। तीनों उधर है। Get grounded. My ult ready. One enemy remaining. स्पाइक ड्रॉप हुआ है, स्पाइक ड्रॉप हुआ है इधर ही। हाँ Placing sentry. Spike spotted A. केजे नीचे Turret destroyed. मेरा ऑफ लेना। मॉली कर दे यार केजे। ड्रीम आवाज आएगी डोर की अगर वो अब यहाँ से आएगा तो, तब तक साइड से देख लो। ऑफ ले ले, मेरा मेन पे ऑफ है। ये मेन ऑफ। Out of charge. पीछे। नाइस। बेचारा टेंशन में आ गया। I need a drop. किधर है? जेट के लिए ड्रॉप नहीं Joking. है जॉकिंग। Where is my? फिर से सेंड करो रेस, फिर से उधर ही जा। आर्केड ड्रॉप किया मैं। Why? Why not? बट यू हैव मनी राइट ब्रिमस्टोन? नो मनी ना। Oh yes, I have money. Absolutely right. इधर देख केंदू सही कर रहा है भाई, असली का पैसा देना हो जैसे। Keep up. डीमन स्मोक नहीं करना, आ रहे होंगे तो भी। Okay. Trevor. ओह Launching smoke. तो स्मार्ट अरे यार टाइम। हो गया। अग्रेसिव कीजिए। Smoke's down. जेट तो ऑफ मत ही कर भाई। Launching smoke. Here we go. Gotcha. साइफर आर्केड, साइफर आर्केड। मैंने आर्केड। One enemy remaining. मेन। Flash out. Main. भाई इसकी ऑफ किधर है? अरे Spotted B. तेरी ऑफ कहाँ है? राइट ऑफ है। ए वैंडल। This isn't a fight. It's stealing lunch money. मैं कर लूँ क्या ऑफ? हो रही इधर से? अरे साले देख। मेरा भी बहुत बफर है। आर्केड भाई इनका पिंग कितना स्पाइक हो रहा है। नहीं मेरे में नहीं, देखो यहाँ पे फोन तुम्हें दिखेगा है ना, क्वालिटी फुल कर दो तुमने, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा अगर बफर होगी तो। ठीक है फुल स्क्रीन कर दी बस, तुम्हें पता लगे इधर ऐसे घूमेगा ना, पता लग जाएगा। नहीं हो रही बफर मेरे में। अरे वो 144 से मतलब नहीं, वो यूट्यूब का ग्लिच है, वो 1000 में भी देखोगे किसमें में भी देखोगे। Tell me if you need smoke there. Gun here. That's No. done. हाँ भी जा रहा हूँ। क्लोज आया। जा Multiple enemies in. फ्लैश। Go back. क्लोज स्मोक। One enemy remaining. अबे यार ये भी स्मोक के अंदर ही है साला। Reloading. Satchel out. Right here. ब्रिम का क्रॉसर प्लेसमेंट देख के मुझे डर लग रहा है भाई। Someone's in attacker spawn. बोला ना क्रॉसर प्लेसमेंट ब्रिम का। नोटिफिकेशन तो नहीं दिखा कुछ गलत था। कैज़ेट्स वेलकम टू द स्ट्रीम। Figuring out how. Nvidia has a phantom screen. Which pop है? May I have it? Can I get this? बंदी है क्या? तुम लोग जरा नोटिस करना इसकी आवाज। बंदी है कि बंदा है ये? Turret out. तो कैसे फिक्स करो ये इशू? तुम कुछ नहीं कर सकते अब उसको। आई हैव अल्ट वो पुश करेंगे तो मैं अल्ट करूंगा। I'm not smoking aiming. मैंने हर बार पुश करके पिक निकाली है नहीं करी। क्या बोल रहा है दोस्त? Enemy spotted. इधर आइयो। वो हर बार पुश करके किल निकाली है तो वो Multiple. देखेगा पहले। सैंड लो। Got the party. दोनों एक भी नहीं मरा। दो मेन। क्या जेट मैन। तीनों। Dash out. No, what is that? Last player standing. केजे। I was not ready for that. अरे ये राउंड कैसे हार गए भाई? हमने 2 अल्ट करी भाई। Error से
We doing this or what? Oh my god. Jet, can you drop me? You have ult. पुश करता है Jet, can you drop me? You have ult, bro. Thank you. आर्केड में कुछ टर्न दे ब्रीच दे रहा हूँ. पिछला राउंड हारना नहीं था, 2 ult करी यार, कैसे हार गए? अरे ये जेट रन कर दिया मेरे को. हमारे जेट का ऑफ से कुछ आउटपुट नहीं निकालो, जबरदस्ती ऑफ कर रहे हैं. It is A. नो वन ड्रॉप अरे ये मेरा एम कैसे हिल रहा है? वो रिवाइव कर रहा है, थोड़ा जल्दी जाओ. अरे all three men, trust me. फ्लैश किया सीटी की तरफ. Jet has good position. Eyes down. Last player standing. Both side. Spike planted. ब्रो केजे का और ब्रिम का गेम देख के मुझे ना यार. वेल प्लेड, नाइस. थैंक यू ब्रदर. Okay. I thought right to cross it to see the flash. केजे ऐसे टप कर It दे was a bad timing for you. Can we eco this? Oh, okay, never mind. 3 of us has back Yeah. Never mind. Can you guys handle B? I want to play side this time. yeah ब्रिम पे अल्ट है मोस्टली साइड We have KJ ult for retake also. Get out of my way. B main. Flash. आपको भी जा रहा है. Outside B main. Flash out! I'll stay here. Blind हो गया. Rifle last time. Jet's grounded. One enemy remaining. Nice round. Good shit. Time to take these arms for a spin. जैसे बी आई हम लोग सेम खेलता है I'm gonna ठीक play है. side कौन again. सा मैप आ रहा भाई? वेजी प्रीमियम को 100 पे सुपर चैट कर दे. हो गया शॉर्ट फोन पे. बीच में को फ्लैश देगा मैं बी में पिक करता हूं हाँ ले. Market this. Starlight है. No. क्या का फ्लैश आया था B main. ब्रीज आ रहा है भाई, ब्रीज लिखा तो है टाइट होल में थंबनेल पे. Blinding! Amen. Rush कर रहे हैं. अरे Someone's in यार attacker spawn. आगे ही आवाज आ रही है. Here. जा कवर दे रहा मैं मैं डिश प्लान कर रहा हूँ. आउट है. Still man. और फ्लैश कर रहा. यार मेरा तुम्हें लग रहा होगा बेस्किया पर ये एफपीएस की इशू की वजह से यार ये इधर उधर जाता है मेरा यार. Push है. Guns. कौन सा मैप आया भाई? मतलब समझ नहीं आया. B planting में. Spike फ्लैश planted. तो है. अच्छा वो पहले वाला. दो में. Sit still! 120 ब्रिमसन को अल्ट पे खेल रहा होगा. Can't use that. Grenade. दोनों में. Last player standing. Get out of One here. enemy remaining. एंटी We didn't have the HP. That tech is only as good as their skill. ऑफ दिलवा सकता है We have some नहीं छोड़ beats. जाने तेरे को दिलाना चाहता मैं खुद नहीं कर लूं. सुनना ब्रिमस्टोन, मैं अगर ए में अल्ट करूंगा ना तो तू यहाँ पे अल्ट कर दे. ठीक है भाई? Done. B फिर मैं पैसे खेल रहा हूँ. B Yeah, play रुक ना passive. अल्ट कर ब्रीच अल्ट मत कर अब अरे कर रहा हूँ मैं. नहीं भाई नहीं. जाओ ना मैं ब्रिम तू मेरी बात सुन I'm ले. here. क्या कर रहा है. अरे कभी करेगा भाई? अबे लैपटॉप खोल के रखना भाई. अल्ट करने बोला था तुझे. आधे घंटे बाद अल्ट कर रहा है तो. Drop it. गए हो लोग है. अभी तक साउंड नहीं है उधर. किसी ने बोला कि कब आ रहा है? इसे और ले रहा ड्रॉप पे.
B में है एक Blasting! शायद आर्केड है। main होंगे main एक main ब्रिम में नहीं है। Dream main था। nope Hey, tower one. Tower? One main. One main, one tower. ओके राइट में। One enemy remaining. Can't use that. Very nice round, Race. Clean round, clean round. वेल Sorry, प्लेड। मेरे आने से पहले वो क्रॉस हो Last गया। round. लास्ट राउंड है, अपनी अल्ट इन्वेस्ट कर लेना केजे Last रेज। round to use our creds and abilities. Don't waste your firepower. एससी तो ये देख का मौका ही नहीं मिला। Can I have your phantom skin? Placing sentry. Can I get this? Someone buy KJ, please. Thanks. Thank you. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. good shit by They only have a Brim now. And Raze is Prepare for hellfire! अल्ट आई है ना ये पे। Initiated. अरे रे व्हाट इज दिस अल्ट? not there just there Clearing out! जाएंगे पीछे जाएंगे। क्या पीछे जाएंगे? केजे ने बाप रे बाप, मत कहना कि ये इमॉर्टल है। Hey, ropes. Jet coming. bro nice एक कौन और कौन छोड़ो अभी। B main तीनों Smoke it. अल्ट से ये पे ना अगर वापस आए। Jet is gonna get one more. Concussing! 100 ही स्टंड नो माइंड। अंडर Yes, Staying here with you. is under वेट सन market पे there अब देख। I'm playing off bot's contact. ऐसे 30 seconds left. One is still in Flash out! No time to go back. I'm going B, yeah? Yeah. One enemy remaining. Blinding! Switching sides. आर्केड रेस्ट करते Everyone's हैं। tech still working? Double check it, please. Coming. मैं आऊँ उधर, टर्न वन चाहिए? हाँ तो चाहिए। हाँ मेरे को टावर स्टन दे दे, मैं घुस जाऊंगा। I'm just doing 2 vanilla smokes. One here. और arcade या रेस तू नीचे से, तुम लोग सब नीचे से आओ, मैं टावर कंट्रोल देता हूँ। ठीक है? हाँ जी। okay Right here. I'll come slow भी में से। या तो आई मत। Stomp him! मुझे नाम देखना है जेट और केजे का, मुझे लग रहा है कि मैं जानता हूँ। Pumps down. Dim beacon down. क्यों भी में Enemy spotted B. जेट भाई ने रंगोली बनाई ना उधर। दोनों Last two there only. One enemy remaining. Kill everyone. Our job gets a whole lot easier. Dream. तू आ ही मत बरते। Hate waiting. रंगोली का Let's do ये this. उसको 104 पड़ा, उसने आर्मर लिया था। तो पता मुझे आधा तो सीन क्या? अरे तूने बहुत जल्दी स्टन दिया ब्रो, इतना जल्दी मत कर। वो स्टन हुआ था क्या ऐसा? नहीं आओ ना ड्रॉप रश करते हैं, प्लेन रश तो मत ही करो। आ जाओ. मैं घुसता हूँ, मेरे को स्टन दे दे बस। Keep it cool. मैं नहीं आ रहा हूँ यार उधर, बहुत लेट हो गया। Concussing! Grenade! Satchel out. Got him. Bomb buddy out. साइबर साइड है। Placing alarm bot. नाइफ करो। Reloading. Reloading. Spike planted! Placing swarm grenade. Here drop. One enemy remaining.
Right there. Who's got the snack? पता मुझे आधा से ज्यादा जो है ना मुझे कोई दिखा ही नहीं है, तुम लोग सबको मार रहे हो। Fuck. Rage is playing KDM here. We are playing rank, but Rage is playing KDM. Only Jet and Rage is seeing the enemies. Bro, I'm fortifying. Their money is Hit them fast, hit them hard. Yep. Stim beacon here. Grenade! Blinding. Here. Holy smoke. Too late. एक drop. Get him. Flash out. अरे blind. Ollie. All good. No way! No way! Spike planted. I'm My sorry, ult's ready. I'm going to ult. Listen guys. Worthless. Not undead. 1 CT. Blasting. Last player standing. वो भी कैसे? One main. 97 दे। We just threw that round. My bad. रेस जित तो है। ओह Don't stress if I die. It was great knowing you all. Also, delete my hard drive. मैंने बोला मैं अल्ट करूंगा, तुम पीछे से ही मर गए क्या सारे? ना मेरे को सीटी से मारा, वो अल्टेड नहीं था। तो तुमको बाहर आने किसने बोला था मेन से? मैंने सोचा तू अल्ट कर रहा है तो हम दोनों मिलके मार देंगे। चलो कोई बात नहीं। Behind me. Same boost है. Stim beacon here. Cussing. Blinding. Holy smoke. Turret out. Alarm bot out. Clearing out. I have CT controller. तुम्हारे पास फाइव है। Breach, you have breach, you have spike. आ रहा हूँ। Thank मेरे को उधर किल लेना था यार, मेरा सारा मूड खराब हो गया। CT है. Spike planted. One enemy remaining. Flash out. अबे ये तो इतना आगे खड़ा हो गया है बे। 136. जाके मारो रेस 136। अब तो वो भाग गया, सेव कर। लेट्स गो। गलत सोचता है तुम। किसको बोल रहा है कि गेट अ लाइफ? Pay attention. I learned कौन बोल रहा है गेट अलाइव? जज के रहा हूं. I need a drop. सामने वाले क्या म्यूट करके रखो भाई, सामने वाले से कौन बात करता है भाई? वही मैंने म्यूट ही करा. तो तुझे कैसे पता फिर गेट अलाइव बोला? ऐसे बोला होगा, ऐसे बोला मैं. चुप। अरे पकड़ गया भाई. अरे नहीं म्यूटेड. ब्रो मेरी पिंग चाहती ही नहीं मैं गेम खेलूं। ठीक है बंद कर दो फिर। कोई बात नहीं है। तो बस So ping, what the fuck? Stim beacon down. कर रहा हूं. Blinding. Holy smoke. Turret out. Spike dropped. Yes, okay. Wow. क्या कर रहा है? पता नहीं। Sand है। इधर है. Sand है. होल्ड करोगे 1 सेकंड होल्ड करोगे। हाँ होल्ड कर रहा हूँ। I have the spike. ए मेन को तेरे पास आ रहा है वो। दोनों इधर है. Last player standing. बहुत. Spike down A. One enemy Never remaining. mind, my bad. Sorry. Cussing. मैंने The best you've got. आप तो तेज ही निकले ब्रो। Match point. Oh, we're almost done? मैंने तो सुन ली थी उसकी आवाज सिटी में, मैं तो सुन ही नहीं रहा था भाई तुम्हारी कॉल। Oh भाई sorry. मैं तो भरोसा करता ही नहीं हूँ भाई किसी पे, रैंक मैच में किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ भाई। और उसमें भी जिसका नाम ORK7O हो, उस पे तो बिल्कुल हाँ नहीं। मैंने ही बोला कि सही है.
वेट आई थिंक मेरी पिंग ठीक हो गई है सर। ओह भाई बहुत जल्दी चली ठीक हो गई। Bit late. गेम खत्म होने वाले पिंग ठीक हो गई। Stim begin here. Satchel out. Satchel out. Holy smoke. अरे नेट फाइटिंग को ये क्या है? You can't use that. Powerless. चाचा के ऊपर चल तो नहीं आई थिंक इट ड्रॉप है। One enemy remaining. शांत। आजा भाई आजा इधर आजा। मैं तो अल्ट तो अब दोनों अल्ट करेंगे, जैसे ही वो टैप करेगा दोनों अल्ट करेंगे, ठीक है? Okay. Spike planted. My ult's ready. City है. Yeah. Concussing. हट जा. Flash out. Blinding. Halt. Attackers win. Victory. God. वेल प्लेड केजे। ओह टॉक्सिक। What the fuck 34-8 मारा है हमारे रेज ने। बट साहब show your skin collection 5 star। जेट के साथ ब्रिम रेज। कैसे पता लगा? पार्टी में थे क्या कोई लोग? कैसे पता लगता है लोग पार्टी में? रेस की क्या रैंक थी? असेंडेंट 3, असेंडेंट 2 ऐड तो किया है मैंने, देखते हैं और बूस्ट मुझे कैरी कर देगा थोड़ा सा। नहीं ऐड कर रहा, चलो। Match found. मेरे सामने आके मेरी बुंड ना मार दे कहीं। भाई लाउड और पीआरएक्स का मैच है भाई आज तो होएगा घमासान। प्रमोशन कर देता शायद ऐड कर देता। नहीं मेरी प्लेयर टू स्मोक्स लेगा तू? हाँ नहीं ब्रदर। ओके। अरे 2 इनिशिएटर क्यों लेने हैं भाई? एक डोलेस ले लो ना, प्लेयर 4 भाई। रेज या जेट ले लो, कुछ थोड़ा स्पेस क्रिएट करने का भी एजेंट हो जाएगा एक। हाँ फिनिक्स ले लो चलेगा।
बेस्ट भाई, बेस्ट P1। अरे जेट ले ले भाई, जेट ले ले। अबे यार, हाँ जेट ले ले, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऑलवेज इन फेवर ऑफ जेट ओवर रेना। वजी एस कर, ट्राई करूंगा यार, देखो है ना भाई। पर पिछला रेस तो बहुत ही अच्छा खेल गया भाई, उसने हमको रियलाइज ही नहीं होने दिया कि ये मैच इतना इजी कैसे हो रहा है। चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा, ठीक है भाई। Maybe if we kick their asses hard enough, they'll stop bothering us. कौन बोला बे? जेट ही बोली होगी, लड़की तो एजेंट वही लग रही मुझे एक बस, बाकी सब लड़के एजेंट हैं। ओह नाइस। ओए फिनिक्स दियो तेरी गोस्ट। Gun here. अरे मैं बोल रहा हूँ, ये तो पड़ी है, ले लो। Gun here. ओह चीप गेम प्ले कर दो क्या? आ जाओ, ट्राई करते हैं। ये हरकतें करता नहीं हूँ मैं वैसे कभी, पर करनी चाहिए मुझे। फिनिक्स फाइट लेने इधर, फिनिक्स फाइट लेने इधर, प्लीज प्लीज इधर इधर इधर। ये छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है? भाई फ्लैश में मार गया मेरे को भाई, फ्लैश में बजा 135 रेना नॉट हील। Spike planted. रेना 135 नॉट हील। ऐसा ही होता है जब 5 टारगेट होते हैं ना तुम्हारे सामने, तुम हकते ही हो भाई। क्लीन एम भाई, गेको क्लीन। स्मोक कर दो, स्पाइक पे स्मोक कर दो तब तक। अरे स्पाइक पे, हाँ बैठ जाओ। तो दोनों मॉली गई उसकी। गेको इसको कवर दे दो। 135 रेना, 1 HP 1 HP। Last player standing. मार दे आफ्टर मार, निकल के मार। अरे Hold on to your hat. भाई मेरा हगा वो था किया इन लोगों ने, ये बता रहा हूँ। हम तीनों का एक्चुअली, मेरा क्या, पर मेरा स्पेशली थोड़ा सा हो जाता है यार। वो रेना ओवर हील्ड था सारा। पता है मैंने रेना पे 1-2 बुलेट whip किया ना, मैं छोड़ने वाला था इसको। मैं कहा किसी और को मारो भाई, ये तो नहीं मर रहा मेरे से। भाई सिर्फ अच्छा गेम प्ले दिखाऊंगा तो बुरा कब दिखाऊंगा तुम्हें? That goes there. थ्रो क्या सीन है? साउंड तो नहीं है पे। वेट मल्टीपल डोर्स। गंती देर पे गंती सेक्टर थी। अरे यार मैं बैठा 22। अरे भाई इतना ज्यादा डैमेज नहीं करना था यार। Spike down भाई A. अपने पे 1 enemy remaining. वही लास्ट भी उधर ही है। वही 90 मारा मैंने। अबे फिनिक्स, अब मैं कैसे आऊं उधर आगे? मेरा स्पेक्टर मिड है। मुझे स्पेक्टर लेनी थी। स्पेक्टर लूं मैं? नहीं है। Y'all better keep up. कुछ भी को भाई, जेको का एम तो अच्छा है। Wow, this is a nice spot. This goes here. Yes, this should do. That goes there. हाँ जी, रोज अच्छा दिखाता है गेम प्ले। रोज नहीं बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी, मतलब एक दिन में कभी कभी। बी एमएन हां मिड में केजे। बी लॉन्ग पूरा क्लियर है अभी के लिए। अब देख खाली वेट, माय बैड ब्रिमस्टोन, माय बैड। ओके नाइस। वीमेन भी आ गए।
हाँ आ गया आ गया. My eyes are dumb. Cage triggered. Tripwire destroyed. Spike planted. Here. Dizzy's up. Cage triggered. Bye. एक हॉल सा. एक नीचे जस्ट नीचे. Enemy spotted B. Reloading. All there. Last player standing. Can you play with me? No brother. Sorry but no. Phoenix, our little star. Keep that furnace burning, okay? हाँ मैं एक खेलता हूँ बाकी लोग भी खेलो ना. सेव है क्या? मैं तो अल्ट कर रहा हूँ. This goes here. बोनस के बाद तो आई गेस बाय होना चाहिए. Yes. पिछला राउंड उन्होंने वैंडल ली थी ना भाई सबने. मेरा भाई नहीं आ रहा. देखो 8 से खेलो ना. 8 से खेलो. मैं देख लूंगा उधर. बी है क्या? फिर पुश कर रहा है. I've got your trail. Aim in. Cage triggered. -75. जेट मुझे ही पकड़ता है. Spike planted. हाँ करो. कर. यार तुरंत क्यों पॉप कर दी. Enemy spotted A. Jet 100. लगाओ. Last player standing. लो है नीचे वाला. मुंह पर नहीं बोल दी नो शुगर कोटिंग. This goes here. अपना तो काम ही नहीं शुगर कोटिंग है भाई. ब्लंट है चीजें अपन को. हम तो ऐसे ही हैं भाई. वो 0 किल. मैं क्या किसी और को कुछ बोलूं. मैं ही तो अगर हूँ. Oh, this is a nice spot. Yes, that goes there. This goes here. कोई रियल आईडी था आएगा तो फिर भी खेल लें. बट आप पर ये जो फेक अकाउंट से उनके साथ हम लोग मजे लेने आते हैं. पता है मुझे. ये मैड और शॉर्ट ये सब एक ही बंदे के अकाउंट है सारे जितने भी हैं. कैमरा देखता रहे बस तू. ओ भाई मुझे लगता है ये मैच भी कैरी होने वाला हूँ मैं. एक 8 और एक में. और क्या फिनिक्स पे अल्ट है उसके साथ. टैग दो. Spike planted. अल्ट कर सकता है क्या? हाँ कर रहा हूँ. Watch your eyes. एक बैक साइड था. One enemy remaining. आठ हो सकता है. Last player standing. मार ही गया. मेरे को किल तो करने दो यार. एक Nice. Killed I it. need this. And them. नहीं होगा पैसा तो किसी पे ही. Killed them. टीम में गरीबी चल रही बहुत भयंकर. इकोनॉमी के तो लोड़े लग गए. मैं वही बोलना था. गरीबी चल रही है भाई टीम में. बैन हो रखी है भाई. This is a nice spot. पाकिस्तान है क्या? हाँ सही कह रहा है. That goes there. Yes, this should do. This goes here. Stay safe. मैं तो शॉटगन चला रहा हूँ. ये मुझे अल्ट ना कर दे यार. ग्रीन साला. चेक कर दे. मिड मल्टीपल है. 2 है एटलीस्ट. अरे यार आ गया साला. तो बी है क्या? हाँ फ्लैश हुआ. कैम देखियो. अरे यार हर दो में गलत कर दिया. इन है ए. अबे यार ऊपर आके बैठ. तो मैं मेरे पे शॉटगन है. मैं क्या करूंगा उसके अलावा भाई. 3v5 है ना. फाइट तो लेनी पड़ेगी. Spike planted.
सेव कर लेते। Night night. शॉट वैसे फोन नहीं चलाया, थोड़ा सा चला लेता हूँ यार। I can't see them yet, but I can feel them getting ready. फुली को कर लो भाई। भाई मैं तो 1000 रुपये नहीं खर्च रहा हूँ, मुझे तो बाई नहीं करने मिला ढंग से। तेरे भी मेरे पास तो कम ही है पैसे के, एक किल भी करना पड़ेगा मुझे अब। देखो भाई जल्दी मर जाओ, आपके मार्च उठाऊंगा, 2 हेड मारूंगा फिर। ये जेट दूर है। Camera taken out. मिड देखो रे कोई। अरे आ रहा Spike planted. चलो किल्स के काम को कल देखते हैं, अभी मैं थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ। खोल है तो यही On the money. ओ भाई लॉन्ग ही है दोनों। लगा दो डिफ्यूज पे, Wingman's on defuse. कर दे। Last player standing. Anti boss. Pay attention. I learned something. पर यार फिर मैं आया हूँ, फिर से वो स्काई अल्ट करेगा This is a यार। nice spot. Yes, this goes here. This is a nice spot. थोड़ा सा भी देख लेते हैं यार, बताओ। हाँ मैं तो जा रहा हूँ। साइफर देख ही लेगा कि यार देख तो लूंगा, फिर से वो स्काई अल्ट कर देगा यार। मेरे वहाँ तो नहीं हो पाएगा सर, अभी तो लेट हो गया। पीछे खेल कोई नहीं। Get out of my way. I've got your trail. कौन सा मेन अच्छा पहला किल तो हो गया, चलो। Spike down A. Here. Where is everyone? भाई गया क्या? हाँ ले गया। ले गया। नहीं वापस तो आएगा, लिख के ले जाओ। अरे बोलना जरूरी है क्या भाई उसी टाइम पे मुझे? मेरे पे आना एक बंदा। होते रहेंगे। दोनों इधर हैं, अभी गया नहीं कोई। ये छोटे चल साथ में चलने तो दोनों चलता। अभी कोई आया नहीं, अभी एमएन पे बैठे हैं। कौन अल्ट ले रहा है? दोनों की तो अल्ट है उन दोनों में से। रुक जाओ वहीं रहे। जेट की भी अल्ट गई थोड़ी है अभी। देखो ब्लाइंड हो जाएगा आपके फ्लैश से, ध्यान रखना चाहिए। 30 seconds left. कौन फ्लैश One लेगा? enemy remaining. My ult's कोई ready. नहीं कोई नहीं। -34 है भाई, बहुत लो है। -34 दिया मेन। 10 seconds left. भाई सबका एम अच्छा है उनमें। वेट कर, जेट वेट कर, मैं आ रहा हूँ। Last player standing. नहीं हो अरे यार हग। अरे मैं प्लांट रोक रहा था, मुझे लगा भाई हमने इकोनॉमी तो हम बनने ही नहीं देंगे भाई। लो था ना, लो था। क्या हो रहा है ये? Can someone buy me please? Economy, we don't do that here, bro. इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं फेल किया। That goes there. अरे ये मेरे 100 में से 0 नंबर क्यों है इकोनॉमिक्स में? अरे फिनिक्स आपकी हाफ शील्ड पे वैंडल आ जाएगी मेरे हिसाब से।
एक फ्लैश बेच दो भाई, क्या करना है फ्लैश का। एक किल लिया है वो भी ट्रैप का। अब मारूंगा मैं। You should run. मेरी तरफ आते ही नहीं, डर गए लोग। ये आ रहे हैं भाई। काटे गन मिल गई। उड़ के मार दे ब्ले मार। Spike planted. उड़ना नहीं है ना। One enemy remaining. Nice. आवाज। Weapon here. लड़की भाई आज त्योहार है तीज का, तो तब भी रिंगन है। कैसे है भाई ये लोग, मुझे बहुत खराब लगता है जो छोटी जगहों पे लाइट काटते हैं। मेरे घर का भी यही हाल है भाई, बहुत लाइट काटते हैं भाई। जहाँ पे लाइट की जरूरत है, मतलब ठीक है सिटीज में तो लाइट ही नहीं कटती जैसे, जबकि कंजम्पशन कितना ज्यादा है। यहाँ पे गाँव में लोग क्या यूज करते हैं भाई लाइट। आधे घरों में एसी भी नहीं होती, कूलर नहीं होता गाँव में। बेचारे छोटे छोटे जगहों पे लाइट काट देते हैं लोग। जहाँ लाइट ज्यादा कंज्यूम होती है वहाँ ज्यादा देते हैं भाई। मत ही काटो ना वहाँ पे भी, तुम 2 घंटा लाइट काट के क्या कर लोगे गाँव में। Now, where to set up shop? बेचारे लौंडे टीवी देखते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं करते। ए पे साउंड है। घुस रहे हैं क्या बिल्कुल? नहीं अब तो अल्ट कर दिए, नहीं घुस पाएंगे। आ गया फिर भी साइड। एक साइड है Right there. 80. One dead. अरे वो Spike planted. Last player standing. One down. सेव कर दे। एक आर्ट एक साइड। हेलो दोस्तों, हमारे यहाँ तो सुबह 10 से 4 लाइट जाती रोज। गलत बात है यार, ये गलत बात है। कोई सुनने वाला भी नहीं होता भाई। आर्मी के लिए दौड़ लगाते आते से ज्यादा। तेरी होके मरा जिंदगी। भाई अटैक मैप है क्या? यस। Today is my birthday, give me gift. हाँ। I hate to say it, but probably best to play as team. भाई बी में अकेला देख रहा हूँ मैं, हेल्प मैं बुला लूंगा तुम्हें। बी आते ना तो मतलब साइड आते आते टाइम लगता है, तब तक तुम आ जाओगे वापस। पहले दूसरी जगह पर फाइट ले लो। That goes there. Oh, this is a nice मोबाइल spot. लेना है तो मैं क्या ही Yes, करूँगा। that goes तो there. ऐसे भी फ्लैश करेगा ना। Oh, this is a कर ले nice कर ले spot. कर ले। क्या कह रहे हो? अच्छा मैं अल्ट करूं? Yalla, mshina. अच्छा। बारिश नहीं हो रही तो ऐसा करे, हम भी क्या कर सकते हैं। यार ब्रिम आप क्यों बार बार मिड पुश करते हो यार? कंट्रोलर लेके अग्रेसिव जाते हो बार बार। अरे यार मारा तो देख मैंने तो एक स्टैट थोड़ा किया मिनट में। 8 इन है, पहले बोलो 8 इन है, कहीं पे आ सकते हो। नहीं कर। हाँ मेन कंट्रोल रखो बस। 8 अगर हमारा गया तो मेन कंट्रोल रखो। मेरे पास है। 8 है। हाँ ठीक है। बचाओ। हाँ वहीं रख। Right there. स्पाइक ले गया शायद। Right there. ले गया? ले गया स्पाइक ले गया। One enemy remaining. इसने फ्लैश करा था ना? हाँ इधर ही कहीं था। इधर प्लेट मत हो ना, आराम से रीटेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साथ में खेलो। कैम देख। 30 seconds left. ये ना कैम। वापस तो नहीं भाग गए? सेव करेगा वो, उससे लग रहा है सेव करेगा।
10 seconds left. Found you. Okay, मार. खेलने दो ना यार, बैक सीट मत करो दोस्त. टाइम है. Spike planted. I've got your trail. Last player standing. अल्ट कर दे भाई. पहले डिफ्यूज लगा फिर अल्ट कर. Wingman's defusing. It's all you, little homie. हाय. साइपर तू दूसरों को ब्लेम मत कर, तू एम विप क्या उस पे रे? कोई बैक अरे तो मेरे को पता है ना कि मेरा एम नहीं चल रहा है, तभी मैं फाइट नहीं ले रहा था भाई. तूने इंसिस्ट किया फाइट ले ले. अरे नहीं, वो ट्रैप पे अटका था तब बोला था मैं ब्रो. अरे तो वॉल के थ्रू मार दूं क्या? ट्रैप पे अटका है तब मैं पीछे हूं ना वॉल पे, जब ट्रैप में अटका है तभी तो. तब दो टाइम पे बोला था ना मैं, वो मार दे मजाक में बोला. म्यूट कर दिया भाई, तो खेल अपना. ब्रीज वापस आएगा. यस. This goes here. नाइस. पीछे आ जा बस भाई. Cage triggered. आउटसाइड मिड मत छोड़ बे. लॉल. Camera taken out. दिन खराब है भाई, दिन खराब है. Last player सब standing. लोग उस स्मोक से ऐसे क्यों निकल Spike रहे हैं मेरी planted. तरह? You should run. अरे अगले एक्ट में आएगा बड़े. 15 लोग देख रहे हैं भाई. मेरा Switching sides. गंदा गेम प्ले आता है जब भी ज्यादा वॉचिंग आती है. No more deaths. We're ready. Yes, this should do. चलो भाई अटैक में मारेंगे. चलो यार, पिछला मैच तो मैं इतना बुरा नहीं खेल रहा था. पिछली बार लॉबी भी अच्छी थी. क्या हुआ? चिल होके खेलो कह रहा हूं. खेल लिया भाई, लोड नहीं लेना. अबे भाई इजी है भाई. प्लांट कर दिया बस यहां से. Here. ऐसे मॉली होगी उसकी, वो तोड़ ना दे तेरा प्लांट. Okay, let's get set up. यूट्यूब वार्म अप. अरे इसके पहले एक गेम भी खेला हूँ यार मैं, उसमें तो मार रहा था. एम फाइट थोड़ी हार रहा था उस वाले में. Fully smoked. Dash करो. चल. Cage triggered. हां मत जाओ भाई. चलो दो भी. देखो मेरे को तो भाई टप्पा ही थी. देखो सिर्फ तुम्हारी एचपी, बाकी सब लो हैं और दोनों इधर ही हैं. तुम लोग आराम से जा सकते हो. रुक जाओ. कोई नहीं यार, कर लेंगे. गेम जाने नहीं दूंगा. दो लो हैं. मारता हूँ. ओपन प्लांट करता है यार. One enemy remaining. अरे इनका एम तो बहुत क्रेजी है भाई, ये तो मार ही जा रहा है. Wings. Hot shot. Let's ruin their day. Is Breeze in school right now? Not currently, but will be online from episode 7 act 2. Act 2 जब start होगा तभी आ जाएगा. Act 2 popcorn. चलो. Let's go there. अरे यार पिस्टल राउंड से मोमेंटम ही नहीं आया ना ये गेम में. पिस्टल राउंड में मैंने हक दिया था इतना खतरनाक कि. Cage trigger. Flash. अरे खुद ही ब्लाइंड. Smoke's down. घुसना फ्लैश कर. चलो. Dizzy's up. Somebody's there. Wingman's gonna plant spike. भाई ये क्या है? मैंने
Careful now. Deploy destroyed. Reloading. Thanks, little man. बैक से Stim beacon here. हम तो भागता है किल लेने भाई। Eagle eye. हाँ मैं मेरे को भी चाहिए एक One फ्रैक्चर वाले। enemy remaining. क्या कर रहा है? Cage trigger. ये वापस नहीं दूंगा जेट में। Sorry, buddy, it's over. अरे हाँ भाई रख ले। Just let them try ले to ले ले catch ले। me. 2 बार देखा मैंने तेरे को, दोनों बार मुंह पे जाके मौली कर दी। गोश्त देना देखो। क्या? गोश्त Reloading. इसको कर यार, इसका बेकार है। क्या था? फिनिक्स तू मत कर, तू आगे जाके कर लो। Cage trigger. Dizzy's up top. करेक्ट को मार्क कर दे, तोड़ दो उसको। Launching smoke. 88. Molly. Reloading. अनम्यूट। रो देगा अभी फिर यार। फ्लैश है मेरे पे। Right there. Enemies are B. Saw you, Mosh. Reloading. Camera is destroyed. वापस जाओ भाई, चलो। कैमरा कहाँ से दिख गया उसको? क्लोज हो सकता है। 30 seconds left. यहीं चले वापस। हाँ चलते हैं यार, मेरे हिसाब से भी। टाइम नहीं है हम पे। टाइम नहीं, चलना पड़ेगा यहीं पे। फिर 20 सेकंड 10 सेकंड पे जाके प्लांट करेंगे। मेरे केज के अंदर प्लांट करियो, ठीक है? को केज डाल दूंगा भाई। भाग लो। नहीं है टाइम। ओके चल भाई चल। Cage trigger. 10 seconds left. बैक साइड। Spike planted. Thanks, wings. ट्रैप लगा है यहाँ पे, ट्रैप लगा है, देखो यहाँ पे ट्रैप लगा है, ठीक है? एक लिंक। चिल करो। One enemy remaining. टैग कर दूंगा ब्रिम। नाइस वन भाई। ब्रिम को तो जरूरत ही नहीं है। हार जाते पक्का। Reloading. लेट ब्रो मेरे साथ आ जा भाई अंदर। We know more. अरे मेरे को फैंटम वैंडल ही नहीं मिले। ब्रिम तो कह रही है भाई। और नीचे फ्लैश करूंगा तो ऊपर डैश मार तो तेरे फ्लैश भी नहीं होगा। This is बैक a साइड nice spot. मारूंगा मैंने। अरे गेको सेल्ट करा लो। हाँ अल्ट कर दे, यहाँ पिलर पे अल्ट कर दे पूरा। Here. सिचुएशन के हिसाब से करेंगे, अभी स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। अगर बंदे इको शीशे के हिसाब से करेंगे। फ्लैश करूंगा। कराया शीशे बंडल। Dizzy's up. मैं निकला लर्क पे भाई। जा फ्लैश कर। Wingman's planting. Right here. ज्यादा आगे मत जाना, करनी है उन पे वैसे ही। Put down. एक सिटी। ये कहाँ से मेरी मारा? अल्ट पे खेलना, ठीक है? हाँ जी। ब्रिम पे भी अल्ट है। मेरे पे कैमरा भी है। कर दूं अल्ट? नहीं अभी नहीं अल्ट है। ब्रिम तू तो ले ही मत भाई फाइट। Enemy spotted B. One enemy remaining. राइट में। Dizzy has targets. Right there. यार हमने दोनों अल्ट क्यों इन्वेस्ट कर दी? पता नहीं, बस अरे मैं ब्रिम को ही तो करवा रहा था बस। Stay in range of my My stim bad. beacon. We'll mow them down. भाई उसने फीनिक्स हमें बनने के थ्रू मार दिया वन टैप भाई। साइफर भाई। Yes, this should do. Need a अरे drop. ब्रिमस्टोन से लो ना, उस पे अंधा पैसा है भाई। अरे बी फेक, सुनो बी फेक करके ए चलना है तो बताओ। बराबर। देखो सुनो, स्पाइक यहीं छोड़ दे, बस स्पाइक यहीं छोड़ दे। हाँ ठीक है वहाँ छोड़ दे। अरे ये तो बहुत आगे हो गया। करना है ना, मैं फ्लैश देके लेके आ जाता। मैं भी स्मोक डाल गया था।
मैं डाल रहा हूँ उसको, मत डाल। हाँ चल तू हेवन डाल दे। Reina, where is everyone hiding? अबे यार ये मेरी अल्ट भी नहीं हुई, बहन का लौड़ा आ गया भाग के। अल्ट नहीं हुई अबे यार, पुश कर गया वो। मैं केज डाल तो वैसे मैं सोचा ही नहीं था मैंने केज डालने का, अभी वो सिनेरियो क्रिएट करके मतलब। यार गेको साइड पे घुस गया है, तुम लोग होल्ड करो ना उधर। इसमें हेवन पर हो, हेवन पर हो, केयर करना है हेवन। जा जा। Here. एक आर्ट्स पे है। हाय 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 हाय। बैक साइड है यार। Spike dropped. कार्ड Launching smoke. Got the spike. Blocking sight. Stay down. आर्ट्स। मार्ट है, प्री मार्ट है। Last player standing. Spike down A. Thirty seconds left. My bad. I'll outshine all their radius. तू प्लांट ही कर लेता, स्पाइक क्यों लेकर आया? मतलब उसको फाइट तो लेनी ही पड़ती है, बस स्पाइक रख के चले जाते तो सही रहता। स्पाइक क्योंकि 4v2 था ना, फाइट तो लेनी पड़ती है यार, जो बंदा पता है उसको मार ही दे तो बढ़िया रहता। 3v2 था यार। हां इजी यार, इजी चलो इजी। बी चलो। हाँ भाई तू लर्क कर साइफर थोड़ा ब्रो। हां कर फ्लैश कर। उसका स्मोक जाने के बाद कमिट करते चाहे तो, या फिर जाना तो बोलो। ये जगह टैरेट है। डब्ल्यू करो, फिर डब्ल्यू करो। जाओ ना, अभी इतने देर नहीं किया तो जाओ। मैं चूतिया हूँ जो कैमरा लेने के लिए वापस गया, बस यार सिर्फ कैमरा लेने वापस गया। Last player standing. थोड़ा होल्ड खेल ले। जेट मुझे तब से ऐसे मार रहा है भाई, टाइमिंग पे पता नहीं। Who am I kidding? My knees are gonna kill after this. पेट से मांग। किया था। पेट से मांगना। अच्छा वो। Thanks. आ जाओ आ जाओ। Wow, this is a nice spot. वो पीक लेते हैं क्या कहीं पर? हाँ ये आर्ट पुश कर रहा है, सुन ना गेको, आर्ट पे फ्लैश डालियो जब जेट आगे चले जाए। जेट तू डैश कर लियो। ठीक है। मैं तेरा विंडो डोर देख रहा हूँ। डाल दिया। Enemy spotted A. पता नहीं ना। Grounded. नाइस। Cage स्मोक रेडी मेरे पास है। Reloading. डालो। मेल्ट कर रहा हूं। जाओ फिनिश करके जाओ। Enemy killed. क्लोज है, क्लोज है। Spike down A. अरे यार मैं जो बैक साइड है। टीटी आ रहा है। मुझे साइफर का किल एक चिल कर। रुक जाओ। मत पी की मत ले। मत लियो भी। One enemy remaining. केज है आर्ट। पीछे पीछे बैक साइड है। फ्लावर है, फ्लावर है। ओके ओके। Nice. Take what's useful. नाइस। Shoot the bad guys. फिनिक्स मेरे से भी नीचे लग गया। लम आउट यू फिनिक्स, यू आर सो बैड। हो जाएगा। Here. फिनिक्स भाई नीचे से आवाज नहीं आ रही है। अरे नो ही तो है। This goes here. वो थोड़ा सा ऊपर गया ना, मैं सोचा बज लूं फटाफट, क्या पता बाद में वापस आगे निकल जाए। सही बात है, सही बात। ऑफ हो गई भाई, बीच में मत जाओ। फिर से मेडिक पिक के लिए खेलता। I got you, bruv. जेट भाई किल कॉल तो अच्छी थी। फिनिक्स बैंडल दियो। बहुत अच्छी। अबे आठ आता, आठ देखा कर। यहाँ कोई नहीं आता, टरेट पे खेलते हैं यहाँ पे। मैं स्मोक दे रहा हूँ। Smoke's down. शॉट लगा टेरेट का तुझे। Cage triggered. Reloading. रुक जाओ यहाँ मत जाओ, यहाँ रोटेट आ गया। यहीं चलते हैं ब्लिंक पे। वो है तेरा विंगमैन करियो यार। फ्लैश करूं क्या विंगमैन? फ्लैश कर दे, कुछ भी कर दे, फेंक दे बस कुछ।
लो है जेट को हेड लगा भाई ये डेड ट्रैप तो नहीं है। अरे मर क्यों नहीं रही 120 है। ए चलना तो फिनिश साइफर के साथ। Cage triggered. I've got your trail. Tripwire is no more. Camera taken out. I must wait a साइफर moment. एमिन आ रही। मेन अरे यार नाइस। ये मेन आएगा। 30 seconds left. संभाल के थोड़ा। जेट लो है। आ गया। डबल पिक लेते 1 2 3 Here. जेट लो है। No more charges left. One enemy remaining. My ultimate is ready. Careful now. हो गया तो भाई Last player standing. होल्ड करो सॉरी माय बैड। क्या प्लेयर है Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. मैं ड्रॉप देता हूँ, मांगो। जेट वैंडल कौन सा है तेरे पे? Can someone buy me, please? साइफर तेरे पे कौन सा वैंडल है? Appreciate it. क्रोनोवाइड है दोस्त, चाहिए क्या तुम्हें? हां दे अरे सुनो ए चलते हैं मेरे अल्ट के साथ ए चलते हैं, आ जाओ। ओके मुझे भी मेरा भी और कौन मिल जाएगा, मेरा भी अल्ट पोस्टमेंट के लिए उनके भी पास भी बहुत अल्ट है। अरे बाबा मुझे पूरा लूट लिया है तुमने। ये राउंड हारना मत, मैं बहुत लूटा गया हूँ ये राउंड में। वॉक करते चाहिए तो केजे खेल रहा है इधर। यहाँ से फ्लैश करो चाहिए तो ऊपर से करना। वाह जेट भी है। प्लांट भेजो Plant the spike. अरे भाई 3-3 4-4 लोग बैठे हैं आर्ट्स में। तो ब्रिम के अल्ट उसको टाइम बाय कर दो, बस। जेट स्मोक की तरफ फाइट मत ले, स्मोक कर। पीक मत लो। मॉशपिट डाल दे। जल्दी कर दिया। अरे मॉली पीक मत करो। हाइड मैं मार्क करूंगा। एक साथ पीक करना, दोनों सिर्फ प्लांटर को मार देना, बस हो गया टाइम। Last player standing. One enemy remaining. बहुत बढ़िया। जेट ने जो होगा ना हमारे। Match point. I need this. फिनिक्स भाई तुम ऊपर चले गए हरामजादे। My thanks. मेरे को भी दे। Oh, this is a nice. I need this. Reloading. I need this. ये स्टैक कर सकते हैं राउंड, थोड़ा संभालो चलो। ओके आ गया मेरे पे। तेरे वेंडर पे यार मेरे साथ धोखा हो गया भाई, बहुत पब्लिक आ गई आर्ट में एक साथ। ओही मैं स्मोक के थ्रू घुसा, 4 लोग खड़े थे, मैं भाग गया। तू तो और भी सेफ खेल सकता है, तो डैश एक्टिवेट किया था तूने वहां पे, जिद्दी की तरह फाइट ले रहा है ऊपर से। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेफ नहीं है अभी। Cage triggered. ये कुछ तेरा ट्रिप नहीं है। अल्ट कर रहा हूं, उधर अल्ट कर रहा हूं। Cage triggered. Where is everyone hiding? चलो एक घुस जाओ। ये आ रहे हो ओके चले बैक साइड है, वो खाली होगा आगे। आ रहा हूं। ये 120 जेट ऐसे भागता क्यों रे? तू आराम से फाइट लेना दोस्त। एक ही था। वापस आऊं क्या? हां आ जा। अबे रीना कोई तो मारना था, मार देता मुझे लगा। बैक साइड खेलता है फिर। Wingman's planting. रेना पे शील्ड नहीं बचेगी जब तक वो वापस आएगा। मॉशपिट भी है, मैंने 120 दिया है। पीछे चले आओ, गेको मॉशपिट भी है। बस अपना राउंड है, पीछे चले आओ।
दोनों सीटी आएंगे पक्का पक्का पक्का। Got the spike. अच्छा हमने प्लांट ही नहीं किया क्या अब तक? One enemy remaining. Last player standing. Moshpit Down B. मॉली 10 seconds left. अरे गेको स्लो है बे थोड़ा। इस कब से बोल रहा हूँ मॉशपिट है। I got your backs. Just, you know, from the front. सेमी बाय करो, एकदम इको मत करो, निकाल सकते हैं ये राउंड भी। मैं अल्टी कर रहा हूँ। जल्दी यहाँ लग से कूदूंगा तो अल्ट वाला दिखेगा खिड़की। देखा जीत गए ना। अबे जीत ही गए थे वो ब्रिम ने। चलो ब्रिम ने मार तो दिया था लेकिन वो गेको को तुरंत मॉशपिट डालना था। जब वो राइट साइड कोने में था ना तभी उसको मॉशपिट डालना था। उसने बहुत लेट किया मॉशपिट डालने में। Get out of my way. और फिनिक्स को बोला है वो जेट हर राउंड 8 पुश करता है, फिर भी वो अरे हरामी पीछे। Headshot. मत तो फिक्स के खेल लो। Cage एक trigger. ए में ना दिख गई थी पता मुझे उसकी बॉडी पहले। ठंडा है वो। अरे अब फिनिक्स को पता है कि वो हर राउंड उधर टर्रेट लगाता है तो क्या पीक दे के वापस आ गया। मैं केज करके जाता उससे अच्छा। Caution here. अरे अच्छा चांस है ये भी फिनिक्स पे अल्ट है। उस केजे की अल्ट वेस्ट करा दो, लास्ट राउंड के लिए बचनी नहीं चाहिए वो। केजे की अल्ट वेस्ट करा दो बस। फिनिक्स वेब यू हैव होल्ड करो मेरे साथ, इधर होल्ड करो ना। मैं डग आउट होता है एक। नाइस मेरा अल्ट है। बस ओके। ओ एक Last आ player गया। standing. टाइमिंग देखो यार। I've got your trail. केजे की अल्ट यूज ही नहीं हुई। फाइट ले ले जल्दी से। तू वहीं क्यों था? अरे भाई वो आल्टा के मार गए ना इन दोनों को। अरे तो एक बंदा 8 देखो फिनिक्स की बॉडी को कवर कौन करेगा? एक बंदा डग आउट क्यों आ गया वापस? Only brought up for me. बराबर खेला मेरे को मार सकते हो। अल्ट है मॉली है सब ऐसी प्लांट निकालो पीछे। और सुनो ये राउंड हमको बी ही जाना है। ए गए तो केजे की अल्ट पे हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। बी ही जाना है, भले मर जाए पर जाना बी है। चलो नहीं अगर उसने अल्ट कर दी तो भाग लेंगे। तो बात अलग है, रीटेक के लिए बोल रहा हूँ। अगर प्लांट के बाद अल्ट बचती तो हमको बी ही जाना है। और मैं लर्क नहीं कर रहा हूँ ये राउंड। बहुत अनलकी। फ्लैश कर फिनिक्स तू मत कर, तू स्मोक पे। Cage trigger. Somebody's there. Reload him. आएगा आप स्मोक रुक। क्या कॉल लेना और ले। अरे यार मेरे को Last player standing. Flawless. My bad. You should run. Switching sides. Overtime. एक राउंड मार। My smokes can block the enemy's line of sight. यार मैं भी देख रहा था हर राउंड। साले इस बार आ गया। फ्लैश करते हैं क्या वो कोई यहाँ पर? हाँ स्काई फ्लैश करता है। कभी करता है। सही में बेबी रैक तो पनौती है भाई। जब भी ये दिखता है ना मैं हारता ही। मेरे किल्स भी हो रहे थे उसके पहले, वापस होने लग गए थे। That goes there. Ah, this is a nice spot. Yes, this should do. तुम भी खरीद लो घोस्ट भाई, फ्री का पैसा ही तो है। हाँ सुनो ना भाई, इस बार कुछ मत करो। मेरा ब्रिमस्टोन तुम कंट्रोलर हो ना, स्मोक नहीं बचेगा। रीटेक कैसे लेंगे? आराम से खेलेंगे अब। चिल करो। मेरा कैमरा ट्रैप लगा है उधर। फिनिक्स ट्रैप लगा है वहाँ पे जहाँ तुम देख रहे हो ना। घुस गया। सारे साइड है। बहुत बढ़िया जेट से कवर कर रहा हूँ तुझे। चिल कर कवर कर रहा हूँ। ये किधर है? Cage triggered. Reloading. फ्लैश आपने बस कीजिए। Cage triggered. My ult's ready. One enemy remaining. मेन लेफ्ट में। Last player standing.
मेरे एम पे नहीं आया वो भी बीबी एक बार नॉट हम मैंने कर दिया लाइक अब देंगे देख चलो भाई डब्ल्यू दे सीने पे मार गया भाई लास्ट में मैं कैसे आ गया Switching इसके लिए sides. Match point. wasn't he on my aim This goes तुझे here. ऑफ करने क्या जेट ये आ जाओ हाँ लग तो रहा है कर लेता हूँ लग रही है कर ले चल कर ले लग रहा है तो कर ले और तू अपना एक स्मोक बाय कर ले शॉर्ट ही रिक्वेस्ट कर ले किसी से Need a drop. Thanks. अब ड्राफ्ट बाय कर ले जल्दी कर ये स्पाइक रहोगे को I will find you. लर्क को लुक करो थोड़ा कर रहा हूँ स्मोक कर वो कर फ्लैश कर मतलब मैं मारता हूँ रुको ये पुश भी होता है अबे माइक दबाने जा रहा था केजे का टरेट लगा इधर केजे की यूटिल वेट करानी पड़ेगी हमें सारे स्मोक जा रहे हैं और ले लो किसी को लेना है ले Fully smoked. Molly. फ्लैश है इधर से फ्लैश दो बैक साइड नाइस I have retrieved the spike. कर दे फ्लैश Watching this spot. Cage triggered. नेक्स्ट टाइम नहीं Last player standing. अबे ये क्या ग्लिच है बे प्लांट कर हो गया था पूरा यार मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है प्लांट करते टाइम Switching sides. Overtime. जाओ भी मैं देखता हूँ ए पे मैं ट्रैप लगा भाई भी खेल लो दो लोग भी That goes there. एक और में देख लेंगे Yes, this goes here. Oh, this is a nice spot. चलो भाई मिलते हैं सही में जा रहे हो या ट्रोल कर रहे हो That goes there. अच्छा डोर फिर कौन खेलेगा डोर अरे बस चाहिए वेट में Yes, this should do. डोर जा रहा हूँ मैं ठीक है मेरे ट्रैप्स लगे हैं गेको वैसे स्मोक कर देना इधर जल्दी Cage triggered. रेना 86 जेट इज आल्सो लो Cage triggered. इन है क्या Spike प्लांट हो गया था में क्लोज था प्लांट भी कॉल दिया क्लोज Last player standing. जीजी हो गया भाई ये तो मेरी वजह से आ रहे हैं गेम ये तो मैं कुछ भी बोल नहीं सकता घर पे डांटने का ठीक Switching है sides. Match point. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. X पे खेलेंगे Oh, this is a nice spot. बी साउंड दो ना बी साउंड दो लग करते थोड़ा बी साउंड दे लो मैं केच करके आता हूँ बीबी केच करके वापस आता जाओ वो आर्ट पुश करेगा जैसे बी पे This is gonna be fun. हाँ ठीक है Cage triggered. नहीं यार दो है एमएन दो है ठीक है बी आओ ना बी वॉक करोगे धीरे धीरे अब तो उनको पता है हम भी जा रहे हैं अब तो तुमने मास स्मोक कर दिया ना भाई तो उन्हें पता है अब हम यहाँ जा रहे हैं हाँ फिर से मिड लेंगे जिसको मारते हैं भी नहीं चलता फिर क्योंकि एक का पूरा इन्फो ऑलरेडी उन पे है नाइस मिड वॉक इन करते हैं मिड फ्लैश करो इधर आओ मिड फ्लैश करो इधर और जाओ साइफर और मैं बी घुसता हूं तुम स्पाइक लेकर इधर आ जा भाई बहुत रिस्की जगह है इधर आ जा Camera taken out. Cage triggered.
जेट ए पे था मिड से आता अरे रे स्पाइक Spike down B. 30 seconds left. दोनों उधर I got Last player standing. अरे तो स्मोक क्यों कर रहा है यार? मेरे को कवर देना भाई। मैं इस सिटी साइड खेलने दो उसको। Ten seconds left. Defenders win. व्हाट एन अनलकी गेम ब्रो। किधर भी जा रहा हूँ मर रहा हूँ। 2 रैंक वाले में पिट गया, अच्छे रैंक वाले में मार रहा था। ये वही जेट है, स्विफ्ट किलर है। इस बार भी वही है, रेना और जेट पिछले के डुअलिस्ट। हाँ इस बार भी रेना जेट ही लिया। श्रीमान कोरोला अल्ट्रा क्रोलो भाई सेम ओपोनेंट्स आए थे यार, सेम ओपोनेंट्स आए थे। कितना जीत रहा था मैं? 12-10 था कुछ, 12-9। हाँ 12-9 था। उसके बाद ये भी जीता पर फिर हार गया। पिस्टल राउंड में जो रंगोली बनाई थी ना, उसके बाद डिजर्व करता था मैं ऐसा खेलना। ये गेम हारना ही डिजर्व करता था मैं। उस जेट को 6-0 पीटा था मैंने, जो मेरे को अभी मार गया 3-7। Match found. मैं डुअलिस ले रहा हूँ भाई, डब्ल्यू की नहीं कर रहा। क्या दिक्कत थी भाई जी? थैंक यू सर, हो गया ठीक है। हाँ मेरे को बताओ जरा भाई क्या हुआ था, हमें भी तो पता लगे। I can't close the settings menu on my bracer. How do I? Oh. Grim और Siege, ठीक है।
अब कितना आ रहा है FPS ध्रुव भाई? ये क्या है 14K का क्या जो कि मेरे को नहीं समझ आया। रेज मराठी ए भाईंच्या आई जाऊन टाक मित्रमंडळ चला. Bomb buddy out. B. Let's. Hey! Belong. अरे वॉल कर देना तो. 62 on jet. अरे बढ़िया. एक कभी एक एल्बो. एक बिलोंग कभी एक कभी. Cage trigger. साइपर जाओ ना जरा. Spike planted. Last player standing. 62 on jet. ओ भाई हो गया भाई, ये गेम तो हो गया. 300 सही है. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? वैसे मोस्ट प्रोबेबली आखिरी गेम है, उसके बाद तो लाउड PRX है भाई. लाउड PRX पाव भाजी खा के आया मस्त, मजा ही आया. Out of charges. ये गेम में बेस्ट मंटाज बना सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता. योरो लो है. एक और उसको राइट पड़ ही जाता ना फट से. Right here. Right here. Reloading. 52 142 on Euro, 55 on Sage. One elbow. Last player standing. 142 है यार. Enemy remaining. ले लो 142 टैप तो कर. अरे टैप तो कर. अरे दोस्त टैप तो कर. अरे भाई this is no problem. क्या रुक छूती है. We are strong. अरे बैक साइड आया रहेगा तो फोकट का मारूंगा ना. Forget that. क्या बोल रहा है? खेलने दे, मर गया तो. तो गिनती रहेंगे ये तो. अरे चिल मारो, जो जिंदा है उसको खेलने दो, शांति रखो. शांति लाल मेहता. Fly, my winter son. Do what you do best. Take flight. Go get him. Who's next? Cypher came, use came. One enemy remaining. Nice. Spike down B. Grenade! Satchel out. Reloading. Don't worry. The house. दिन नहीं है भाई आज मेरा. Thanks. Grenade!
30 seconds left. Tripwire destroyed. 10 seconds left. Spike planted. One enemy remaining. मुझे करने देना. Reloading. अरे मुझे करने देना. तेरी अल्ट है भाई, तेरी अल्ट है. Thanks. Shame. I love explosions. Someone track down their brimstone. Cut off the head of the snake. I have extra money if anyone needs. I need this. Spike down A. Grenade! Satchel out. Spike planted. हैं? Go get him. Satchel out. You will not kill my allies. Last player standing. 142 on stage. भाई वो देखा जेट को कुछ भी मटका लगा भाई. ऐसे बोल. अरे तो भाई 4 बार नहीं बोलना पड़ना चाहिए ना मुझे. पता है उसको उसकी अल्ट को खुद ही दे देना चाहिए भाई. तो कि भाई तू ऑलरेडी भी वो तेज ने 141 डैमेज खाया पर प्लांट नहीं छोड़ा भाई. पूरा कैसे नहीं मरा यार. Watch and learn. Watch this. Smoke's down right here. Yeah. On the money. My ult's ready. Grenade! Spike planted. Here comes it. Okay. One enemy remaining. Well done. चलो अल्ट तो मुझे अल्ट का किल तो मुझे मिला. ये क्या मारा भाई. कुछ भी मटका भाई. कुछ भी मटका था वो. Thanks. Well done. ओह It is over. My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. Let's make some chaos. मैं थोड़ा डीप स्मोक करना पुश कर रहा हूँ. Launching smoke. Here. Here. Get out of my way. Found them. Hostile removed. एक शावर आ रहा है. एक शावर आ रहा है. Taken out. My thanks. Enemy tag. Caught one. ब्रिम तेरे सामने आएगा एक. Eagle-eyed. Enemy spotted A. One enemy remaining. Reloading. मुझे लगा वो बचा है साला. Reloading. Reloading. Done here. Reloading. Remember to talk to each other out there. If we communicate, we win. आज सब वीकेंड पार्टी में गए लगता है. हो सकता है.
भी हो रहा है वैसे प्रॉब्लली। हुक्का के बाद ब्रिमस्टोन था, लॉन्ग पे योरू और सोवा है। Who's next? Cut. Camera taken out. Grenade! Where is everyone hiding? Spike 120 down 120 B. नाइस वन। हुक्का One हुक्का enemy remaining. लॉल साइफर पेल दिस भाई। Spike spotted B. पर मेरे को ये 2 असिस्ट क्यों मिले हैं? I find them. मुझे नहीं चाहिए असिस्ट भाई, मुझे किल चाहिए थे दोनों के। 179 कौन सा डैमेज होता है भाई? ये कैसे पैर है? ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगा। तोड़ नहीं सकते ना वो ट्रिपर जब तक नीचे ना हो। Listen up. लॉल योरू Enemy spotted A. One enemy remaining. Well done. Satchel out. Reloading. Who said this wouldn't be fun? I'm having a blast. खेलेगा यस आना, तुझे मैसेज किया था मैंने इंस्टाग्राम पे। पर एम कुछ खास चल नहीं रहा है तो आज तो तुझे मारना पड़ेगा। तो दोनों नूब की तरह खेलेंगे तो हार ही जाएंगे। वार्म अप कर ले तब तक, अच्छे से वार्म अप करियो बॉम्बैट। Is there obstacle? अरे रे 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 ओरिजिनल वाला कौन था? प्रेम अग दिया। Spike planted. Last player standing. One down. My ult's ready. I can't see them yet, but I can feel them getting ready. ल्यूक ऑफ कैसी है? ल्यूक कौन सी ऑफ है? वो बिना वीएफएक्स वाली होगी, मुझे नहीं पता उसका नाम। मतलब ल्यूक सेना के ल्यूक है, बेकार है भाई, वो सब बेकार है, वो कुछ भी नहीं लेना। बिना वीएफएक्स की गन नहीं लेनी है भाई। Safety's off. Enemy spotted A. Well done. Prepare for hellfire. Ow! Grenade! नॉट प्लांटिंग, नॉट प्लांटिंग। You will not kill my allies. लॉल You're fine. Enemy spotted A. Go get him. Ouch! My ult's ready. Satchel out. Satchel out. One enemy remaining. Wait for me. Grenade. प्लांट कर तो बताना, अल्ट करूंगा। He might come in. हाँ ये राउंड है, मुझे पता था सैचल से मरेगा। स्पैम भी कर दिया और एक सैचल पहले भी खाया, मतलब दूसरे पे तो मरना ही है Last उसको। round before the I need switch. this. Nothing will be saved.
सैचल से भी मर जाते बंदे। हाँ सैचल में डैमेज होता है 50 तक का लगता है मैक्सिमम। भाई यहाँ गन पड़ी है, एक्स्ट्रा चाहिए तो दिया रे दिया रे बिलोंग मल्टी। Who's next? अरे मेरे पे अल्ट थी यार, शुद्ध ब्लॉक कर दिया चूतिए ने। Enemy spotted. Spike down B. Last player standing. क्या बोलूं जेट को भी यार, अब रोने लग जाएंगे। Switching sides. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. यार पहले अल्ट पॉप कर देनी थी यार मुझे, एटलीस्ट अल्ट की बटन दबा भी दिया तो ना सेटिस्फेक्शन मिलता। बिना अल्ट करे मर गया यार। इधर जा रहा है अपन, बैटरी लगा था वैसे। Going A. Going A. Going B. ठीक है बिलोंग लॉक करता हूं। Going A. Reloading. Into the unknown. Reloading. Well done. Right here. Reloading. Here. Reloading. टेक टिप या यूरो का टीपी यहाँ पे। Launching smoke. असली यूरो आ गया टीपी में। My ult's not ready. यूरो का टेलीपोर्ट अपने स्पॉन में है। Spike dropped. अपना स्पॉन करना एक बार। Get out of here. भी आ सकते हो? Scanning ahead. Out of charges. Grenade! Found them. Boom! Wonderful kill. One enemy remaining. Wait for me. Grenade! हुक्का क्या मैंने हुक्का क्लियर नहीं। आ रहा हूँ। ए शॉट दिख गया, चल प्लान कर प्लान कर। मुझे दे स्पाइक, मुझे दे। I have the spike. मारियो मत भाई, मारियो मत। सीटी प्लान करो, चिल करो, सीटी प्लान करो। हां बैक साइड पे। आ गया, हुक्का के अंदर आ गया। Okay, done. Well done. Kill this. They will scurry, and then they will die. शेरिफ दो जेट शेरिफ दो। Well done. बी चलो ना, मैं क्लियर कर दूंगा। सुबह तो ड्रोन करते शॉटगन लेके ई हॉल चला जाऊंगा सीधा। और ना अगर वो वॉल करे तो डब्बे के ऊपर में चढ़ा करो बे, वो सारे बंदे फिर डब्बे भी मारेंगे ना, वॉल और करी हुई है ऑब्वियसली। तो ये शॉट क्लोज। Bomb buddy out. आ रहा हूँ रुको, आ रहा हूँ। दो हुक्का भाई। हाँ नेड करूंगा चिकन, नेड करूंगा चिकन। प्रिम निकल ले। लॉल 50 स्मोक्स नहीं आए बे, स्मोक्स कर दिया। One enemy चलो नाइस। remaining. मेरी शॉटगन सेव कर लेना प्लीज एक बंदा। I must wait a moment. किधर है भाई शॉटगन? ले अपने साइपर ने ले ली। मिल गया। ए ब्रिम बोसड़ी के तेरे किया भाई बिलोंग कर करना एक बार अपडेट मार कर सकता है स्पॉन और ट्रिप। Revealing area. Someone's in defender spawn. बेचारा। Shut the fuck up bitch. तेरे तो ले 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 लूंगा भाई। Reloading. Okay, I only have like 78 grenades left. शॉटगन चला रहा है कि दे रहा है? तेरे को क्या चाहिए? शॉटगन चाहिए, वेंडल चाहिए, गाना चाहिए, क्या चाहिए? शॉटगन दे दो। गांड किसी और को दे देना जो स्ट्रेट नहीं हो। नहीं मेरी नहीं रे, तेरी दे रहा था।
मेरी ही गांड मेरे को देगा क्या वापस? हाँ भाई चल ये ऑल घुस जा डबल सैचल मार के ड्रोन करता हूं। चलो 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 हाँ चल चल चल। हां छोड़ दे बाइक का ड्रोन ही नहीं है छोड़ दे। Well done. Revealing area. फालतू का डैमेज खाया मैंने, ड्रोन ही नहीं है। Caution here. बॉम्बे तो ऑनलाइन ही नहीं आया अभी तक। अच्छा आ गया कर रहे थे। तुम्हारा राइट लेफ्ट करा कम है Reloading. भाई मैं तो निपट गया, ये ड्रोन करेगा चक्कर में आगे चला गया, वो मेरे को 2 मार गया भाई गार्डियन। काम कर ले तू शॉटगन इधर दे डबल सैचल में मारता हूं। ए बी साइड का रिवील है मेरे पे, लाइन पे घुस जाओ चलो। Scanning ahead. अरे टैग हुआ साइड पे लो चलो चल के Stim beacon here. मार चुक गई। 130 तेज। उधर 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 उधर। अरे सुबह कॉल दे रहे उसको। टीपी कर लिया तो हारेगा, बस कर लिया ऑब्वियस चीज। 30 seconds left. यही बैठा है वो उनका जेट। यहीं पे एक बंदा, यहीं पे एक बंदा, यहीं पे। ये निकाल लिया ना, 150 रुपए दूंगा इसको मैं। भी भाग जा, टाइम नहीं मिलेगा बचेगा वरना। राउंड तो लो। One enemy remaining. 10 अरे seconds अभी left. नहीं है रे टाइम। Revealing area. आगे बेबी एक मेरी हार का पैगाम लेके। अरे रेज रेज रेस रेस हाथ में चलो ना, अपन प्रो कर रहे हैं। मराठी है ना रेज? भाग ही नहीं दूंगा। कैमरा का रियल है क्या? नहीं हार रहे तो इधर भाई, इधर डू दिस तो भाई। Take flight. Get him. Shackle up. Shackle up. टीपी मारो टीम है शावर टीपी है। अपना स्पॉन कह रहा हूं, यूरो को सेकंड टीपी अपने स्पॉन पे रहता, अपने स्पॉन में मारो साले को। Here comes the party. रुको रुको रुको, मैं पे आ जाओ आ जाओ। Where is everyone hiding? Trained you. It is मारे cage के triggered. ब्रिम मोटे Cage triggered. अरे ब्रिज ट्रिगर जा, ये चले दोनों इधर। लॉल हो गया है। One enemy हेवन का remaining. प्लान दे, हेवन का प्लान दे। Right here. My planet. क्या रिकॉर्ड है भाई? भाई स्लो खेलना लेजिट जीजी है। शावर शावर शावर। गल्ले पुश करेंगे। मेरी अल्ट वेस्ट हो गई भाई, 3 अल्ट में से 2 वेस्ट हुई, 1 तो टीपी ले उसने। हाँ शावर 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 साउंड आ रही शावर में। पुश शावर में साउंड आ रही तो ये यहाँ कंसंट्रेट कर रहा है। Take what's useful. Reloading. W गेमिंग साइफर, W गेमिंग। Wind. Show me where to go. अगर तुम्हारे हाथ बेटी है तो वो भी एक गलती करके मार गया। ग्लोरीज मत लेना भाई, खेत में चले जाते हैं क्या पसीना? Get out of my way. रुको रुको रुको, करता हूँ क्लियर। Reloading. अबे पता था मुझे वो छपरी उधर है, फिर भी मैं मर गया उस नल्ले से। ब्रिम उन्होंने साइड खाली कर दी, चले जाओ उधर, जा जा जा। ब्रिम ब्रिम ए खाली कर दिया उन्होंने पूरा। लॉल मजाक कर रहा था। अरे रे 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 रे।
इजी है भाई 1v3 विनर पर। एक तो नीचे ही बैठा है दल्ला शॉटगन लेके, खुद को मॉली एक पीछे आके मारेगा लोग। Thrifty. Let's ruin their day. Out of charges. अरे सुन ना ब्रिम, योर अल्टी मार दे, डबल सचल ले ले साइड पे। Yes. लेकिन पहले स्मोक्स बाद में अल्ट है ना, क्योंकि मैं जाऊंगा तो सब मेरे को मारेंगे। ये स्मोक कर दे। There. स्मोक फिर अल्टी फिर नेड बूम बॉट। Fully smoked. थोड़ा Bomb buddy out. एक टावर है। Lock inside. Lock inside. My ult's ready. अरे Spike down A. 100 यार। इधर जाऊं मैं, इतना कंफ्यूजन कर दिया। सोवा 100 है, सोवा 100 है। Last player standing. अरे ब्रिम तू यहाँ पे फाइट नहीं लेना चाहिए था, तो टिपी कर सकता था। अरे बात वो नहीं यार, वो वॉल कर देता है यार, चूतिया पूरा गेम खराब कर रहा है ना। तोड़ सकते हैं अपन उसका सीन नहीं कुछ। अरे पर फ्लोर भी आ जाते हैं ना, घुसने में दिक्कत होती है। वो अपन गलत घुस रहे हैं, स्मोक वॉक में जाने की जरूरत नहीं है। वो जेट स्मोक के बाहर आके अपना पाइप को मार के चला गया। तो बाकी 3 लोग क्या कर रहे थे? मैं तो स्मोक के अंदर ही जाऊंगा ना, शॉटगन है तो भाई। Well done. Let's start this party. हाँ उसकी वॉल वेट कराओ यार, हर राउंड उसकी वॉल वेट करानी पड़ेगी अब। प्योर वॉल कर दे। स्मोक करना कहीं तो स्मोक कर दो। बैक साइड है, गैप है वॉल में। Last player standing. ये भी कहाँ कर रहा है पता नहीं। Still got it. अब थोड़ी आएंगे, अब तो गन चेंज करनी पड़ेगी। अब नहीं आएंगे दोस्त, गन उठा के दूसरे लगा के बैठा है लॉन्ग रेंज से। बस हो गया, चलो भाई ये राउंड आ जाए तो अभी टेंशन हो जाएगा। पीछे चलो चुपचाप। पेज ए पे वॉल पे जरा लिंबे ए पे मॉडल मुझे कुछ नहीं उठे नहीं है। गेम सही होने में कितने महीने लगेंगे? 5 मिनट रुकना मत, बहुत टाइम लगेगा। सब बिलोंग जाना, सब बिलोंग सोलो का तो सब बिलोंग। टाइम चला रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम बाद। चलो बिलोंग जाओ ब्रिम बिलोंग जाओ। टीम बीकन डाल दो। There. Revealing area. Dim beacon down. पुश क्या हो यार, वो ए पे टीपी मार गया। Holy smokes. Spike down B. क्या स्मोक कर दिया यार। Okay. अरे रे 4 बंदे पीछे हैं यार, मेरा क्या एफपीएस ड्रॉप हो रहा है यार। इतने बंदों के बीच में तो नहीं चलेगा मेरा एफपीएस। प्रेम उनके लिए स्मोक। Shoot the bad guys. अरे उनके लिए कौन स्मोक करता है भाई? मुझे लगा अकेला होगा सोवा यार, 3 बंदे। सिंपल स्मोक दे देना यार, एक एल्बो सिटी क्यों एडवांस करना कुछ। उसने किधर स्मोक किया था? इधर सामने उनको सिटी आउट आने के लिए। ये क्या स्मोक है भाई? अरे ऑफर भी है तो वहां स्मोक करके क्या मतलब। गया ये मैच, वो बिना सेंटिनल के हम नहीं मारते। Nowhere to run. Beacon here.
Who's next? एक लिमिट होती है यार, मैं ही मरता हूँ बेंच शूट। अरे नहीं ये फेक टीपी है दोस्त, ड्रोन वेस्ट कर दिया यार। एक बेलम अकेला सोलो ऑपर है। साइफर की पोजीशन देखो जरा, साउंड क्यों दिया इसने, पता इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हैं भाई ये लोग राउंड के लिए। Last player standing. अरे भाई वो लोग समझ गए अपन कैसे खेल रहे हैं यार। अब तो हम 4-5 राउंड से एक ही चीज कर रहे हैं, बस सीधा पुश 5 मैन पुश पुश पुश। स्प्लिट करते हो तो ऐसे स्प्लिट करते हो कि स्पाइक के साथ कोई आ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं मतलब है यार, तो बिल्कुल रुकी की तरह खेल रहे हैं भाई हम। भाई सेव कर ले यार, ब्रिन क्या करेगा प्लांट करके। 10 seconds left. पीछे जाना भाई। इधर स्मोक किया था बड़े। What do you say, drone? Ready to stretch your wings? अरे जेट फिर से फास्ट करेंगे नहीं होगा, तो पिछली बार फास्ट किया तो सेज वॉल फ्लोर में फंसे रह जाते हैं भाई। उसकी वॉल वेट कराओ ना यार, थोड़ी देर बस वॉल वेट कराओ। मैं घुस रहा हूँ, मैं इतना फ्री में मर रहा हूँ ना, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाले डेथ मैच खेल रहे हैं मेरे साथ, आ रहे मार के चले जा रहे हैं। बस थोड़ा सा शांति से खेलो यार। कब से बोल रहा हूँ वॉल वेट कराओ, कुछ नहीं लगेगा। FPS देखो 100 FPS जा रहा है यार, कैसे बंदा मारूंगा इतने कम से ज्यादा FPS में। Bomb buddy out. Bomb push. Stim beacon down. My eyes are down. Reloading. Prepare for hellfire. Open up the sky. Grenade. Enemy spotted. Elbow. Satchel out. Molly. Satchel out. Reloading. Smoke's down. Where is it? अबे किल के लिए मत खेलो है ना, देख लो किधर किधर है। जेट मैं तेरे कांटेक्ट पे पिक करूंगा। एल्बो ब्रो एल्बो माँ की छूत भाई। साइफर बोलना एल्बो छोड़ दिया है भाई। One enemy remaining. Reloading. अरे खुद बोला किल के लिए मत खेलो, फिर बोल रहा है एल्बो भी देख। क्या है? Sorry. Only brought enough for me. क्या बोला, क्या सुनता है, मैंने जान दे छोड़। Need a drop. Can I get a drop? Need a drop. Thanks. मेरे पे अल्ट है, मुझे घुसने देना, पहले कोई जाके मरना मत। Deploying drone. Bomb buddy out. Grenade. Scanning ahead. There they are. 150 करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जा तो 100 तक रहा है यार, 100 तक चल रहा है। Spike down A. देखो मैं 140 पे लॉक कर रहा हूँ तो भी 140 पे क्यों जाता है।
वॉक इन चल, शावर वॉक इन चल, शावर वॉक चल। रुक रुक, थोड़ा लेट जाएंगे, बहुत लेट जाएंगे, 30 सेकंड पे जाएंगे। रुक रुक, मैं कब तक लेते हैं वहाँ पे। आज लेट कैसे बाहर गया था Last सर्विस player भाई। standing. Spike down. Match point. Act on my intel. Don't give them time to ये reposition. गेम भी हार जाऊंगा अब मैं। इसके बाद बहुत पार्टी कर रहा है। हाँ इसके बाद बहुत पार्टी करूंगा। आज मैच है, हाँ है। अरे यार वो उसने वेट किया यार, जेट इधर हाइड कर रहा था, जैसे ही मैं निकला ना उसके बाद उसने पीक करके मार दिया। अनलकी मर रहा हूँ अब, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। उसमें ऑफर है भाई, मैं कैसे क्लियर करूँ? ड्रोन में स्पॉट भी नहीं तो नहीं हुआ वो। Get him. Get out of my way. Grenade. Fully smoked. In beacon here. Who's next? Satchel out. अबे ये योरू से बॉडी ब्लॉक होती है क्या अपनी? योरू शॉट क्या? Enemy spotted A. Last player standing. भाई 10-5 था कि Defenders win. हर बार आ रही है, क्यों जा रहे हैं? सुबह से फेक कर रहा, 2 साइड। दिव्यम भाई मैं थक गया था इसलिए भाई मैं चला गया अभी। वार्म अप करने का क्या फ़ायदा? हाँ क्योंकि जेट पे वो नहीं था, क्या बोलते हैं, माइक नहीं था, कुछ भी कर रहे थे लोग। ब्रिमस्टोन भी बंदे नहीं मार पा रहा था। हाँ कमबैक बाइंड का डिफेंस है ना, उन पर सेंटिनल भी नहीं था। पता नहीं हमारे बंदे हम कैसे खेल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। ग्यारह 6 था उसको, 11-6 नहीं, 11-6 नहीं, 10-6। बाद में किल्स ही नहीं आए मेरे भाई। सेकंड हाफ में बहुत कम किल थे। सेकंड नहीं, इधर लेटर हाफ में 0-0-0-0-0-0-0। फक, ये एक अल्ट का किल। 8 राउंड में 1 किल है। अंदर रश करते हैं यार। मतलब इतना अनलकी भाई कि मैं ऑक्टागोन चला गया था कि मैं सेफ खेलूंगा, तो मैंने देखा जेट और ब्रिम दोनों सीटी क्लोज खड़े, तो मैं भी जाता हूँ बैकअप देने। साइफर ने एल्बो छोड़ दिया, बोला भी नहीं, कह रहा है तूने ही तो बोला सेफ खेलो। अरे पर बता तो दे कि मैं मेरी, तुझे दिख रहा है कि मेरी बॉडी एल्बो के सामने खड़ी है, तो बोलना भाई कि तू एल्बो से मरेगा। और बहुत एफपीएस ड्रॉप हो रहा है यार, मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा अब। ध्रुव भाई का तो ठीक हो गया, मेरा कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही 4 बंदे सामने आए तो ऐसा हिलने लगता है स्क्रीन। कोई ना रे, मेंटल पॉजिटिव करके आज नहीं तो कल जीतेगा। हाँ चिल, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। वापस डी रैंक हो गया, कर देंगे कल वापस। आओ 15 मिनट है तो डेथ मैच खेलता हूँ भैया। उधर Match found. मैंने करी कमी ना है तभी जली पड़ी बाबे लौंडे बड़ी बड़ी दागे लेती घड़ी है घुमा के गाने करी में दबा के बड़ी मेरी ची लगा रे विजनरी सी हैं बातें तभी तेरी छी निगाहें बम्बारी दम बिजली से भारी रंग तितली के भांति बम भोले के पुजारी राम खोले तो सुनामी हमको बोलो पिताजी धुन पे दिव्यम भाई, लेकिन कोई था नहीं ना अभी, कोई ऑनलाइन नहीं था। पैंथर दागे माइक पे है पीतल सुलगाओ रैपरों को बनाई इधर छाल पे है। अच्छा मैच, गदर मैच होगा भाई। अभी मौज पार्टी करेंगे सब लोग, कोई भी जाएगा नहीं। 14 में से 14 लोग नहीं रुकेंगे, जो जाएगा उसका डी रैंक होगा मेरे जैसे। सही है पैंथर भाई, पैंथर बहुत मस्त है।
चढ़ा देंगे पे पावर लगा देंगे रे हर जगह करा ये रैपर है 12 दिन के टिकने आगे मेरे 12 दिन के टाइम तो आना नहीं तेरा पानी से बड़ा देंगे सैया मेरा ने कर बुलाओ जी करते हालत ऐसी सोचोगे नहीं सैया मेरा ने कर बुलाओ जी देते दो गोली हम जैसे होम्योपैथी किंग बीच में बहुत चिल्लाता है बेंचोस आर्टिस्ट को परफॉर्म करने देना चोटी है बीच में बकबक करते रहता है बेंचोस बीच में गो कर रहा है बेंचोस नॉट है तू जाके पूछ मेरे बारे में मैं माली हूँ सवारी बीट पे मैं करूँ खूब तानाशाही लूज योरसेल्फ सवारी बजरंग बली रैपरों की लंका जला दी बम गोलाबारी हम तालिबानी तक पलट मांग बेट पानी चल बताया 75 सितंबर बवंडर बढ़ा नव मंडल से ऊंची मेरी कल्पना मदारी दूं मैं चौबीस बंदर बना बॉडी हो लौंडे बनने का बला है मेरे सर बला तू हमें सर बना है बने सरगना ये कहे सर फिरा मैं पुजारी धर्म का है ये जलजला मुझे तो बोलेगा मिटा बिठा चल जाके तेरी काम नहीं बीता दिन का ये हार्ट पर है मीठा सिर का इस चिराग की सलाह दिन का फिर हमसे ले बड़ा मिर्चा मैं न कुल्हड़ सीधे की तेजी है कैटलिसा होगा करूंगा ऐसा कि किसी ने नहीं होगा बजू मैं बीटों पे ऐसे कि लगेगा जैसे मैं शराबी हो गया खरा नहीं होता इन लौंडों की ईगो के सिवा कुछ खरा नहीं जिवेन भाई हाँ देखते हैं कल यार गारंटी नहीं दे सकता पर ऐड कर लो आप सब हालत ऐसी सोचोगे नहीं सैया बिराने कर दो लौंडो को जी देते दो गोली हम जैसे हो सैया बिराने कर दो लौंडो को जी कर देते हालत ऐसी सोचोगे नहीं सैया बिराने कर दो लौंडो को जी देते दो गोली हम Got 3. क्या फ्लिक मारा सोवा को मैंने टन टन No more soap. लाइक शॉट लगा दो इसको भाई वो अल्फा रोमियो के ड्राइवर थे दोनों हाँ ना भाई मेरा क्वार्टर हो गया ना वेल्ट्री बोटास नाम है एक का जलता है तुम Valtteri Bottas and Joe Granu. Finished. ओ भाई बहुत गंदा ज़्यादा कूल बंदा था मैं
Hug this. Hug this. Kills remaining. Bye. Got 3. Here. Good. Hey. How is this possible? Impossible. 5 kills remaining. Remaining. Final test. 102 यार. जलता है तू मुझसे. चलो भाई जरा देखें क्या बातें चल रही उधर डेस्क पे. कौन कह रहे क्यों बैठ ये लोग एने वालों को क्यों बिठाते हैं. अच्छा पर इंग्लिश भी अच्छी होती है और एनालाइज तो अच्छा कर लेता है वैसे. The result of what ended up happening. I'm glad you guys mentioned Aspas as well because Cutie. he's finally in form again, and he's going up against a player on the opposite side, Sean, who is also really in form. We're gonna get something versus Aspas. I am so excited. I am so excited because I've seen Aspas do some insanely creative things with his jet util. It's like he has 4 dashes in a round, is what I always say. His updrafts act as dashes when he's picking. He won't pop his dash until he's used his cloudburst and his updraft, typically. Something on the other hand, which you're watching on screen, he is just a mechanical goat. बहुत सही बात बोली है इसने. आसपास का यूटिल यूजेज इतना अच्छा है ना. जलता है मुझसे लेकिन क्या करो इसका वेजी भाई है अपना. एक तो दूसरा मैच देखेंगे एनालाइज में मजा आएगा. अब तो पूरा मैच देखेंगे. यस मैं चाहता हूँ तीनों मैप हो यार और होंगे तीनों मैप मुझे लग रहा है. चलो आया वॉशरूम जाके थर्ड भी निकाल देता हूँ. Out of him. That was that regional performance where he just pops on the Reyna and he just goes ballistic and there's no stopping him. And I think that might be what's needed for him to settle into some of these games. He's spoken a little bit about it. He was a bit nervous entering this tournament, especially on stage. But when you talk to him, he's super calm. Reyna is one of those agents where it takes all the decisions. भी कर ही लो. हाँ बस वही कर रहा हूँ. Reacting on the कोई जाना नहीं. 10 लोग देख रहे हैं ना. सब यहीं रुकेंगे. I guess Jet, you have to smoke dash into areas. You have to plan your updraft. You have to determine what the sentinel util is that you're going into. With Reyna and watching him just aim, it's a treat. You just brain off in it. Yeah, I mean he is something, all right. Fun garage है ना. हाँ fun garage. My favorite talk show featuring Mimi. Welcome back to a short discussion. I'm about to be joined here by my मुझे अच्छी लगती है बंदे. बहुत मस्त है. फनी भी है थोड़ी. मस्त है. लाइक तब तक सब. Welcome to the show. Thank you so much. Take this for me, please, sir.
I wanted to start off by finding my chair and sitting in it. And second of all, by asking you. Yesterday, or the last time you guys played, you said in the opening interview that you wanted to be remembered as the first Indonesian player to win a global VCT event. What would that mean for the people at home supporting you if you could achieve that? I mean, it would be nice for me and the people in my country, because like I don't think like anyone ever do that before, so I think it will be great and nice actually. Yeah, it would be. And you've spent a lot of time in LA already, and if you guys keep on winning, you'll continue to do so. What do you miss most about home right now? I think probably my bedroom, I guess, because I don't know, I just like my room. Yep. Yeah, that makes a lot of sense. Mindfree, thank you so much. Best luck in your game today. Back to you. So relatable as always. But I want to talk about the style mismatch in this particular head-to-head of Loud versus PaperX, because we do have a leaderboard here when it comes to how fast or slow each team is on their plants. And if you guys take a look at this right now, it's absolutely insanely interesting because Sean, PaperX are the fastest team to plant, and Loud are the slowest. Yeah, you cooked up this leaderboard here, so this is so sick to see, because the stylistic clash between these two teams that we're going to see today is going to be so interesting to see what style of Valorant comes out on top. Is it clear? You know, are we going to get a 2-0? Or is this going to go 3 maps because both teams clearly know how to play certain maps better than the other? Yeah, I think the maddening thing about playing against a team like DRX is it's not a surprise, right? Like, you know what you're going to get. You know that it's going to be fast. You know that it's going to be in your face. And they're still getting the best of these world-class teams, right? So when you know what's coming, right, you can think all day about how you want to plan against it and how you want to set up things to slow it down. If you get hit in the mouth like that and it doesn't matter, that's got to be one of the most frustrating things as a coach, as a staff, to have to deal with. Yeah, and Doug, they're not just fast on their attacks, they're super successful as well. If you, I mean, we have this lower third here. They win an enormous amount of their attacks by round. Yeah, I mean, they're just they're aggressive, they're decisive, they're consistent with it. And I don't remember who it was. I want to say it was Devi in one of the B-roll segments where he just said, we kind of play like idiots. And it works. And all of them do. And if they can continue to put up success like that, yeah, man, it's not broken. Keep doing it. Yeah, and speaking of PaperX and how successful they've been, Sean, let's take a look at your shell illustrator. Oh, thank you. I'm calling it now. So about how successful this is about look. 1 million pieces of util happening in 1 second. So you're going to see a cascade coming to top mid. You also notice here that this Viper wall cuts across top mid and A main twice. The Raze gonna paint shell into tiles off the bat. So now we play it here. The Sky Flash goes in, Lear to get out mid, Lear to clear tiles. Look where look where Devi's dogging from, in tiles as a defender. They get another kill, they back off. There's a cove in mid to protect from any kind of darts. There's a second cascade that comes in, Jing comes off of Cat, the High Tide comes in for them to back off, and now this Yinsu is 2 rounds later. This is after that insane something ace. They fake the tiles aggression now. So this is them putting the fear of God in you and then not doing that exact play when you expect it. Something immediately rotates over towards B. There's a one-way orb waiting in case the other team were to rush. Something I'm gonna draw attention to right now is this cove in the B site that Forsaken throws preemptively. It would protect him from any dart scans coming into B, which is insane. I've never even seen that before. He gets close, Devi flashes for him. They get a free kill here in main. And then right off of this, you can see Devi's ready to dog Forsaken in, but there's a counter drone coming. So they cancel that at that moment. Forsaken falls into the site, and watch this High Tide that's about to cut across the entire map. Jing is also simultaneously pushing mid. What an insane couple of rounds. Well, and I think I want to go back to the point that you made about the Cove, because I think that actually matches up really nicely against their series against Loud. Loud were the innovators when it came to compositions. They were the first to push Harbor Viper. They were the first to do things like that. And now it's PaperX who are doing it, because when was the last time you saw Arena Harbor on Ascent? I mean, yeah, both teams, they are on great form, but I want to see what the fans 10 से 8 said. बचे हैं क्योंकि 8 लोग देखना चाहते हैं क्या मैच?
आओ देखेंगे मैच यार अच्छे से। Which of today's 4 teams has the best shot at making it to a grand final? And everyone pretty much, yes, give it up, guys. DRX, let's go एशियन पैसिफिक भाई, अपन फुल सपोर्ट चैट में DRX PRX को जे कोई भी लाउड सपोर्ट हो तो भाई अपनी अलग इसमें देखो। I think it makes sense that they went as hard as they did. I'm surprised by some of the others. DRX and EG getting no love. Honestly, I'm surprised EG get no love. I'm not surprised, and I was so confident that this was going to be the result. I even what's the word? Preemptively, there we go. I preemptively made my drawing because I knew that Paper Race were probably going to win that poll. I made my drawing too, Jens. Well, okay. That's I feel like that deserved a zoom in. And Doug, what about you? Doug, I kind of forgot, so I'm just gonna take the sign. Okay. Well, I came up with myself. I like it. But there's a lot at stake here because today everyone is fighting for a spot in the top 4 and our upper bracket final. It all comes down to Loud versus PaperX, DRX versus Evil Geniuses. Day 12 of Valorant Champions starts right here and right now. भाई मज़ा आ गया वैलो खेल के, ढंग के टीममेट आए थे, बस 2 बेकार थे, 3 सही थे। तुम लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो जरा चैट में बताओ, तुम मुझे कौन कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। just want to make sure that in Valorant we can achieve those trophies, and we make sure that Europe, Asia, China, anyone can lose to NA. DRX. That was a clean 202. Anyone remember the maps? We had Fracture. I 1v4 on Fracture. Next round, boys. What are we doing? 이거 또 도쿄에서 또 그런 화이팅하는 스몰을 당했잖아. 우리끼리 서로 화이팅하고. वेल सपोर्ट, अच्छा गेम देखो फिर PSF, मज़ा आएगा आज। Tokyo, but they're not the same team as Tokyo. 일단 지난번보다 저희는 훨씬 세졌다고 생각하고, 전 세계적으로 우리가 제일 잘하는 팀은 아닐 수 있지만 제일 열심히 하는 팀이다라고 저는 생각하고 있었습니다. 리무브 라उ드 서포트 रहेगा? 지금부터 이제 인정받아가는 단계라고 생각해요. DRX, we're sending you back to lowers like we did in Tokyo. So good luck. You're gonna need it. 만약에 우리가 지면 트래시 토큰 하지 말아줘. You already know I got that dogma in me. When I play in PaperX, I feel like I play with my friends, with like my family. After joining PaperX, I always laughing on matches, always take fun, enjoy to play Valorant. It's like team, they help me, I help them back, you know. Eu acho que o eu de agora é bem diferente do ano passado, porque MYM के लिए भी बहुत सपने देखे थे यार मैंने, क्या सोचता था पीसी मिल जाएगा, क्योंकि पीसी के लिए मैंने घर वालों ने अग्री कर दिया था मुझे एक बारी 2018 में। यार फिर तो कॉम्पी खेलूंगा CSGO में। मेरी मम्मी मारी 1 बजे सोना पड़ेगा। चलो अब घर के रेस्ट्रिक्शन पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, जब तक हो तब तक देख लो, कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा खेलते यार हम। I'll show you why my jet is different. Oh भाई। Show from PaperX and Loud. sou grande amigo do Jing e queria muito jogar contra vocês. Finalmente, espero que a gente tenha uma boa partida. ये तो मुझे अच्छा लग गया, मैं एक और है वो भी गर्म करके लेके आता हूँ। मैं फिर तो देख के जाएंगे। बेचारों का कोई IGL ही नहीं, PRX अकेला आया है कोच।
इनका अभी डेजिग्नेटेड आईजीएल है नहीं कोई PRX का एक्चुअल में, तो कोई भी प्लेयर आ जाता था पहले, इस बार कोई नहीं आया। रेंज है क्या इसमें? अरे रिमूव PSF ये टॉप लेवल का टूर्नामेंट है, रेंज का आएगा इसमें। अच्छा लोटस नहीं देखना है मेरे को यार, बोरिंग लगता है लोटस। Ascent, so map number 3 will be Pearl, Loud, side on Pearl. Defense. Defense, okay, let's run back through this. First set of bans, we have Loud with Fracture, PRX with Haven. Map number 1 is Lotus with PRX on attack. Map number 2 is Split with Loud on attack. Next set of bans are Bind and Ascent. Map number 3 Decider is Pearl with Loud on defense. Good? Alright, good luck to you both. यहाँ बिराने कर दे लॉन्डो को जी। टेंस क्या है फिर? वो तो हेड मारता है, वो क्या मारते हैं? टेंस क्यों है अटैकिंग? लेकिन अब समझ के क्या करूंगा, वापस आएगा यार 3-4 महीने बाद। यार लोग पूल में से 2 मैप हटा रहे हैं, तो आ तो एक ही रहा है, तो मतलब मैप पूल कम हो गया है, तो 2 मैप क्यों हटा रहे हैं? I got goosebumps already into it. I mean, this is such a good matchup, and Loud coming right in and picking Lotus, a map that can slow down the pace and really put it to PRX. You know, PRX has been known to run double duelist on this when something was playing, but we haven't seen them play Lotus in a really long time. Really long time. They could bust out a crazy comp right now. And I do think because of that, because we know what Loud can do on Lotus, and because we haven't seen it on paper in a really long time, I really think that Loud have to win this first match. Because as you go down the list, as you go towards Split and then Pearl, it doesn't get any better for you, dog. Like, PaperX, you know what kind of commodity they are on those maps. Yeah, I think PaperX picking Split, though, that's another map where the teams might actually have similar comps. I know Lab has a lot of experience playing against the double duelist on Split in JCT Americas. Here at Champions, they've opted to run a breach. Didn't really work out for them against DRX. But then, like you said, this is a map historically both the teams have been very successful on. But after Harbor Viper, I don't think I've seen that same style at a Loud anymore. And we haven't seen go back to that top in a long time. It's interesting because we saw glimpses of it earlier in the tournament where they did go back to the Harbor Viper, and we go, yes, oh my goodness, it makes sense. They've gone back to what's good. But me and PaperX, they look unbeatable there. Yeah, they do. They look crazy good on Pearl right now. Yeah, and bringing it back to Lotus for the first map, of course, you guys both mentioned we haven't seen it from PaperX since Tokyo, and of course, something did not attend that tournament. Right. They were running the Gecko, of course, with CGRS in the roster as well. So now with something back into this, what are you guys expecting? Is a Jet, anything like that coming back out? I think so. Based on how they kept their same comp on Ascent with the Harbor and the Reyna, I think I'm expecting here the Jet Raze pick coming out of PaperX. And I don't know if Loud has much experience playing double duelist on Lotus. Like, this is it's rare in Americas to have a double duelist on Lotus. Yeah, I think too, to even piggyback off of that a little bit more, the fact that something just continues to get more confident. I think back on that segment that we saw right before going into the walkouts, he's going to show Aspas why his Jet is different. And PaperX are just like the perfect combination of really good vibes, but also just a little hint of like, yeah, but I'm going to destroy you at the same time. I mean, let's not forget though, Loud, they're coming into this series on Lotus after beating Fnatic, Sean, who did not lose on Lotus for the longest time. And of course, it wasn't just a beating, it was a domination, a 13-6. They destroyed them. I mean, there was no Gecko, but that was a thrashing. I've never seen a team put it to them like that, and yet. Raze, Fade, Viper, KJ Woman, thematic comp. Astra Woman, double controller, no. Slow this down. Like, what do they have in भाई गूदा तो है भाई PaperX में. लोटस खेल रहे बिना सेंटिनल के वाइपर भी नहीं लिया एस्ट्रा वुमन से. Killjoy will operate towards the C side. You know, there'll be Killjoy util on B as well. But Loud does such a good job of controlling long A, controlling Rubble with the Raze, the Fade, the Omen TPs. Right. They control that area really well. But again,
The double duelist with an Astra Omen combination for controllers, this is very, very rare, and they're starting on attack where they can set the pace. Yeah, and it's a Forsaken Astra, which we haven't seen in a long time. Only played it once before, so I am very, very excited. देख रहे हो Forsaken की versatility देख रहे हो? इस मैप पे साइफर खेलता था, एस्ट्रा खेल रहा है अभी. 4 महीने पहले ये बंदा जेट खेलता था, अभी एस्ट्रा खेल रहा है. The semis matchup, man, what a match it's going to be. I mean, Loud completing that revenge storyline against Fnatic, knocking them into the lowers, and now they've set themselves up for this fantastic match. It's going to be high-octane gameplay, I'm sure, versus PaperX. Of course it is, and also our first opportunity to get to witness this matchup. They've been to championship before, and they haven't clashed. Who knows how this match is going to go? PaperX yet to drop a map, but Loud have taken down Fnatic. Which team do you give the edge to here? I think it's very tough to call. मुझे लग रहा है पहला Loud जीतेगी यार. Come from PaperX, but Loud here with a very recently excellent performance, and going into Kawanzin and Aspas is dangerous. Instantly traded, bringing him down there. Ball was offloaded. Door starting to rotate, but a smoke in their face. Utility just being exchanged. Only the 1-for-1. Forsaken's caught his timing. Les has no idea to jump spot as well. He's not going to be ready for it. Forsaken pouncing. Love that from Forsaken. He gets aggressive whether he's playing the Cypher or the Astra in this composition. And punishes Les. That jump spot, tons of pros do it. But it's not a great one. Something has fallen though on the Jet lurk. So it's a 3v3 still. Many opportunities. But there goes the IGL, the team captain. Kawazin left to try and salvage it. We brought down 2 years. It's 1v2. Damage done to Mind Freak. But Forsaken's reposition is excellent. How do you really be ready for this one? Smoke dropping away. It's the right click and the adjustment. Pissed around here for PaperX. And expectations a little bit all over the place, you know, in terms of wondering where this map might be going, but already kind of averting it. Loud was so good with the pistol rounds in their previous series against Fnatic. It was one of the things that set them ahead of that team. Absolutely. They were winning pistols, winning bonuses, getting up to spots where they had momentum, and the ult advantages heading into the gun rounds too. And it was still a very tough series. So PaperX is starting off well like this. Already good signs. ठीक है PSM bye, good night. There. With his Astra, he's going to be able to put down smokes and creep up alongside the door and punish less if he's intent on jiggle peeking that angle. It's a very common jiggle peek in the meta right now, but it doesn't do you too much. Natural movement from Jing. Straight into the side though, clearing through into the back a bit. Big stack though from Loud. They're looking to try and fight over this one despite with the pistols themselves. I like the cancel call, but they've inserted Jing. Bloody hell, he's all the way deep into the man! Donated the weapon, but not before receiving 2. Space granted and gained now, over towards B. Plant will start to come online. Less attempting to punish there, but will fall. Tui's pretty far out of the action with this donated judge. Doesn't look like there's going to be too much he's able to do. I'm sure PaperX would like it back though. Forsaken taking a duel against Aspas with only pistols in hand. And Forsaken gets the better end of it. One of the things that impressed me the most, actually, watching that Loud Fnatic series, Brent, was how good the form looked from Loud. It was missing during Tokyo. It was missing, actually, during their opening match against DRX. But the Loud players were on fire during the game where they took down our back-to-back winners of trophies. Tui's getting cheeky with it. Yeah, a bit of a tap. I mean, no one's near. He's just hoping that they run in to check it, throw some weapons away, but PaperX were far away from it. But my point about Loud's form, PaperX are a bit different to Fnatic. The quality of players of our top 6 teams, undeniable across the board, all stacked rosters. But PaperX are also super happy to take fights against you. Fnatic said in their press conference they ended up playing a little scared against Loud, and Loud wanted to take the fight to Fnatic, wanted to take those duels. Could you think of a team more happy to take their ones than PaperX? If this game ends up diverting off the strategy tree, we could see some phenomenal individual clashes. And here's a real form check. Early fight by something, but has to dash away. Disengaging away, conceding section of A.
And already Jing building up deep to his showstopper. 2 orbs away. In theory, could get those online, but Loud have control of rubble, so it'll be tough. They're leaving something posted, but Loud, look at this. It's a double face. What a lovely play. Really nice discipline. Excellent reclear through. पेड और रेज एकदम चिपक के खेल रहे हैं पूरा गेम. अभी भी देखो दोनों साथ में ही पीछे हैं, पूरा देर साथ में खेल रहे हैं. पहले ए पुश किया दोनों ने साथ में, बी पुश किया दोनों ने साथ में, इधर आए साथ में, वापस जा रहे साथ में, पूरी देर साथ में भाई. एक इनिशिएटर एक डोलर साथ में. आसपास का नेट वेट सब बचा है. आ गया इधर वापस, कंटिन्यू करने देगा. Waiting. Aspas no need to try and deny this plan once still Jing in through the back using the Ashton util as well just to set himself onto the close angle. Plant going down. Jing was hunting for something. Slight kill there. An opportunity granted, presented. Mindfreak low, not enough for the kill. Close to the corner still. Damage definitely being done, but a player advantage all on the side of Loud here. As long as they play this one together. Reload कर ले चाचा. They should be able to sail through. No problems. And Forsaken's used his Astro utility now, trying to take a duel over towards stairs. It looked a little labored, but he got Sadak. Yep. Close down to the corner. गया. They are cleaning up. A few of these still Mindfreak. लो है. ओ दोनों लो थे यार. Not in time for it. Loud survivor. 2 players left. Still excellent damage, Ben, on the bonus round. Yes, it's not a conversion from PaperX, but taking 3 players down, knocking armor from both less than 2Es and planting the spike. ये था स्कोर. एडवर्ड गेमिंग और बिली का हेवन कौन. तीनों मैप, पहला मैप क्लोज में था, बाकी स्प्लिट पे. ओह 31 किल भाई वाइजली को. भाई इनका फिक्स है, या तो नोबडी मारेगा या कांग मारेगा बस. There are so many ultimates close to coming up. So Loud are going to fight with their Raze Fade combination over towards Mound. It looks like there's a paranoia setup potential here too from 2Es. Now to clear. Broken. No reveal. You see teams running this shotgun reveal नहीं the करनी B थी orb उसको. setup fairly often when the attackers are close to getting that ult online because it can fight over the B orb and the C orb at the same time. But Forsaken's taken space on A. And that way, you know, Jing is going to be able to move back over, get his showstopper. You have something posted up on stairs. PaperX almost immediately found the gap here within the first 30 seconds of the round. Pixel angle by Sadak. It's all about reaction times. Here's the orb. Oh, they're close now. Door opened up wide as well. Where do the stars get laid down? Drop down. No smoke. Something's still holding this angle for them, but it's being contained by Loud. Look, not really stepping over the skirmish lines for now. And Aspas chose not to push out of B and get his ult online. He has nade. Oh, the vulnerable doesn't quite catch though. Yeah. Potentially would have been a kill there, but and there was no smoke over towards heaven either, and Device just allowed to bunny hop around the corner. Missing the combo. Still, Mindfreak holding towards the back of the site now, dodging that horn, but it is being watched for. No, not quite. Sadak needed to win that fight. Mindfreak now towards the back. Fox in the pen. It's a 3v5. Good enough. Bring him down there towards the back side of things. Aspas. आसपास की अल्ट आ गई. ओह रेस टिप कर दिया भाई. बोला था नहीं बोला था मैंने कि ऑफ अभी काम आएगी, क्या भूल गया था बोलना. ऑफ साइड चलेगा उसके बाद ऑफ बहुत काम आएगी बोला लगा ही था. टीटी होल्ड हो ही जाता ऑफ. Being able to pick up 2 in this position. It is brutal that Sadak was watching that while still losing the duel. And then the showstopper v showstopper. Jing comes out on top with a lovely dodge over the top to hammer it home. PaperX now in full control of what's going on. Their economy booming, Loud's hurt. After a good bonus from PaperX does its damage. Whoa, something is deep. He's been surrounded now, needs some help to try and bail him out. Pushing him, yes, the weaponry is weak, but it's still going to do damage and it's still going to bring him down. Tasty prize earned. ऑफ भी गई, वो रिकवर भी नहीं कर सकते ऑफ. Straight through into C, close to the corner. Inside the smokes, this is more than dangerous. Sadak, an absolute menace. Takes out 2 of them. What are PaperX doing trying to sneak into the smoke? डिफेंस में ओपी करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि डिफेंस में करते हैं, बट without having too much damage taken.
फिर आपको ऑप के लिए फिर स्लो खेलना पड़ता है कि ऑप फिक्स ले कहीं पे. Yeah. That one. Forsaken wins his fight. Well, there's one major threat taken down, and Sadak's only on 12 HP. This is still doable for ये भाग जा भाई, ये भाग जा. अच्छा वो बीच में खड़ा है टूल्स. Committing the cosmic divide now, throwing something new into the mix. Definitely obfuscating it. And love this smoke as well. A lot of players started using this just on the corner. Look how much Sadak's vision is obscured, not just by the ultimate. 30 seconds left. Tuck to the corner though, there's a weapon earned. लग रहा है क्लच करेगा अभी. He would have to hit the headshot. All fading. Here it is. Comes down to this fight. It's about to be taken. Sadak's tucked to the corner. Star, time. Planning, not in the usual spot. Can't be spammed. Sadak's just walking forward. On 12 HP. Drops down, fakes it with the pistol. Making noise, making them think that he could have dropped down, but still holding his ground. Sadak waiting for his teammate. Playing together with him and 2years, but when he's this low, brought down to a crawl. 2 years, spotted with the reload. Excellent reposition, can hear it surely with the footsteps, still needs to land it. Here's the tap as well. It's all fake, and 2 years brings home the bacon. That's a round win for Loud. Finger थी यार. Seconds to win there. He had the idea of where 2years was, he just couldn't land the shot towards the end. And that's a gift, honestly. Finger थी If यार. you think back before we were in that 1vx scenario, Loud have won the MasterCard Thrifty by PaperX making this play. What are they doing walking into the smoke there towards Waterfall instead of clearing out the site? They've already lost a player over towards Rubble. They have a nice reaction into C. Why on earth would you take another risk when you're down a player in that kind of spot against the eco round? Yeah, what should have been a sizable lead and advantage just cemented. Loud right back in it. And what is this buy from PaperX? I mean, they have got odds and ends all over the place. It's weird. Nice for something, but Jing has been forcing for the judge most of the time. They are really running it down now. Out towards C. Seekers unleashed. Over the top of the updraft, making sure that they clear most of it. Shorty dealing with Timmy. TP engaged. This is ridiculous. हद से ज़्यादा भी एग्रेशन नहीं भाई, क्या कर दिया इसने अल्ट भी. प्लांटी मत करो अब तो. And the lockdown has just scared them all off. At least forced out, but Forsaken can't win his duel. Aspas was watching for it. The rotation and pivot into C. A tap at the door. Trying to hide it once more, but if you're going to be running all the way to A, पहले ऊपर ओवररेटेड और यूजर्स लगती थी. ओवररेटेड कैसे हो सकती है स्नाइपर यार? ओवर हाइड कह सकते हो कि सबको. Beautiful with the reset. Satral's over the top in his face. Jing! Oh, giving him a taste of it. Southeast Asian ranked gameplay. Right at you on the big stage. Less quarter, I think less quarter pixel there for sure. But they are still holding for this one here. They can surely see the jiggle. 9 bullets left out to the side. 2 years shuts it right down. 1v4 for Divide. An impossibility. 30 seconds. Right over his head though. Prowler missed it. अरे nice shot. Less का तो aim करेगी ये भाई. थ्रो हो रहा है. चलो ऐसे खेलते हैं यार. And here we see the tactical timeout called. I think that makes perfect sense. Alex might be slamming his desk a little bit coming into this one. You know, I'm sure the communication will be calm, but with extraordinary force to keep his emotions under wraps. That's 2 rounds in a row there where PaperX have made some very questionable decisions to allow Loud back into this at 3 apiece. They're still moving quickly around the map. You know, they're still making decisions. They're still finding a couple of openings. But they're certainly getting over-aggressive in some of these spots as well and taking a few too many risks. Yeah. I still think back to that anti-eco, Brent. You have something with this attack operator disrespecting the A control, ends up going down with his... and then they go into C and try and walk into a smoke. It's just bizarre gameplay, maybe getting caught up in the moment. Yeah, maybe a little bit too much W gaming. It is okay to sometimes let go of the W. That's what they won't tell you. It's not in the rulebook, not for PaperX though. What a position this has put Loud in. They haven't really had to use many ultimates. There was a lockdown invested in the prior to shove PaperX away from C. But now you see them. Aspas set up with his second showstopper. Go Loud, go something. And then Sadak, Cowanzi with ultimates that are excellent too. PaperX might be on the weaker buy here, but you know, you're talking of those ultimates. Aspas is right here, ready and waiting. As soon as he hears the first signs of life, he might just send it and go for this one here. Pings from
PaperX looking to see if they can hide the cross here with using a util. Yeah, just a smoked across here along with the flash as well. Satchel up into the high ground position. Rocket let loose, sent wide though. No kills found there. Jing, Prowler does connect. Aspas. अरे तब नाइस उतना वेव किया उसने दूसरा बंदा पीक कर लो ना उसके साथ यार. Aspas hard committed to that one, and Kamanzin was caught trying to help him. Stuck between a rock and a hard place. Here we go. Damage still being done though. They're just poking themselves wide out into the open. Not using Something गाली खाएगा मेरे से. Grouped up towards tree. Sight gained. Too many rifles salvaged though. Something's in a bit of a passive position as well. He's the player with the rifle that could make this round a reality. Loud have already cleared out, at least towards rubble here. Diligence being shown, so this is one post-plan position that they know is going to be clear. There isn't very much utility for the retake though. Just one smoke, that blocks off the players in tree. Trailblazer spots it. Jing still holding close here. ये राउंड तो नहीं जीतती भाई. Loud. Jumping shot right through the box. It's a 2v2. Has the nade, but he's tight close to the corner here. There needs to be coverage. It's not there. Devi now left to do so much more. Cannot hit the transfer. Oh, and he's only just got it. I think he's got milliseconds left on this defuse. बोला ना नहीं जीतती भाई अब. Let's go. जिनको एक साइड कमिट नहीं करना था, शॉट भी नहीं दी तो कर ही देता कमिट यार. For technically a Red Bull clutch from the grave, as PaperX with absolutely nothing in this round. Oh, managed somehow to delay enough time. That's insane. That is insane. मस्त है सड़क बहुत फनी है भाई. चिल करके खेलता है एकदम. Complete reflection on the other side with IGL है भाई जबकि इतना चिल खेलता है भाई. No, look at this. Offloading the utility. Fight taken. The bullets are rattled, and the casualty is mine-free. But with the Astra still alive here, there are chances for Forsaken to still call this round and get them into sights. Aspas and Kawanzin have been re-clearing B with this high-low setup fairly frequently, and here it is again. Flash the center, the missile dodged! Loud! That's magnificent! Aspas and Kawanzin. You can see the idea from PaperX, but now the spike's just been dropped straight through into the choke point. Devi. Too much for him to overcome. This setup over towards B is immaculate. But if PaperX start getting the read that this is happening, think about it. At the start of the round, you're getting raised phage utility over towards A rubble, and then you're seeing them on B, barely 10 seconds later. So the more that PaperX start getting a read here, they might be able to disrespect and re-clear through A, just assuming that Aspas and Kawanzin have both rotated to B. Lotus is going to be a map about how you fight over rubble and how you open up the rounds, basically. How you manipulate the defender rotations. Ooh, Alex is not happy about that one. 4 apiece, though. PaperX is still... मतलब ऐसा लग रहा है कि लाउड अच्छा खेल रही है पर स्कोर फिर भी 4 ऑल ही है भाई. इतना बुरा नहीं खेल रहे हो. 1v1 हारे हैं एक दो बारी तो. 4 सेकंड वाला क्लच हो जाना चाहिए था यार. वो 2 ही साला भर गया उससे. फिंगर से वो. भाई सड़क का क्या चल रहा है भाई. ये गेम तो मार ही जा. हाँ ये. Okay, kill found, rifle gained, a bit of an upgrade. Mindfreak, one more TP to escape. There's no more shots going his way. It has led Loud to a bit of a scramble. Look at the positioning of the players on the minimap, all over the place. Yeah, the paranoia is split apart. Aspas and Kawanzin, who've been trying to play a buddy system so far on the defense. Forsaken continues to prod over towards C, but it hasn't pulled anybody other than less. Certainly feels like it could be a B hit with a bit of pressure towards C and the door opening, but Loud have read this perfectly. 3 players ready to defend A, and that's where this is hit. The positioning of Kawanzin here is fantastic. If he chooses to commit the nightfall, Seekers. ये राउंड गया ना अगर PRX का बहुत भारी पड़ेगा यार. 2 अल्ट यूज करिए. Spotting around the corner, Les. He's gonna hold it and he will. Rip it up to shreds. No more pass the choke point. Nice round Loud यार. Nice round. Huge ultimates used in this round. Forsaken with 5 health and 15 seconds. Has no hope. Has no hope.
पैडाक ने अल्ट भी नहीं किया था, अल्ट करने वाला था, क्वाजिन ने अल्ट की है उसकी, सही है, बढ़िया खेले भाई। लेस की भी अल्ट है, पैडाक की भी अल्ट है। Sarak already has the read. Aspas and Cowanzine are already positioned there, ready to collect. Be that with a high-low setup towards B, or a Nightfall pushing them into less over here towards the breakable door. It's all been excellent from Loud, barring, you know, the loss. That's so fucking stupid. ऐसा बोला उसने। सल्यूट रहेगा क्या शुभ भाई? मेरी तरफ से भी आपको सल्यूट रहेगा। PaperX and EDG did this all the time as well, just clashing, almost team fighting. Just feels like it ends almost in a coin flip here. Using the util again, the snake bite laying towards the back here, something that all just blinded open as well, dodging all the util. Everything's being thrown at it. It's an absolute skirmish. 2v3 1 HP SP. नेड तो कर ले दोस्त। Finally, pause in the play, at least for the round for now. But the advantage still for Loud. And these pauses are where Loud have been going back to re-explore towards B and look for the lurker and see. अपने top 3 favorite player तो बता। So now PaperX look like they're getting the read just a little. See by the way that Jing's taking this space, he expects them to be there. Almost lined up. 1 HP still surviving. सोच रहा हूँ वैसे मैं फेवरेट प्लेयर्स के हिसाब से सोचता नहीं हूँ। अभी ये टीम ये मैच में पूछेगा तो लाउड का ये प्लेयर अच्छा लगता है, क्वाजिन अच्छा लगता है मुझे, और सेकंड मेरे को अच्छा लगता है बहुत। और वैसे तो फनाटिक फैन हूँ बहुत पहले से, मतलब अभी से नहीं। तो अरे नहीं, भाई जिंग ने क्या कर दिया ये राउंड, भाई क्या कर दिया ये राउंड, क्या कर दिया भाई जिंग ने, क्या कर दिया भाई। अच्छा चल, कौन पसंद नहीं, जिनको सब पसंद करते हैं, पूरा नॉर्थ अमेरिका भाई। टेन ज्वेन श्राउड आउट ये सब फर्जी। चलो श्राउड तो अभी प्रो प्लेयर नहीं भाई, वो 1 HP पे 3 बंदे मार गया। और भाई क्या इंस्टेंट ट्रेड लिया भाई, अगर वो 1 सेकंड भी रुक जाता ना लास्ट वाले किल पे, राउंड गया था भाई। जिंग इज क्रेजी। यूरोपियन मैं तो भाई काउंटर स्ट्राइक में भी यूज सपोर्टर, इधर भी यूज सपोर्टर। Flip towards the end there. They're allowing Loud to take rubber control at the start here, and PaperX are pushing more towards C. They haven't actually put that much pressure on less throughout this map so far. And here it is. I'll slow it down. वरना वैसे क्रॉनिकल्स बहुत अच्छा लगता है, फनाटिक की पूरी टीम अच्छी है। कैरेट 1 जिंग 0, लेट्स गो। सेम है क्या तू भी? गेमर बॉय जिंग ने क्या कर दिया भाई। Because Cowanzine's prowlers and the spam from Tui's was pushing back. Where do you take it from here if you are PaperX? I mean, this pit is in your face. Do you choose to just contact through? वैसे ही पिट उतना यूजफुल है नहीं। Control anywhere else. 50 seconds left in the round. That can quickly dwindle. It seems like the comm here is for Forsaken to try and open. नहीं निकलेगा ये राउंड। Knows that the players have been jump peeking that, and Tui's finds it this time. ये राउंड नहीं निकलेगा। He's got info, but he hasn't actually. लाउड ले जाएगी ये राउंड। Cowanzine still spotting from the door. Mind Freak on the look. They are aware, bro. They are aware of it. Nice one. चलो कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ 3 बंदे ए पे जा रहे हैं, ये लोग बी पिवट कर रहे हैं। सही है सही है सही है, बी पे पॉसिबिलिटी है प्लांट की। रिवील पे कोई निपटाना दे ये। हाँ ये रिवील पे निपटाने का सोच रहा है ये। ए नहीं यार, क्वाजिन बहुत गंदा प्लेयर है भाई, ये बहुत मारता है यार, पूरा राउंड निपटा देता है भाई ये अकेला। तो ओपन में खड़ा है गया राउंड। चलो क्वाजिन भाई बहुत बहुत क्रूशियल खेलता है भाई वो बंदा यार। The return of Cowanzine to the big stage has been a delight. One of the players that had the most impact in that solo initiator meta that we saw when Loud were playing up at their best. एक कमेंटेटर मेरी कॉपी मत कर, चुप। I mean the slump essentially for Loud, but I've been समथिंग क्या कर रहा था मेरे को समझ नहीं आया भाई। ये देखो भाई 4 बंदे मार गया, मां कसम भाई। ओह भाई दिस इज लिटरली मी व्हेन आई प्ले ऑन मुंबई सर्वर। इंडियन वाला सीन लगाओ डेड हो गया क्या? शुभंकर हाँ, जब से फ्रेंचाइजी सिस्टम आया ना मैंने सब देखना बंद कर दिया, सिर्फ यही देखता हूँ अब।
फ्रेंचाइजी से पहले पूरा इंडियन सीन फॉलो करता था, पर जब से फ्रेंचाइजी आया है तब से पूरा बंद कर दिया मैंने। ये राउंड जीत गया ना भाई, फिर लाउड चूतिया है, फिर तो लाउड वाले चूतिया अगर ये राउंड PRX जीत गई तो। 33 साल के बंदे को खिला रहे थे, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। नावी की टीम में 37 ईयर ओल्ड IGL है भाई, उससे एज से क्या फर्क पड़ता है भाई, मतलब पड़ता है पर उतर दवाई भाई। नाइस नाइस, 1v2 नहीं होता। अगमप्रीत वेलकम टू द स्ट्रीम। है ना, IGL एक प्लेयर है तो चल जाता है, 30 ईयर से कुछ इतना नहीं है भाई। टीको भी खेला ना, कितनी एज तक खेला, वो भी खेला भाई। And they still broke through 5 times, but Loud's defense was excellent there in that half. Trying their best to funnel them into the stronger spots. With Kawanzin and Aspas being the big playmakers in my mind. भाई 2 तो इतना लकी हुआ है ना ये गेम, इतना लकी हो रहा है ना भाई ये बंदा। भाई कुछ भी स्किल्स मिल रहे हैं तेरे को तो भाई। 12 है भाई असली W गेमर। Indian comp scene would have been better if the Forsaken cheating incident did not happen. यार वो बहुत पुरानी बात होगी। Do not drag Forsaken in everything. बहुत पुरानी बात है। राइट को मतलब नहीं है भाई, उससे राइट ने पूरा 0 से स्टार्ट किया ना। But after this, after first half, we chill a bit. After this, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी भाई। अगर ग्लोबल अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी, तो वो सोचेंगे कि भाई इंडियन सीन में और एक और टीम को ले आओ या कुछ तो इन्वेस्ट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन टीम से, एक इंडियन सर्किट से तब भी कुछ नहीं होता। हाँ वही बोल रहा हूँ अभी, इसको मैं ट्रैक करो भाई, परफॉर्मेंस से तो नहीं आ रही है। बहुत सारी टीम्स है यार, बहुत सारे रीजन है जहाँ से एक 2 टीम है। टर्की से सिर्फ एक टीम है, हम वो तो मेंशन करते ही नहीं है ना भाई। ये 40 टर्की की टीम है, टर्की की एक ही टीम है बस, टर्की का एक ही टीम है बस। हाँ ये कैसे पता लगेगा हमें, वो कहाँ है 10 टीम का कैसे खोलूँ मैं? वो बंद कर अपना, इवेंट्स नहीं यार। EMEA हाँ देखो, फ्रांस, यूरोप, टर्की, टर्की की 2 टीम कौन है? अच्छा BBL भी टर्की की है क्या? तो चलो देखो, फ्रांस की एक टीम है बस और टर्की की भी 2 ही टीम है, बाकी सब यूरोपियन टीम्स है। तो ऐसा नहीं है, उनके बहुत सारे सर्किट ऐसे हैं जहाँ से, जैसे ब्राज़ीलियन सर्किट से कितने 1 2 3 नहीं, वहाँ से तो 3-4 टीम है। उसके बाद NA VCT, क्या नाम है इसका? चैंपियंस टूर, अमेरिका नाम है ना, अमेरिका लीग। देखो यहाँ पे भी देखो चिली से सिर्फ एक टीम है, 2 हैं, चल भाई भी है, तो 1 2 टीम वाले भी सर्किट है ना भाई, तो वो परफॉर्म करना पड़ेगा जब तभी जाके बाकी स्लॉट मिलेंगे। मेरे को लगा था इस बार ग्लोबल अच्छा खेलेगी, पता नहीं यार, कुछ 1-2 मैप, चलो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, बट 1-2 गेम जीते, हाथ के गेम चले गए यार। RRQ वाला गेम जो एक बहुत गंदा थ्रो किया भाई। डू यू थिंक एनी इंडियन टीम माइट शो अप एनी टाइम सून? असेंशन में अगर ओरंगुटान अच्छा करेगी तो शायद एक और टीम खेल सकती है, बट वही है भाई कि तुम एक ही तरीका है, जीतो और आगे आओ। जीतना तो पड़ेगा। जैसा PUBG PC का टूर्नामेंट हो रहा है ना अभी, उसमें PNG या P जो भी उसका नाम है, उसमें एनिग्मा क्वालिफाई हुई है। अभी एनिग्मा क्वालिफाई होगी, वो तो गई है क्वालिफाई, 1 स्लॉट मिला था इंडिया को। अब वो अच्छा खेलेगी तो वो सोचेंगे ना भाई कि हाँ भाई और भी लोग और भी टीम्स हम लेते हैं वहाँ से, उस रीजन से। प्राउलर का ये सीन मुझे बहुत बेकार लगा, साला पकड़ लेता ना, पूरा जिंदगी भर साथ में आते रहता है भाई। उसकी रेंज खत्म होने के 0.01 सेकंड में भी तुम उसके रेंज में आ गए ना, खत्म ही होने वाला होगा, फिर भागता रहता है साला पीछे पीछे। ये राउंड तो जीतेगी PRX, वो बंदा ऑलरेडी लो है उनका। ओ भाई
खेल गया 12G। मैं बोला ना भाई यही है भाई, बस 12G नहीं है भाई, जो भी है आसपास तो फालतू ओवररेटेड है भाई। Consistent in the last series with it. Again, another one here. And you can just see the back and forth, the plan A, plan B, plan C from both of these teams as they try to create different trap plays around the map. One at B and then one over Fnatic को भी वो क्वेश्चन नहीं हराया था भाई। Making sure that they didn't fall into either of those. Found the first pick on Jing, who went over aggressive, and they've been able to convert these first kill rounds fairly effectively. ना जीतने दे भाई, लोटस तो ना जीतने दे लाउड। On the replays, yes, but the barrier's already down. There's a lot of players ready to meet them over towards A. Loud with the weaponry though, just back off. They don't want to take these fights. Got to spam that. Dash backing, something's still alive. Do they really want to fight over this? Yes, they should. They should be favored, but you never know. It can just turn on a dime. Damage is being done with these pistols. More than that as well, hunting for the chance and an opportunity, but only Forsaken as अब तो मुश्किल है अगर मैं बताता हूँ, चलो रुको अभी नहीं, ये राउंड तो चलो जीती जाएगी। अगर बाय राउंड जीत गए ना PRX, तो उसके बाद जो पहला बाय आएगा ना लाउड का, उसके बाद वो लोग एक भी राउंड नहीं जीतने देंगे, देख लेना। लाउड वाले पहला बाय आने के बाद एक भी राउंड नहीं जीतने देंगे। फाइनली आ गया। आप बताओ ना कैसे बनाते हो कॉफी? मैं तो वो सब नहीं करता भाई, क्या बोलते हैं, विप नहीं करता, सीधी बना देता हूँ भाई, क्योंकि उतना मेजर डिफरेंस नहीं होता। मेरे को फ्लेवर से मतलब है, तो डायरेक्टली डालता हूँ, मैं तो बना देता हूँ। पानी दूध बॉईल करके उसमें से कॉफी डाल के ऐसे ही। मूवमेंट इज सो डिफरेंट फ्रॉम रैंक गेम, ऑब्वियसली ब्रो, दिस इज नॉट अ रैंक गेम। रैंक गेम को तो कंपेयर कर ही ना भाई इससे। Hello. Team receiving the brunt of all that utility, and it does grant the space over towards PaperX, both on C and A. हर चीज अलग होती है भाई इसमें। मैं बताऊंगा किसी मैच में, जब भी फनाटिक खेल के ना, तब एक चीज बताऊंगा कि वो लोग मतलब सबसे बेसिक चीज वो बताया था कि सेंटिनल जो होता है ना, जैसे अभी इसमें लेस खेल रहा है, तो ये मैप में तो उतना इनोवेट करने का है नहीं, बट जो सेंटिनल्स खेलते हैं ना, जैसे अल्फायर खेलता है भाई, अल्फायर के सेटअप देखना तुम पागल हो जाओगे भाई। वो हर राउंड सेटअप चेंज करता है भाई, वो हर राउंड सेटअप चेंज करता है भाई। कॉफी कौन सी दिन की, कितनी कॉफी? शुभांकर भाई, मेरा ना बॉडी टेम्परेचर यूजुअली हाई रहता है, मतलब मेरे को गर्मी नहीं होती ज़्यादा, मेरे को ठंड बहुत जल्दी लगती है मुझे, मेरा बॉडी टेम्परेचर ही हाई रहता है। तो मैं घर पे जब होता हूँ ना, तब तो मुझे कॉफ़ी मिलती नहीं है, क्योंकि मम्मी पीने नहीं देती घर पे कॉफ़ी। यहाँ पे हॉट कॉफ़ी तो मैं 2 भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम करता हूँ ना, बैक पे बॉइल्स और वो सब होने लगते हैं मेरे को, तो मैं अवॉइड करता हूँ, पर हो नहीं पाती मेरे से यार। मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता हूँ और कॉफ़ी पीता हूँ मैं। 2 पकड़ लो, और 2 भी मतलब इतना बड़ा मग जार भर के पीता हूँ। कर दे भाई, चलो बस। अब अगला राउंड से शायद ही लाउड एक भी राउंड जीतने देगी भाई। ये तो उनका वो था ना बोनस। 3-4 नहीं, मैं 3-4 कॉफी पीऊंगा भाई, मुझे वैसे ही नींद नहीं आती। अगर मैं 3-4 कॉफी पी लें दिन की, मैं 24 घंटा नहीं सोऊंगा भाई। मेरा स्लीप साइकिल तो छोड़ो, बट स्लीपिंग आवर्स तुम देखोगे ना भाई। What is this? The sharp shooting onto Sarak and Kawanzine, and then the last 2 players have scraps of health. Nice round. He plays that as well. It's just perfect. Overconsumption of caffeine is not good at all. हाँ, loud taking control over map. Let's go, ओंकार भाई, welcome to the stream. कहाँ पे आ रही थी देर? Shift हो गई? अच्छा अभी तो चल रही होगी। The round itself, well played by Loud, always double facing on their way into the site, but they just couldn't manage to stop something. What's up, Onkar bhai? This is the time that they want to try and fight over it. What's the adjustment? Backing away. PaperX being the victors for now. Despite there being 2 लोगों की शील्ड चली गई है। दवाई is on 82 HP, something is on 100. For second जज खेल रहा है। Through and over, smoke in their face. Look how heavy PaperX fight over just keeping Mindfreak in this position.
देख रहे हो कितना बैकअप दिया इसको माइंड फ्रीक को उसके टीममेट्स ने। वो स्काई और जेट उसके अराउंड ही खेल रहे क्योंकि वो पता है रबल कंट्रोल के लिए ये पोजीशन जरूरी है, और वो स्पॉटेड है वो बंदा, फिर भी उसको मारने नहीं दिया उसके टीममेट्स ने। भाई 4 सेकंड इतना स्मार्ट प्लेयर है ना यार, इतना स्मार्ट प्लेयर है भाई। अब तो एक और एजेंट आ गया उसके एजेंट पूल में, देख रहे हो? चाय और कॉफी। चाय नहीं पीता यार मैं, बिल्कुल ही चाय नहीं पीता। अल्ट भी आसपास को भी आगे नहीं घुसना चाहिए मेरे हिसाब से। भले तो डुएलिस्ट है, लेस के साथ तो एम फाइट मत ही लो भाई। जी जी 10 seconds. He's not messing around. I mean, there's no time left here. He's got him off the plant. He's buying a bit of time. Here's a showstopper. Has to be committed. Round to the corner. Kill collected. Follow up through. मैं लाउड को सपोर्ट कर रहा हूँ ऐसे, पर मुझे पता है ना कि वो चीज़ होने वाली थी। मतलब मुझे ये देख ही कहता है राउंड तो गया ही है। बोला ना बाय राउंड देखो मुश्किल है, एक भी राउंड नहीं निकालने देगी लाउड। कॉफी एनी टाइम सब बाबू बढ़िया भाई। मैं कॉफी विंटर्स में पीता हूँ, गर्मी में चाय थी। मेरी चाय की आदत ही नहीं लगी बचपन से यार। अभी कोल्ड हो रहा था तो बीच में 1-2 दिन पी थी मैंने। भाई इसके टैटू क्या लिखा है वो आम पे यार, वो पढ़ना है मुझे पूरा। जय श्री राम लिखवा रखा है ना उसने, ओम साई राम, उससे जीत रहा है वो। पोस्टर को बोलता हूँ भाई जय जिनेंद्र लिखवा दे हाथ पे। एक हो गया फिर सब पूरा 2 राउंड से। 4 सेकंड एज अ ब्रदर हु इज लाइक, हाँ पता है गेमर बॉय, मैंने भी देखे। किसने लिखवा रखा है? अरे लाउड का जो आईजीएल है ना ये सड़क, इसने हाथ पे ओम साई राम लिखवा रखा है, एक हाथ पे, दूसरे हाथ पे वो लिखवा रखा है दियो जो ना प्रचोदया, इतना दिखता है बस, बाकी वो पूरा सर्कल ऐसे दिखता नहीं है कि क्या है। आसपास को अभी और बंद कर लेना चाहिए। अरे अब तो लो हो गया, पर इसको किल के लिए जाना चाहिए। जिंग अल्ट कर दिया, मां कसम। ओ 2 किल। टू एस तो भाई अलग ही किस्मत लेके आया है भाई। अच्छा 1v2 है, नाइस वन भाई। साढ़े कितनी जल्दी क्यों किया? वो रोटेट करके भी जा सकता था। What the fuck? आईजीएल से ऐसी गलती एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। चलो मैंने बोला था एक भी राउंड नहीं निकलेगा, तो निकाल लिया इन लोगों ने। इको निकाल लिया भाई 2 अल्ट करके। अभी देखो अभी, अरे वो क्यों पीक किया? ये देख अरे पॉज नहीं हुआ बहन से। यूट्यूब पे दिखाऊं क्या? छोड़ जान दो। व्हाट्स अप बड़ी, वेलकम टू द स्ट्रीम। हिंदू है, देखते हैं रुको उसका नाम। वो अर्जेंटीन है वैसे तो, पर पता नहीं उसने कैसे फॉलो करना स्टार्ट किया वो तो नहीं पता मुझे। क्या नाम है इसका? ये नाम है, हिंदू तो नहीं है। इसके बाद कितने मैच है? 2 मैच ही है रोज। इसके बाद किसका मैच है वो देख लेते हैं। DRX EG अच्छा मैच हो गया, बहुत अच्छा मैच होगा भाई। अगर इतनी वॉचिंग कंटिन्यू चलती रही तो मैं पूरा वो वाला मैच भी स्ट्रीम कर दूंगा। चलो बस, वरना इस मैच के बाद मतलब ये मैच के जितने भी मैप होंगे वो पूरे करूंगा स्ट्रीम, और रिस्पॉन्स रहेगा तो आगे भी कर लेंगे यार। पिछला राउंड तो थ्रो किया मेरे साथ। साडक भाई आप वेट कर सकते थे यार, वो टैप ही नहीं। कितने गलती कर सकता है भाई वो? ट्री उसके डोर के थ्रू घुस रहा है भाई, ऑब्वियसली सामने वाला मारेगा तेरे को। करो हाँ देख रहे हैं सब। रिलीजन डिवोटेड टू वैलोरेंट, इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस ही होगा। The positioning here, losing time on the clock, is working so hard against him. It comes down to just random spray into the pit. Everybody falls. Hi, PRX proving me wrong, bro. You can see it based on the positioning though. PRX भाई W गेमिंग, लेट्स गो। अच्छा क्लोज मैच देखेंगे, चलो बढ़िया। साडक भाई ऐसे नहीं चलेगा, देखो हाँ ना भाई, एक हाथ में सनातन धर्म का सपोर्ट है तो ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए आपको।
if everybody's playing tree Nice control, yes, one. you have a 4 bit there, second तो but भाई just flip प्यार है just भाई like मेरा. that. Like we saw, I mean, something was just running and gunning inside it. Everybody was. That was their key to breaking that. But when you're all collected in such a small area, Bro क्या राउंड निकाल दिया भाई. जिनका 1v5 प्लस माया भाई 1v5 नहीं बोलना उसको. ये आज बोला है उसको 1v5. फिर PUBG मोबाइल वाले प्लेयर्स की तरह मत बात करो माया भाई. एस बोलो उसको 1v5 नहीं था वो. रीलोड ज्यादा पसंद आ रही पसंद है कि RX रीलोड एनी डे ब्रो. What a perfect position for Forsaken to be playing it on the opposite side of it so that he could get sound cues to read into something like that. माया भाई है ना उसको अगली बार वापस 1v5 नहीं बोलना. वो एस था बस. 1v1 था लास्ट में. कहने वालों तुम जाकर ट्विच पर क्रिंज कंटेंट बनाओ प्रो मैचेस ईओ वाले खेलना. पता है एनए वाले बजते क्यों हैं? क्योंकि वो लोग लकी रहे हमेशा. पहले टूर्नामेंट में फनाटिक सेंटिनल्स खेल गई, फिर एक टूर्नामेंट एनवीएस खेल गई जो बाद में ऑप्टिक गेमिंग बनी, फिर ऑप्टिक गेमिंग एक टूर्नामेंट जीत गई, एक के फाइनल में हार गई. तो मतलब उनके पास लकी तो नहीं बोल सकते पर मतलब उनको वो एक वंडर टीम मिलती गई बार बार जिसके नाम पे वो लोग बज रहे हैं तब से. तो वी हैव 2 मेजर्स क्योंकि एक सेंटिनल जीत गई, एक ऑप्टिक जीत गई. फिर ऑप्टिक की वो टीम जो थी ना भाई उन्होंने कुछ तो कमाल ही कर दिया था. और मुझे पता है उनकी टीम अच्छी लगती है. जब वो एनवीएस सेंटिनल का तो लिटरली लगता तो मुझे भी ऐसे ही है. पर लक मत क्या ही बोलो यार. उसको 3-0 हराया है तो दे दो क्रेडिट. अब अच्छा खेल के ही जीते हैं. तभी हाँ वैसा गेम प्ले कि लोग एम पे जीत जाते थे बट डिजर्व नहीं करती थी मेरे हिसाब से. तो फनाटिक को भाई तीनों मैच क्लोज आ रही ना फनाटिक यार. थोड़ी गलतियां भी थी वो. अभी किसी दिन रिव्यू करेंगे वो वाला मैच. सीएसगो में कहीं दिखे नहीं. वही तो सीएसगो में भी लकीली एक मेजर जीत गए Cloud9. तो फेस क्लैन से कैसे जीत गए पता नहीं यार. और टैरिक था उस टीम में और टैरिक अच्छा भी खेल गया था. तो टैरिक अब सीएसगो तो छोड़ दिया, वैलोरेंट तो छोड़ दिया है पर वो कभी कभी मिल करता है व्यूज उस नाम पे. ये वो ब्रो आई एम सीएसगो ठीक है. अब जो जीता है उससे क्रेडिट में क्या ही लें वापस. जीते तो जीते भाई, कुछ करके जीते होंगे ना. मटके में तो कोई जीतता नहीं पूरा टूर्नामेंट. क्या ही कर सकते हैं. अब मेरे को तो नहीं पसंद है लेकिन. अरे वो स्केड्यूल वाला ना. हाँ वो भाई मेरे को पता है जैसे वो जो भी टूर्नामेंट याद करता हूँ ना तुरंत मेरे को फ्लैशबैक आता है. सेंटिनल फनाटिक भी याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि हेवन पे कैसे मिस्टेक चूतिए ने अपने टीममेट को फ्लैश कर दिया था और लास्ट राउंड में और हार गए. फिर वो फेस क्लैन Cloud9 में कैरिगन ने क्या गलत कॉल दी थी. वापस रोटेट करने लगे. 12-15 सेकंड बचे थे रोटेशन कर रहे हैं दूसरी साइड पे. तू अकेला ऑफ लेके बैठा था. उसने मारा भी स्पाइक वाले को. स्पाइक ड्रॉप और देख के खेलने का मन कर गया. एक मैच लगाओगे क्या आप भी? खेल लो क्या मैं भी? थ्रिफ्टी ले गए भाई. CS2 आ रहा है. मुझे तो अच्छा नहीं लगा CS2. देखते हैं जब वो प्रॉपर रिलीज हो जाएगा तब कि कुछ और भी अच्छा है कि नहीं. वरना तो कुछ चेंजेस नहीं है भाई. वो वही है जो भी है. तो इसका डूडल टैरिक अच्छा खेल गए थे तीनों. That is just ridiculous. I mean, Forsaken goes for a peek there because he knows that he's given up a lot of A-Rubble control. अच्छा हुआ वो श्राउड और वो सब चले गए थे टीम में. उसके बाद जीते. श्राउड आउट जीत जाता ना. श्राउड को तो भगवान ही बना देते लोग. फिर वो श्राउड तो मेजर विनर है भाई सीएसगो में भी. तो ना ओवररेटेड है ना भाई. और फेस तो बाप टीम थी भाई. निको की किस्मत में नहीं था ना जीतना इसलिए. कर्स निको मेरे ऐसा है भाई. निको ऐसा इमॉर्टल 2 से 2 RR होगा और हार जाऊंगा. वैसे CS खेलना कब से शुरू होगा? मुश्किल है. मुझे नहीं पसंद यार वो 2 गेम पे स्विच करते रहना बार बार. या तो अगर लगेगा ना कि भाई CS2 में कुछ है बात तो प्रॉपर स्विच कर लेंगे. फिर एकदम CS2 ग्राइंड करेंगे फिर पूरा, है ना. और मेरा वैलोरेंट से इसलिए मन नहीं उठ रहा ना क्योंकि है वैलोरेंट का रोड मैप लंबा है भाई. ये लोग चलाएंगे इस गेम को अच्छे से. राइट अगर किसी और कंपनी ने बनाया होता ना वैलोरेंट तो बात अलग थी. पर राइट गेमिंग ने बनाया ना तो ये लोग देखो ना कितने एजेंट आएंगे. फिर जैसे ही तुमको लगेगा ना कि भाई ये गेम बोर हो रहा है भाई 4-5 एजेंट और अच्छे आ जाएंगे. फिर एजेंट बैन का सिस्टम आ जाएगा तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. फिर मैप्स तो आते ही रहते नए. और एटलीस्ट CS2 से तो बेटर मैप रोटेशन है भाई इनका. CS में तो भाई थक गए थे भाई. 1-2 तो नहीं गिने सुने मैप देख के. नाइस वन.
राइट का माल है। वैलोरेंट नेक्स्ट इन, वैसे यार किस्मत भी जरूरी है बहुत। ओक 12 बुलेट है उसने, 2 बंदे मारे 12 बुलेट में स्टिंगर की, स्पेक्टर की। लॉन्डे तुरंत रीलोड करने जाते हैं स्पेक्टर। They should remove some agents. रिमूव तो नहीं पर बैन सिस्टम आने वाला है। तो जब 35 to 40 एजेंट्स हो जाएंगे ना इन टोटल, तब बैन सिस्टम आएगा। और जब बैन सिस्टम आएगा ना भाई, मुझे तो बहुत सुकून मिलेगा भाई। फिर जो सूती है ना, जो सिर्फ एक ही एजेंट खेलते जिंदगी भर भाई, स्पेक्टर से डिस्टेंस क्लोज करके चलाया बंदा भाई। उसने एक एक फाइट इतनी स्मार्टली ली है ना भाई। ये राउंड अगर गया ना, मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा भाई। अगर ये राउंड PRX जीत गई तो टोटल कितने एजेंट निकलेंगे वैलो, एनी आइडिया? ब्रो कोई लिमिट नहीं, जब तक गेम चलेगा तब तक नए एजेंट आते रहेंगे। ये बहुत गलत किया इन्होंने। 4 सेकंड समथिंग को एक और किल ले लेना, बहुत गलती की। लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई। बैन सिस्टम जैसे ओवरवॉच में है, ओवरवॉच मैंने खेला नहीं तो मुझे पता नहीं, पर डोटा में जैसे है तो ओवरवॉच में भी वैसा ही होगा मेरे हिसाब से। बस एज इन कंप्लीट बैन, कंप्लीट बैन नहीं, वो मैच में तुम वो एजेंट पिक नहीं कर पाओगे फिर। नहीं यार, ये प्लांटर को कवर ही नहीं दे रहा है भाई कोई। वो ऑपर कैसे उस कोने में से निकल के मार रहा है। एग्जैक्टली ब्रो, मेरा भी सेम रिएक्शन है कोच भाई। लॉल शूटिंग लॉबी बैन सिस्टम मतलब कि जब मैच मिलेगा ना आपको, उसके पहले आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन सा एजेंट आपको बैन करना है, समझ रहे हो? तो इस बीच फिर से बच गया भाई। अच्छा वाइल्ड वेस्ट हो गई। ये कल्ट है। बैन सिस्टम से क्या हो जाएगा पता है? जैसे मुझे मिला है हेवन, हेवन आया मतलब जेट बैन कर दो, क्योंकि हेवन पे जेट बहुत अच्छा है। असेंट आ गया, जेट बैन कर दो, या सोवा बैन कर दो, केजे बैन कर दो, समझ रहे हो? अच्छा मतलब एजेंट वीटो, हाँ एजेंट वीटो। अब इनका सिस्टम कैसे होगा पता नहीं, मुझे डोटा का भी एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं भूल गया यार, क्योंकि बहुत कम खेला है मैंने डोटा और बहुत पहले खेलता था यार, इनिशियली जब चालू की थी ना प्रॉपर गेमिंग। जैसे R6 में बैन, अच्छा R6 में भी बैन सिस्टम है क्या? मेरे कुछ दोस्त थे भाई R6 बहुत खेलते थे। ऐसा समझ लो मेरे कॉलेज में ग्रुप ही था पूरा, 4-5 जितने भी गेम थे ना सब पे वो कर रखे थे, सब में हमारे ग्रुप के लौंडे जिधर भी टूर्नामेंट होते थे जीत के आ जाते थे। डोटा में भी हमारे 2-3 लौंडे बहुत अच्छे थे, फिर उनको 1-2 लड़के और मिल गए थे बाकी कॉलेजेस में से, वो लोग खेलते थे मस्त। CSGO में तो राव साहब का रुका था भाई उधर। R6 में भी थी 1-2 टीम्स थी हमारे कॉलेज की, मस्त थी भाई। That isn't fun. Meta agents will keep getting banned. That is fun, bro. That you have to innovate things and you have to master other agents as well. तो लोग इंस्टॉल करना भूल जाएंगे भाई वो चीज़ के बाद से, समझ रहे हो? इंस्टॉल कर ही नहीं पाओगे ना आप, क्योंकि पहले आपको बैन करने। जी तू भी MS परस्यू कर ले, बैटमेट्स तो कर ही रहे, मेरे को और पढ़ाई नहीं करनी यार। अच्छी गेमिंग के बाद चलते तो ओंकार भाई आपने कहाँ डाल दिया ये MS बीच में? भाई आज तो DRX जीत जाए मजा आएगा, PRX DRX दोनों जीत जाए भाई मजा आएगा। दोनों NA की टीम बाहर, NA इवन जो अमेरिका लीग में खेलते नहीं, लाउड तो बाहर नहीं होगी ना, लाउड तो उसमें जाएगी। नहीं दोनों टीम बाहर नहीं होंगी, दोनों लोअर ब्रैकेट में जाएंगे। हाँ दोनों। अच्छा अरे भैन शो, फनाटिक का फिर से डिफिकल्ट मैच होगा। जो भी आज हारेगा, अभी ये मैच हारेगा उसका फनाटिक से मैच है। और ये तो फनाटिक तो भाई खतरे में यार, लाउड या PRX से मैच होने वाला है। चलो देखते हैं कैसा खेलते हैं। मौज मस्ती के बीच में नो पढ़ाई की बात है। हाँ ना यार, BT में डाल दिया ओंकार भाई, मैं जा रहा पढ़ने यार। ओंकार भाई थॉट डाल दिया ना, मेरे भी दिमाग में थॉट डाल दिया फालतू का। चलो कोई नहीं,
Connection onto the two, but push them away. B main spots it out. That is a lot of players and a lot of information. Something. पैसा आएगा एमएस करके, अरे वो जब तक होगी तब तक मेरा मन उठ जाएगा भाई गेमिंग से। This is a nasty way of getting value out of his knife and operator buy. उतनी पढ़ाई करके फिर क्या ही गेमिंग करूँगा। Towards that area here, Odin spray, Forsaken, knowing now that they're disrespecting him. अच्छा भाई ने निकाल ली Odin। Wide, locked down. Now placed out. This will be pushing back over towards the anchoring players onto B. Jing still has nade. Forsaken's got an Odin. He can spam this line of side angle. He's got the ping on it already. The damage narrowly avoided is being done. शांत एक बुलेट नहीं लगी डैमेज करके जो ओवरराइड कर दिया था ना। मैं तो लाइफ टाइम करूंगा। हाँ मेरा भी है भाई, उसकी फट गई 12 दिन की फट गई भाई। ओह गया ये राउंड, चलो भाई अच्छा लास्ट राउंड तक तो जाएगा गेम। तो लेस भाई आपका एम अच्छा है पर इतना भी नहीं कि 1v4 कर दोगे 30 HP पे, है ना। माइंड फ्री की मार देगा इसको। बीच में मन उतर गया था गेमिंग से, नाउ इट्स बैक, लेट्स गो। चलो भाई अभी पैसा तो बहुत है यार इनके पास। ये राउंड भी क्लोज, ये राउंड क्लोज जाएगा ये भी। अरे छूतिया है क्या तू जब वो पहले पीक किया तभी तू पीक नहीं किया, फिर जब वो मर गया तो तू क्यों पीक किया फिर? मत ही करता पीक, वो वॉल के थ्रू जा रहा है उधर। I want to see you in esports one day, bro. Bro, even I wanted to see myself, but not anymore. 26 का होने वाला है अगले महीने। esports की उम्र गई मेरी, एटलीस्ट एंटर करने की तो उम्र नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ किसी टीम को कोच वोच चाहिए तो भाई W Gaming एकदम। शुभंकर भाई जरा जुगाड़ लगाओ ना यार। कटेगा इसका चूतिया कटेगा, देखना इसका चूतिया कटेगा। सही टाइम पे निकल लिया। कोई मेरी स्ट्रीम हाइलाइट्स एडिट कर दो फनी वाली। मेरी भी रिप्रेजेंटेड CS एंड PUBG, पर वो तो सब छोटे लेवल पे यार, उसको काउंट नहीं करूंगा मैं स्पोर्ट्स में। क्या ही मजा आ गया भाई। आसपास में 1 सेकंड लगा है रिएक्ट करने में, फिर भी 2 बंदे मार दिए उसने। इंडिया से कौन कौन गया है स्पोर्ट्स में भाई? माया भाई ये तो अबे मस्त क्लिप थी बाप। माया भाई आपका क्वेश्चन ही मुझे, क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दूंगा मैं, ऐसा क्वेश्चन है तो समझ ही नहीं आया मुझे। इंडिया से कौन कौन गया मतलब बहुत लोग गए बहुत सारे गेम्स में, और ई स्पोर्ट्स में गया मतलब क्या इंडिया का खुद का अपना ई स्पोर्ट्स है तो जाना कहाँ है कहीं? समझ नहीं आया क्वेश्चन मुझे। इंटरनेशनल लेवल पे पूछ रहे हो क्या? तो बहुत लोग गए भाई, बहुत लोग खेले। अब उसमें इंटरनेशनल आप कैसे काउंट करते हो वो भी डिपेंड करता है कि एकदम ग्लोबल इवेंट काउंट करोगे उस स्पोर्ट का सबसे टॉप टियर टूर्नामेंट तो वो नंबर कम होता जाएगा, बट इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत सारी टीम्स खेली है। CS:GO में बहुत टीम्स खेली है, इंटरनेशनल ऑर्ग्स ने भी बहुत सारी टीम्स ने इंडिया में इन्वेस्ट किया। ऑप्टिक हो गई, फनाटिक हो गई, TSM हो गई, गैलेक्सी रेसर हो गई, और भी होंगी। ये तो PUBG, एक तो मैंने CS की बता दी और 3 PUBG की गिना दी मैंने, और PUBG की और भी है, इनके अलावा भी बहुत टीम्स है। PUBG में तो बहुत टीम्स ने इन्वेस्ट किया भाई इंडिया में। टीम वाइटलिटी है और कौन सी और गया। नाइस राउंड। वैलो का टॉप टूर्नी कौन सा? ये जो हो रहा है वैलो ओनली ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, बस एक ही टीम है माया भाई। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है जो लीग में तो है, बट इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती, पर एलिजिबल है कि अगर तुम जीतोगे तो यहाँ भी आ सकते हो। तो अभी तो वो एक ही टीम है जो कुछ कर सकती है फॉर द नेक्स्ट 2 years। मतलब वो तो है ही है, क्या पता कोई और टीम भी आ जाए कुछ और टूर्नामेंट जीत के, पर ग्लोबल स्पोर्ट्स तो है अगले 2 साल और सपोर्ट करो भाई। ये बेबी रैक की तरह बकचोदी मत करना है ना।
क्या बोलते हैं, इंटरनेट चाइल्ड की तरह मत करना कि अरे भाई तुमको खेलना नहीं आता, खेलना नहीं आता, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है? सपोर्ट करो अपनी टीम्स को। हम ई स्पोर्ट्स में हैं पीछे, तो हमको ये बात एक्सेप्ट करके सपोर्ट करके धीरे धीरे आगे जाना पड़ेगा ना। कोई किसी बंदे ने मैथ्स पढ़ी नहीं, सीधा इंटीग्रेशन कराओगे इससे तो नहीं होगा। इसको सिखाना पड़ेगा, पहले एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब सिखाना पड़ेगा, तब जाके वो इंटीग्रेशन तक जाएगा, है ना? तो सपोर्ट करो, हो जाएगा भाई सब धीरे धीरे। मस्त माल का है माया ने। अब तो मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो कोई ये मैप खत्म होगा फिर कुछ लेके आएंगे खाने का। कोई आ रहा है क्या ये मैच और अगले मैप और इस मैप के बीच में जो गैप होगा उसमें थोड़ा स्पाइक रश खेलते हैं अपन, आ जाओ। या अनरेटेड खेलते हैं, 5 बंदे हो जाएंगे तो अनरेटेड खेलेंगे, ताकि जब अपना मन करे तब सरेंडर कर पाए। या 4 में भी सरेंडर हो जाता है तो 4 लोग भी हो जाएंगे तो खेल सकते, आ जाओ। आईडी मेरी मैं लिख देता हूँ उधर, ऐड कर लो मेरे को। Not brought down though, there is a heal there, but a smoke in his face, still dash there. Active as well, paranoia, or not the paranoia, but the prowler itself. Well, now loud. रिमूव लिखो ना मेरी आईडी चैट में, लिख दो ना, इजी #666। शुभंकर भाई मेरे वैल्यू की आईडी हैक हो गई थी अभी कुछ 20 दिन पहले, मादरचोद हैकर ने नाम वाम सब चेंज कर दिया। गरम गरम चिकन मोमो दे दे, स्पाइसी चटनी के साथ मजा आ जाता है। लिख दिया सब, थैंक्स सर, मत बोलो यार प्लीज। Post plan is looking impeccable right now. Sees all layered up with a util here. Sound cues. चेंज कर लो ना, 3-4 दिन बाद कर पाऊंगा, 24 या 25 को मैं कर पाऊंगा नाम से। अबे डैडो को पुश करो जल्दी। नाइस वन। It's absolutely ludicrous, but Loud seeking once more to salvage it, to save it, containing it all. नहीं रे, नहीं रे। Rifles in their hands, jumping Nice. in the face to the shorty play. Forsaken, dropping down less. कल 4K मोन्टाज डालूंगा। हाय ये लेट्स गो। अब तो हो गए होंगे 3 दिन, नहीं हुए नहीं, थोड़ा बहुत बचा। आज 28 है ना, 24 है शायद डेट, मुझे याद नहीं है, पर कर लेंगे, 7-8 दिन बाद करूंगा वापस। ओह नाइस शॉट। And these shots that are coming through are just bonkers. How do I read that Sadak? ये पढ़ो उसके हाथ में, दियो योना प्रचोदय ऐसा कुछ तो लिखा है। साला ट्विच पे रुकता भी नहीं है ना, फट से रिफ्रेश होता है। To make things 13-13 and the overtime rolls again. Another timeout being taken. Yeah, I mean, it looked like it should have been over just from that post plan setup, but it is ripped to pieces. It's broken. चलो भाई, अच्छा भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, I did not expect PaperX to win 13 rounds. At least get to OT. Now I don't care if they win the match or not. They played well enough. These teams are finding success on their defense half in various different ways. यश भाई किधर है? वो तो होते हैं यार वॉच पार्टी के टाइम। यश भाई है कि नहीं सीन पे? चुपचाप देख रहे हैं क्या? My God, what a performance this has been. What a sign of incredible things potentially to come on Split and Pearl as we look a little further ahead. But for the here and now, PaperX have got to figure out what their game plan is going to be. They've been stumped a little bit once they get into these sites, because Lauda being able to find ways of, you know, flanking around the back. We saw Sadak pushing through the smoke towards stairs for a 2K in the previous round. Aspas is going to pick up the op on Raze. No boombot. Pushing towards B. One satchel. I mean, very unusual. I feel like PaperX have not gone towards B except with a single player the whole time. Yeah, maybe feeling like they could have had a read that now is the time that the pivot occurs. Direction. Odin spam. Recovering it. Taking that back. And once more, no real utility used over here. भाई रबल कंटेस्ट ही नहीं किया बिल्कुल लाउड में। PaperX going to try and take this space aggressively. They hide from the Prowler to begin with. This is going to make it very difficult for Kawanzine and the rest of Loud to get good information about what's happening behind the smoke. And they have to commit so many resources to helping Aspas on B. They have 2 players. मुझे लगता नहीं हम खेल रहे हैं क्योंकि ऐड तो किया नहीं किसी ने। चलो कोई नहीं, मैच ही देखते हैं। And just leave this to the alarm bot, but the question is, do they find the right timing? Trying to fake it out. Really
Not a lot of noise being heard. It has pulled rotations away. Loud moving away from the site. It's all of this bad information that Kawanzin is getting. Gives it up, still playing. It was back to essentially the spawn. What a way to throw something different into overtime. मैच देखो watching तो गिर गई हाँ 11 से 7 हो गई Before Loud even know that they're there. Yeah, not a single sound cue made until now. Into the post plant. How does the positioning get played now? Retaking this one, Aspas. It's gonna be hard pressed with the operator. He's still locking down his one angle, and the footsteps that they get heard by Devi. Really expect this one, don't really anticipate it. What's he looking away for? Not too sure still, it's there. Covering fire. Lead raining down onto them. Loud, with so much to do now. And time is definitely ticking. It's all being used up, dropping down onto the side here. Something off to the side, he needs some help a little bit. There it is. First one found, first one collected. चलो ये तो मैच जीतने की चांस आ गई अब तो मैच जीत सकते हैं भाई अब तो मैच जीत सकते हैं भाई It's PaperX on that point. What a magnificent timeout to take. Alex and the team cooking up a complete destruction. Contacting through, denying all of the information that Kawanzin was trying to get with the home. आप एक्सप्लेन मत करते हो तभी ओ भाई थैंक यू भाई मेरे को अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ मजा आता है मुझे भले 2 लोग सुन रहे हो 3 लोग सुन रहे हो मतलब अगर वो 3 लोग सुनने में इंटरेस्टेड है तो We're going to head straight into the next. Already in it, yeah. This is it, PaperX. Ball has to be dealt with here. Something's holding, but the operator has to respect it. एक बंदा चाहिए साथ में यार वो तोड़ने के लिए भाई वरना ऑफ थोड़ी वहां से अरे रे 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 मारते मारते मार तो It's traded. He did a double take there. He didn't realize, he couldn't believe that Sadak was in that spot. 4v4. Door open wide. Boombot. Prowler in his face. Shot fired, but bullets. अबे ऑपर अकेला है बे इधर अकेला ही है बिल्कुल समथिंग तो इधर And he has taken towards the back of the site. Control is theirs. सिंगल स्कोप 1 किल तो मिल जाएगा अरे रे 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 गया Just a moment, just a chance. Nade at the feet. It's gambled incorrectly. No damage really being done. ब्रो जीत गई भाई लाउड वाले क्या कर रहे हैं भाई वो क्लाउजिन को कोई कवर क्यों नहीं देता इधर वो लोग वाटरफॉल क्यों भाग जाते हैं बार-बार मजा आ गया भाई अब तो एकदम रीटेक खेलेंगे भाई जिनके पास नेड भी है लौड़ा प्लांट होगा मैं चला गया ये देखो पागल आदमी 1 HP गया लेट्स गो भाई लेट्स गो लाउड को हरा दिया मैं वहां कसम पनौती है बेबी रख दिस भाई मजा आ गया आरओ के प्रीमो शिफ्ट प्ले खेलते वो खेलते हैं अपन स्पाइक रश शुक्रश खेलते हैं चलो थोड़ा चैनल का प्रमोशन करके आएंगे मजा आ गया भाई मजा आ गया भाई क्या थ्रो किया मैं तो एक राउंड भी नहीं जीते की बोल रहा था बाय राउंड आने के बाद ये तो पूरा मैच निकाल दिया भाई ओह पनौती मैं तो नहीं था कहीं वो लाउड के ऊपर यार आज रैंक अप हुआ था ओंकार भाई वापस बी रैंक हो गए फिर यार हक दिया एक गेम में हमने मैं आता ना कर ओके समथिंग ओके सिर्फ समथिंग को मत बोलो यार दवाई ने भी कितना मस्त खेला है 4 सेकंड 31 किल है जिंग ने भी कितने क्रूज भाई माइंड फ्री के कोई मोमेंट्स नहीं थे ये गेम में बाकी सबके कुछ ना कुछ तो थे बाकी ये भी अपना काम तो कर ही रहा होगा ना भाई बैक ऑफ द जो हम देख नहीं पाते सब 4-5 प्लेयर अपना अपना काम तो करते ही हैं पर इम्पैक्ट वो चारों का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट था भाई माइंड फ्री का उतना इम्पैक्ट नहीं था पर बाकी चारों का तो था भाई
भाई मैप जीत गई, लेट्स गो। अभी फनाटिक वाले को डूब मरना चाहिए भाई, जो तुम्हारा मैप है उस पर तुमको लाउड नहीं हरा दिया। ओ भाई अगला मैच तो फनाटिक बहुत मुश्किल है भाई, ये तो एग्जिट है भाई टूर्नामेंट से फनाटिक का। चलो कोई नहीं, अपन अपनी ऐसी एक ही टीम्स को सपोर्ट करेंगे, पीआरएक्स को फनाटिक के बाहर होने के बाद, है ना। ओ मैंने बोला ना यश भाई होंगे, यश भाई वॉच पार्टी का टाइम यश भाई अपने स्ट्रीम पे ही होते हैं भाई, भले चैट करें ना करें पर अपने इधर ही रहते हैं। पीआरएक्स में कोई लीडर बोर्ड में है रेडियंट? अभी तो नहीं होगा क्योंकि अभी टूर्नामेंट चल रहा है ना, तो जब भी टूर्नामेंट चलते हैं तो बाकी लोग ऊपर चले जाते हैं उनसे। अभी ये टूर्नामेंट खत्म होने दो, जब वापस आएंगे ना ये लोग इधर, ये सब ऊपर समथिंग। देखो अभी तो रेडियंट भी नहीं है कोई, पीआरएक्स में कोई रेडियंट भी नहीं है अभी सम। अच्छा इसमें से असली वाला कौन सा है पता नहीं, असली वाला ये है शायद, छोटे सिंह सैमसंग जिंग क्या क्या तो नाम, पीआरएक्स इन्वोक, ये शायद पीआरएक्स का ही है एक्चुअल में। समटाइम फॉर सेकंड नहीं, ये वाला फॉर सेकंड पता नहीं यार अब कौन से इसमें असली है क्या। दोनों फॉर सेकंड तो इमॉर्टल 1 पे हैं, पता नहीं भाई उनके कैसे अकाउंट रहते, कैसे क्या पता नहीं कितने अकाउंट होते हैं उनके पास, क्या पता क्या करते हैं। समथिंग गोस्ट ले लेनी चाहिए, सोरिंग गोस्ट ले लेनी चाहिए। नहीं यार पैसा क्यों, अपने पास है ना एक, बढ़िया तो है भाई। मेरा तो माउस बफ चल रहा है भाई। माउस अच्छा चल रहा है क्या? मैच फाउंड। मैंने अपनी एक दोस्त से मांग लिया था ये बोल के कि भाई तू अब सीधा लॉजिटेक खरीद। Let's go. पुल्ली का पापा, तो पुल्ली किधर है? मैं गिफ्ट कर दिया रहता लेकिन मैंने खुद से इस महीने से यूनिकॉर्न ले लिया। ओंकार भाई एक आपने क्या लिया मेरे को बताना, वापस बताना एक बार जरा। एक बार अलग से लिखो क्या क्या लिया है ओंकार भाई, अलग से लिखो पूरा, एक सेंटेंस में मत लिखो, क्या क्या लिया वो सब बताना। पुल्ले मेरे साथ है लुल्ली बोलते हैं भाई उसको, कुछ नहीं। अरे भाई क्या क्या बातें कर रहे हो भाई आप। Spike rush. My reflection is अच्छा here. फिर ठीक है। Do me a favor, cariño. डिस्प्ले कैप्चर से साउंड आती है। हाँ Reloading. Go, go, go. Reloading. Gotta go. हेलो कमलजीत भाई, बहुत कहाँ थे यार कमलजीत भाई के लोग। Blocking sight. इसलिए मैं जेट नहीं खेलता हूँ। सोरेन गोस्टमैन मैं लेता ही नहीं, आप गिफ्ट करते तो भी नहीं लेता मैं। जोरुमेन Last player standing. Cutting through. गेम चैप्टर जरूरी नहीं है। नहीं डेस्कटॉप पढ़िए तो डेस्कटॉप पे जो भी साउंड आ रही सब आएगी। Reloading.
कोई नहीं भाई, मैं ले लेता वो स्किन। तो ही हो गई ये तो। नहीं, मैं सोच समझ के लेता, कुछ और स्किन ले लेता आपसे, या माउथ पैड ले लेता नया अगर आपको दिला नहीं था तो, पर ये नहीं लेता। Time to jump. Enemy Decoy. Nice try. One enemy remaining. अरे तेरी Fight planted. किसी को खेलना है साथ में, स्पाइक रश वगैरह खेलना है तो आ जाओ अगले मैच से पहले, तब जितना टाइम होगा उतनी देर खेलेंगे। नियॉन मार देगा देखना। अच्छा नियॉन अपना यही है, स्टन करो ना उधर, स्टन करो ना। एक और स्टन करो, एक और स्टन करो, बढ़िया। जोड़ा बोजू का, हाँ ये जो तो मुझे पता है, वो रेडियंट जाता है ना ब्रीच खेल के, पता है। देखा जाए कैसे सिंह खेल रहे हैं माउथ पैड के नाम से। छुपा लूँ जरा। Break them. अबे मेरी तो गोली खत्म हो गई, इसमें चेंज नहीं कर सकते क्या? भाई कह रहा है लोड करो। Let's play. Ready. One enemy remaining. Flawless. Reloading. Blind. Switching sides. आया साइफर इधर हॉल में आया था। ओडिन की स्किन रखी, मेरे पास स्किन नहीं है, वो बैटल पास वाली भाई, वीएफएक्स वाली स्किन थोड़ी है वो। Reloading. Enemy spotted B. One enemy remaining. You died last. डीजे का न्यून मस्त है। मैं नहीं देखता हूँ मैं भाई, वो जो कंटेंट क्रिएटर, मैं तो प्लेस देखता हूँ, तो वीएफएक्स वाली नहीं आती ना सिर्फ। हाँ अरे वो बैटल पास में लिए ओंकार भाई, बैटल पास में जो 15-20 स्किन मिलती है ना फ्री में सारी। I'm out of here. Try not to die. Satchel out. Gotta go. Satchel out. Time to jump. Grenade. Decoy. Enemy mid. Blocking sight. My block this. अरे भाई क्या कर रहा है? मुझे ही फ्लैश कर, देखा नहीं जा रहा क्या भाई टॉप ट्रैक करते हुए? Bye. One enemy remaining. Try harder. Defenders win. I'm done. पूरा ही नहीं किया मैं कॉम्प लेके। ये देखते हैं मैच का कितना टाइम है। ओ मैच स्टार्ट हो रहा है, चलो ये वाला खेल लेते हैं। मैच स्टार्ट हो रहा है, क्या बंद करें? मैच स्टार्ट हो रहा है भाई लोग। मैच देखते हैं। नियॉन खेलो, खेलता हूँ।
certainly hope so. We end up seeing this one go all the way the distance in terms of the series, but yeah, Split's going to be an interesting one. Loud's comp, you know, Sean was kind of touching on it about it's relatively unconventional when you look at most Split comps as well. Running a Killjoy, you know, just touching on the fact that your attack side default as well, you can't really get a lot of the lurks off if you are playing Killjoy. You are really tethered to one area of the map. Loud were also the team that popularized running double duelist with the Sky and the Viper on this map. Kind of wrote the book, and PaperX took the book, tore out a bunch of the pages, scribbled their own notes all over it, and decided to play it at 5 times the speed. Yeah. PaperX is so fun to watch on this, and I'm sure they'll have some aggressive defense ideas. It suits them nicely. Well, let's jump into it here. Map number 2 of Split. PaperX's map choice, nobody leading. And it looks like there's a setup here to try and fight over Match found. Fault line off the rip. बेकार नाइट मार्केट है मैं भाई कुछ नहीं आया मुझे Waiting for signs of life. चलो कॉम देख लेते हैं मेरे को नियॉन देना ना Full damage at the beginning. It's around us, just distracted. Okay. स्काई डबल कंट्रोलर ठीक है Happens to the best of us apparently. Can't heal himself. No, no we cannot. Both teams are holding counter. मुझे लाउड का कॉम्प अच्छा लग रहा है बट इनका भी अच्छा ही है PRX का भी अच्छा है Spots it out there, Trailblazer. Tucked deep into mid. No players spotted. At least not in ropes. Loud are keen and eager to try and take that space. Oh no. 3-pull star. 2 years. He does not realize this. Yep, there's a flash right in his face. Enough to dodge it. A decent attempt. Almost made all the difference there. Reaction. Okay, maybe not actually. Loud looking like they wanted to just absolutely beeline it into the B sides. Les here with the Sheriff, and that is beautiful. The form from Les has been unreal. He just deletes everybody over by Garage as PaperX go for another exploration. इसी रीजन से मुझे लेस अच्छा लगता है ना कुछ रीजन तो है मुझे लेस अच्छा लगता है क्रेजी कर दिया भाई लेस ने अब ये पूरा मैच वो मार्च हो जाएगा Killjoy, after this, you wanna do Go, something? go, go! Sure. But if anything explodes again, go, go, go! Gotta go! Another round of salvage. Yeah. Well, magic coming out from the Loud camp. That's what we saw from PaperX on map 1. Same counter utility being thrown here. Take this! That is always ready for this fault line at the start. In case PaperX trying to do it. Enemy spotted B. Yeah, PaperX are not going to be able to do that. I mean, you can try it in these first couple of rounds when it doesn't Gotta go! much and your economy's weak. But they're going to learn very quickly. I'm out of here. Not want to be running into that stun nades, stun pull combo. That's one of the main Spike threats planted. looking up. We saw them running on Pearl as well with that. Gotta go. Great composition that they were running. Out of charges. So many combo plays that they can work with. Shot by something. Go, go, go! अच्छा प्लांट इधर हुआ कि मुझे लगा पीछे मैच में प्लांट हो गया दो साउंड आ रही ना Part of the B side, one of the picks. Gotta go! One enemy remaining. Coming through! So fast and the read is so good from Mindful knowing that they wouldn't be still डिफ्यूज करना भाई कोई Placing swamp bomb grenade out. Ridiculous one. Inside the smoke. Oh, well. Placing Body sentry. Reloading. He's very diligent, watching the flank here. Picking out exactly where Devi would end up being. Oh, Miniman! He's just got his eyes off the prize. Miniman moment here. Grouped up now by Loud. They're actually sticking this together. 3 of their players. Feel in order. बेचारा मैप देखते हुए पकड़ा गया Way back up. I'm out of here. Don't let this one get messy. Go, go, go! Shocking! Shocking! I'm out of here. Devi not having any armor and being so down previous. That is. And there go the Brazilian flags. I think they're right. I don't think there's any chance here. Idiots, my ult's ready. There's the spike. Loud now have an excellent chance of being able to cook something up for the bonus right here. This composition has so many different areas that you can go towards. Yes, slow.
One enemy remaining. Ramp control, then you really get Nice Last player कर दो standing. from the cipher. But what it does excellently, Placing 30 seconds left. aggressive up onto a PaperX player, and it looks like they're going to try something. I mean, who needs to take slow ramp control if you just take it right at the beginning of the round? टीममेट को रेस लगाएगा. Fighting into Jing and Forsaken here instantly. See what PaperX can do to withhold it. Facing the Yeah, they actually 10 seconds left. Slowly, as soon as that Bomb smoke came grenade down out. from 2E's, the pull answered immediately on the other side. making sure that nobody could cross, but being in space anyway, it's about flash. They still have Last round in the half. I'm out of here. Scattered from my stuff. Super easy to do. Go, go, go! He's gonna swing it. He wanted it. Flash to get back though. Another flash that gives Go, him go, go. animation that can't seen. Takes off Jing's head. Only Divide left here alone. Let's start this party. Decoy. To the corner, one out, still Divide into the ropes. Grenade. Oh. Gotta go! Watch out! Gotta go! Slow! I'm out of here! Doug, we're talking about the difference in pace of these two teams when they're on their attack side. This is a very slow round. Out of charges! We've got 30 seconds. That doesn't seem to be a threat. One enemy remaining. I'm almost ready! Here we go! Shocking! Use this one, stun. Flawless. This way! Switching sides. स्पोर्ट्स में जो फिनिक्स नहीं खेलता खेलते हैं ना पॉल पे जिंग फिनिक्स खेलता है. Usual position for him to be playing. Go, go, go! Close plan looks fairly solid. Sada Gotta go! will now realize he has an excellent timing. Do it having again. heard the drop. Yeah, he hears the ropes. He's just being broken by something, doesn't he? Go, go, go! Yeah, we'll look at it again. Discipline being showcased by Loud. High-low crouch setup. Elbow. Now, Go away! bit of a team flash, actually. Forsaken. Smart move! Job that's playing the two. This way! Gonna try and play way too many fights. Take this! Gotta go! Loud. This is one of the major strengths they have. They were playing against Fnatic the other day. One enemy remaining. एम्पलीफाइड डबल डैमेज पड़ता है कुछ तो. I thought we'd see something explosive, some fast round control, utilizing that double initiator setup. फ्लैश ही नहीं होगा वो. Instead, it was slow, and it was baiting PaperX. उसने प्लांट उधर किया है वैसे जल्दी जाओ. They didn't get good. तीसरा राउंड लेगी लाउड. अच्छा लाउड जीतनी चाहिए भाई. अपने तीसरा मैप देखेंगे और तीसरा मैप पर लेके यार. Loud punished them for it. Attackers win. Something sneaks forward off the back of it, trying to step in front of these. So far forwards, actually. Boom bot, no way. Sound cues were made, yeah. Either spotted or heard. But they know in the back of their minds. Easy kill. चलो आओ स्ट्रीम पे मैच देखते हैं. And look at this pace. Loud, so Bye bye. slow and diligent, clearing out all of these positions and waiting to try and play a punish game much more than going fast. बिल्लो नहा कर आ गया क्या? This is actually how Lotus began with Loud's attack side, if you think about it. Trying to punish the pistol round aggression, seeing if they could find early fights, and force PaperX into making the mistakes. And then it all got wrapped up into chaos. इनको मैं अल्ट कर दिया है. With the stinger, not enough to really do much. बेचारा. Takes a ton of damage in the process, just trying to leave and evacuate. Drop down. Saken and Jing. Surely they hear that. Nade rebounding, shots fired, damage done, and a kill collected. एक किल तो और बनता है 4 सेकंड की तरफ से. Firmly. 4-0 start is exactly what Loud have been looking for. And so far, the game plan looks really good. Especially when you see what PaperX is doing around the map, something trying to take fights in mid aggressively. Whenever they can, no matter what the buy is, the re-clears through Garage, the way in which they want to face a main aggressively on defense. There are a lot of places around the map where PaperX are trying to force fights instead of allowing it to come to them. And Loud are reading into that and punishing them for it. I think this timeout here, while it might seem a little early for Alex to be calling it, does make sense. Usually you can't get that much of a read off आया कुछ खाने का लेके आ रहा हूँ. because तब तक देखो मैच. it's just kind of buffered by a couple of ecos. Don't mean too much.
It's easier for us to get the read from out here where we can see the full mini-map, all of the different perspectives, but this gives you some kind of idea that Coach Alex wants to make an adjustment in terms of how they're playing the defense. And I think they will end up being a little more passive once something gets his operator online. Seeing this timeout, wouldn't be surprised if Loud do just decide to increase the tempo. It's been slow going at the beginning of most of these rounds. Now, perfect way to condition and lull your opponent. Certainly. If Alex is going to make an adjustment to sit back a little deeper into the site, maybe Loud are going to be able to play quick and get onto an anchored player really early on. They'll also be keeping track of the economy and know that it is possible for something to have this op. But there are many different lanes around Split where he could be playing it. Doing this against Aspas himself as well. Guy, some masterclass performance often. He's been playing the Jet in the past on this map, and what a way to deal with it. The damage was done. That was actually a leg shot with a no-scope. That's ridiculous, though. Something is in such an unusual spot there, and the stun comes through immediately into his swings. I mean, that is not them trying to hold counter utility and waiting for some kind of cue. That is them immediately trying to punish on पिछले स्पाइक रश से नए लोग आए थे बिना सब्सक्राइब किए भाग गए सारे. Let's see if we can catch something with his operator immediately trying to pick on one of the extremities. It works a treat. They played that so well. अच्छा ऑफ नहीं दिया, ऑफ डाउन कर दिया. Have his head in his hands here because they've just come out of a timeout. One of the most, useful pieces of tools he has to be able to communicate with the rest of the team. Mind freak going for a re-exploration. This is so risky. You're up against the double initiator lockdown in your face. Do you really try and take a peek timing off of this? Oh, it's all sloppy. over the place. Oh, it's sloppy, and Sadak just cleans them up. Yeah, there's just no idea or identity behind what they want to do. Free plan offered. Jing. This is a full investment with the rifles here. PaperX have to do what they hate the most, really. Saving, backing away from a fight. Divine, Jing, and Spawn need these guns. Yeah, they gotta hold them. And while that's a good kill, it does give away their positioning. This is Loud now gonna be with 5 rounds, no matter what. I'd like to see Sadak send it here. Maybe even Aspas as well. I mean, maybe they just don't think the Divine Jing are gonna still be holding in this spot, but that makes a lot of sense. Take a look at the replay as well, man. It is just ridiculous. Something's positioned on top of the box too. Insane. What a situation to open. डैमेज एम्पलीफायर को सिर्फ स्पाइक रश में आता है, उस पे ज़्यादा ध्यान मत दो. Perfectly here. डबल डैमेज पड़ता है शायद उस पे. And the desk got a lot of doubts about this map. And the one coming up after this, Pearl potentially. If Loud are indeed able to take this one away. Caution here. Because Loud have looked a little shaky here. They got absolutely dumpstered by DRX on this map. And their ideas have been... भाई स्ट्रीम कौन-कौन देख रहे हैं बात चैट में मैसेज हो जाएगा. Oh yeah. सब वल्नरेबल है, शायद ऐसा कुछ ही है. You wanted to see the Loud players hunting out a couple of these kills. They are very close to some of these critical ultimates. Something's going to try and play for the orb here off the back of the Trailblazer, it looks like, to get his Blade Storm online. I mean, didn't spot less, but I mean, the Nana Swarms देख रहे हैं. Viewer check कौन-कौन है भाई बताओ. Blade Storm earned. On the other side of the map, though, Sadak might be able to play for this one, and then they have a Rolling Thunder to get into B. Loud have been putting a serious emphasis on B main control, because that's where their composition thrives. It doesn't thrive over towards A ramp, as the desk was discussing. In a corner, surely you get cleared out here. Nade. They're not even going for the breach up. Back here, yeah, not going for it. That's a really lovely timing on the pull. And it's PaperX to collapse under the choke. One enemy remaining. Everybody falling, 2 years included. So, first round on the board here for PaperX. A necessary answer back. Couldn't really tell you why Loud don't go for the ultimates in that kind of situation. You know, they're one away from being able to get the breach out online, the Cosmic Divide as well. Those could have been enormous tools for stopping these players in their crossfire spots. Maybe trying to bank on the fact that their timing was a little more obfuscated, but Loud failing to convert that ult advantage. Now gives PaperX a chance to solidify their economy. This fight happening over A main early on. Something was trying to get aggressive in this spot before. Spotted out. And here's the breach shot finally. Collection onto the 2 players. But will there be kills following up? After it, yes, there will. The utility is magnificent. Fantastic. Showstopper denied. Earning it with just the 1 kill here, but shut down. Cosmic Divide used
drop down, close to the corner. It's another hand nade. Aspas has heard them. Forcing them back and away. Showstopper still close to the corner. Vulnerable's there, now being forced out of him. Into the side though, something! Over the transfer. Just for the one, Mind Freak. Consistency in bounds. But Sadak also there to reply. Divine out. If Divine gets the kill, his pit could make this a winnable round. It's a 1v2. Less spiraling. Yep. Just holding close to the corner. And no angles given. No sight lines. Turret spotting him out. Divide. So much to play for there, but an impossibility. So Loud take their ults and end up using them in the next to excellence. The pre-shot catching those players that were further forward. Cosmic Divide as well, just creating a little pocket, which Aspas knew they were in. He still got punished for it. He didn't quite think to check. तारक भाई तो अच्छा खेल रहे हैं आज. Watch for something, but भाई मस्त है इनका कोच तुरंत क्लच जाता है भाई. Loud were so ready to collapse. The punish has just been excellent from Loud, almost impeccable, almost perfection. Something's going to try and take a pick over towards A-Ramp. कितनी बीटी होती होगी भाई ऐसे टीम को कोच करने में. साला कुछ भरोसा ही नहीं है, कुछ भी करते हैं. और इस टीम में खेलना कितना मुश्किल है भाई. तुमको लग रहा होगा ये राउंड तो जीत गए अब और वो राउंड थ्रो कर देते हैं. Still crossed up though. Something did not intend for that one. Just received the kill. And Les was going for the swing, trying to Mumbai server dash. there for beefing the movement, couldn't quite manage it. This is one of those honestly rare situations in which PaperX have been able to generate the advantage early on. They're 6-1 down, but upper player in this round with a pit in mid, controlling most of the map. The only weakness currently looks like PRX जो आ रही है पता है ना सेज नहीं दिया. मिड बॉल ही नहीं कर रहे भाई सेज, लेकिन मिड बॉल तो करनी पड़ेगी ना यार. coming over with his Seekers just to give him a little bit of peace of mind. Seekers getting caught ever so slightly. But it still tells you that Loud are playing spread with 30 seconds. It does, yeah. It does, definitely. It's going to be so tough for Loud to get into a winning position here, but they are grouping up over towards B. 30 seconds left. Les has done enough there, I think, making noise. Flashed in connect, though, actually, that's re-cleared, and immediately going to see that rotation from Forsaken. Pushing forwards, Defy out of the pit, and yeah, none the wiser from Les. Just trying to regroup with the rest of his team, but it's given him exactly the information he needs. Mindfree caught into the corner, this pull down. Satchels abound, and you're gonna win these gun duels out, but it's all out. 5 seconds. It's up to the final few seconds. You're gonna try and stick this one close to the corner. Forsaken denies it. Oh my. 5 HP off the initial jump spot. Took 3 Vandal body shots, down to 5 health with his light armor, and that ends up making a lot of the difference. Loud fans watching the game for now. No 7-1 in sight. That was avoided. Is that some kind of curse if it's the other way around, is it? Well, not quite a curse, mate, but I won't go there. I mean, it wasn't I won't go there. It wasn't them that were up that time. That's true. That is true. Something playing with the operator over towards mid. They had the pit there previously, trying to deny Loud that space. Does seem like a good idea. Force them into going for the burst execs. Oh, and something going for a risky peek through the smoke. That is now going to tell Loud that they can take mid control fairly easily, freely, without using that. SK Rossi इंडिया का ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का प्लेयर है भाई. All the way through, man. I mean, मतलब वो अकेला इंडियन प्लेयर है जो अभी खेल रहा है VCT. Further, no, it doesn't look like it. But PaperX are re-clearing both sides of the map at once, and I think that's a little dangerous here. Something knows there's nobody over towards A, which means there should be people on B. Yeah. So you can't really play into that main angle anymore. There's no safety there. Mindfree inside of his own smoke. In a tremendous world of hurt, unless he can get the bailout from the rest of his team now. Starting to flood back into this one. 50 seconds here. Satchel across and over. Aspas just faking with the movement. There's a shorty in your hand, something, but still, with the rifle fire, it's contained and shut down. Les still here, and it's brought into a 1v1. Timing granted. That's unreal. इसकी भी 200 अरे वो खेलता था उसको 1000 की वॉचिंग आती है. 1000-1500 ऐसी आती है. 14-3. Every time he's challenged, every time he's asked a question of, he answers, he delivers. It's just been absurd. He's been the MVP for them in previous tournaments too. Looked like the best player whenever he has moments like this.
But at this point, वॉच पार्टी कर रहा है शायद इसलिए कम आ रही है अभी, वरना वो जब खेलता है तो 1000 की वॉचिंग आती है. performances from Loud that haunted them in Tokyo and at the beginning against DRX, they look to have been completely banished. The form is right back there with the best times that we've seen Loud. Something's desperate to try and make anything happen over towards Garage. PaperX are so heavy, pushing out the extremities on defense. They're getting all of this information towards A. है कौन कंटेंट क्रिएटर? मतलब But they can't convert it into good position. कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, प्रोफेशनल प्लेयर है. Les fires a shot off, so I can't believe you would want to contest Les. It's absurd. 14-3, yet still set the sights into mid. They spot out something. Okay, clear it out just in case they push through into sewers. Lovely diligence there with a flash. But surely that should be a bit of recognition now from PaperX. The ultimates are awesome here from Loud. I mean, it's going to be very difficult for PaperX to do anything about it. If Jing grabs a kill, the showstopper would be a massive tool and Something's fighting this. He's looking to try and contest. There's 2 seconds remaining. There's 2 seconds remaining. Standing his ground. Can't get it off really there with the updraft. Okay. Brought down eventually, and they're just trying to help him out. Flooding Less भाई. Less is more. Less तो भाई. That is ridiculous. We see those kind of plays frequently at this point. People trying to और खेल रहे हैं हाँ वो कंटेंट क्रिएटर see है. if they can grab a couple of kills as these players are getting into the site off the back of it, and then the rest of the retakers use that player as bait. But here, both teams understood that so well. The rest of PaperX are coming in there trying to use the distraction of something, and everybody on Loud is just waiting for it, holding those avenues towards heaven and spawn. Absolute destruction that we are witnessing here on Split. Fast rocket play here. This is PaperX. 2 rounds left. They got the ult to try and make a go of this one here, but not really the money, and there's no one home. There's no one home at all. Jing loves to make this play. We've seen PaperX do it so often. That is a hard read from Loud. An instantaneous reaction. लेस अगेन लेस के 4 और भोबी के पिछले राउंड ही अल्ट किए उसने. The feet got a respect to back away, but there's so much damage being done here. Heaven control given away. Flipped over to the side here. Satchels breaks the crosshair placement. There's no clean fight for something. Divide locked into the corner, and he will not be able to anchor. एल्बम सुनी और लेकिन नहीं यार. PaperX. On Lotus, Loud felt like they were in control of the first half, but PaperX was still finding their moments. The thrifties, they won the pistol round, they were getting into it, and they bought enough time for a massive 1v4 from something to take him from -4 to +11 and get that star player back into the game. I feel like here, we're in a similar kind of situation where Loud are in control strategically. Their coordination is all excellent too. And yet PaperX are not finding the magic. They're not getting those big moments. Instead, Loud are punishing them. And we're seeing एक तो खाएगा भाई. absolutely dominant half. PaperX is double duelist. यूटोपिया भी नहीं सुनी भाई. Attack side, but you still need to generate some rounds here on defense. Yeah. You got to have something. You got to get something going. In both senses. Exactly. अरे वो उसने पता है फार्मूला 1 वाले मतलब अल्फा रोमियो के साथ क्यों उसने कोलैबोरेट किया, क्योंकि केट तो कोई तो ब्रांड है उसके साथ दोनों कोलैबोरेटेड हैं, तो उस ब्रांड का वो कोलैबोरेशन ऐसा कुछ तो है. Watching for any kind of aggression. And PaperX is sitting back just a tad. Double updraft committed with the Blade Storm. They have not been spotting anybody over towards A in almost all of these rounds, except when Jing had his showstopper. Les is playing so passively in that angle. लाउड तो एकदम रीड कर रही है भाई. अच्छा है, तो लास्ट मैप देखेंगे ना, बढ़िया है. इनका मैप वो जीत के उनका मैप ये जीत जाएंगे. अब 9-2 तो है, 10-2 कर दो भाई. 9-3 कर दिया ना तो कमबैक का चांस दे दोगे भाई. ये राउंड निकाल लेना. लाउड तुम्हारी बुंड मारेंगे, वरना वो जिंग और समथिंग दोनों अटैक में तो भाई तुम्हारे बुंड के सामने आ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा तुम्हें. 9-3 कर दिया और पिस्टल राउंड दे दिया ना भाई, तो लाउड के लौड़ लगने वाले हैं फिर तो. स्प्लिट पर PRX को रोकने का कमांड है. तो भाई लाउड के सामने जो कमबैक किया उसका भी तो कमांड है PRX को. ओ भाई हर्ष खेल रहे हो गया तो भाई ये तो धप्पा कर रहे थे भाई.
मुंह तो गया तो फ्रेश पे 2 मिनट। हाँ हाँ आओ आओ, ये भी राउंड गया। चलो 10-2 हो गया। चलो अच्छा है, तीसरा मैम देखेंगे। स्प्लिट में क्या खेलते हैं लोग? समथिंग खेलता है। ओ वो खेलेंगे फिनिक्स और जेट। भाई लेस के आसपास मत आओ यार, आज नहीं है भाई। Another 3-piece in a round to set it all up for a 10-2 finish. And the star of the show is absolutely less. They're calling a beautiful attack side. 21-4 का हाफ गया इसका। 21-4 भाई वो बंदा अटैक खेल रहा है किलजॉय के साथ। Les is taking all of the safe duels here and then winning post-bound fights. It's just too easy for this guy. It really is. टक्कर देखी थी। 10-2 at the half. PaperX to pull up. So stupid. Possible margins in terms of getting back into this one. Well, we heard from Aspas earlier heading into this series about what he thought about the expectations. चलो भाई लास्ट मैप आसपास भी जेट खेलेगा, ये भी जेट खेलेगा। देखते कौन जेट डिप करता है। E agora a gente conseguiu acertar as contas, agora tá 1-1. Sim, eu já tava preparado para ter essa revanche contra eles. Não, eu achava que seria um 2-1 bem apertado, acabou que foi um 2-0 com o primeiro mapa muito apertado e o segundo mapa foi um placar um pouquinho mais elástico. इंग्लिश बोल ले बहन के लौड़े। Acho que sim, a gente agora ऐसे वाला 1 2 3 साला Madrid। não tá aí mais no तू कौन चेहरा देखने वाला है मुंह धोने के लिए? अरे वो फ्रेशनेस के लिए नींद सी आ रही होगी ना उसको। A gente faz diferente da Loud do ano passado é o fato que a gente testa mais comps, a gente usa mais comps em mapas diferentes. Já no passado com a outra Loud a gente usava mais só as comps padrões mesmo. Com essa daqui a gente tá testando bastante comps. They got to get a move on here. Now Flash is magnificent. Leo with the most to do, but this is it. It's curtains for map 1. Loud fully in control, not a chance. लेस का एम खतरनाक है भाई। And Loud know it, they can feel it. Eu acho que jogar contra o Something vai ser muito legal, porque ele é um jogador que tem muita mira mesmo. É sempre interessante ver o estilo de jogo dele, que é um estilo de jogo mais focado em mira, porque ele abre e te dá na cara, então vai ser legal jogar contra ele. Grande amigo do Jing e queria muito jogar contra vocês, então finalmente, espero que a gente tenha uma boa partida. Forward to this matchup as well against this, duelist opposition, and so far so good for him. Listen, sing the praises of Les as well, but Aspas was criticized, I think, at Tokyo as well about some of the roles that he was playing across the board, but he's always been a heavy hitter. He certainly has. I feel like the duelist matchup has not really been the story though so far on Split, and PaperX would like to turn that into a reality. डायरेक्ट को 125k की वॉचिंग आ रही है। Be able to use the initiator utility to bring this one back from the brink. Oh my goodness, PaperX all the way up into heaven. Not worried about trap plays or util. That is disgusting. I mean, let's just take it a peek angle off the turret's contact. Trying to reset it there with the aim and enough shots there. 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏 with the backstab. लेस ने क्या मारा यार उसको, वो टरेट तोड़ा था उसका, इतना सा हेड दिख रहा था, उसमें भी उससे एक ही बुलेट चलाई है। Loud winning both pistols, the first bonus, with an opportunity if they convert this round 14 for another. ये देखो। This is what it looks like when not only are you able to win the pistols and the bonuses, but you're also able to win the majority of the gun rounds too against another competition. Another team that's fighting for one of the best teams. Vamos! For one of the best teams in the world. PaperX are going to force, because of course they are. They're down 2-11. No choice but to do it. Heading into this one with the Stingers a long range, never really favored. Stuns connecting and online here. Let's find the corner. another. They still have this space as well. Damage being done towards it, close towards it. Les is just unleashed. 24-6 Eventually shut down. उसका स्कोर है लेस का 24-6. They can't really support and help it out. Still, player advantage. Aspas with the nade, plenty of util now, and you can start to see the clearance into elbow, tucking towards the back. Swinging through, Mind Freak. Definitely
being more than a nuisance, honestly, with that kill here. Forwards is the approach. निकाल देंगे भाई राउंड क्या अच्छा 1v2 हो गया आपको नहीं Play निकलता there, but here's the drop down now, but it's still a 1v2, and he's not favoured. Yeah, I want to double like that. Loud have just been impeccable with how they've been playing together in a lot of these moments. And when there is a single player, पीछे फैंटम पड़ी है ट्वीज supported heavily by the utility. I mean, with this composition, I thought it might be a bit concerning, because while the utility is excellent against the double duelist composition, you might, with the pace and the tempo that Jing and something play at, you might get caught with util in your hands. You know, Kawansi's got a flash in his hands, or Sadak's holding a stun or something. But when Les is taking भाई ये क्या डोमिनेशन चल रही है और इस टीम का मैप पिक है इस टीम ने सेलेक्ट किया है ये मैप फेल दिया भाई लाउड तो ये टूर्नामेंट में अलग लाउड हो गया है भाई पिछले में तो पिल गए थे पिछले में ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना नियॉन वियॉन खिला रहे थे बेचारे आसपास को सही किया अभी रेज और जेट रेस पे भी अब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गया आसपास लेस फेल रहा है सिंगल हैंडेडली लेस तो है ही लेस है भाई लेस इज मोर Away here, less with the jump spot. Ooh, hello. Caught wide, but no damage done. अरे थोड़ा इच्छी फील हो रहा था और मम्मी एक सीरम लाई है वो रोज मुंह धो के लगाना पड़ता है मम्मी लाई है कि किसी और ने बोला है बेबी फेस केयर रूटीन तो होना चाहिए ना आपका extremely familiar with and making PaperX look like headless chickens in a lot of these rounds. Face care, skin care. Force up as well, PaperX. I mean, it's really just a half fight coming into this, the round that they must win to keep their chances going. As fast as angle skin care routine follow करो ना. It's 2 kills, 2 is a I'll tell you what serum to apply before you go to sleep. Les doing it graciously and extravagantly more. GG. For our second map, Loud. What a bounce back. Or did anybody think after the incredible overtime and the back and forth of Lotus that we were headed to a stomp like this? It didn't even factor in for me. I didn't think there was any chance of the possibility. But Les, with 420 ACS, has just... Why 420 ACS on KJ? Life game from Les overall as well. Next map coming up is Pearl. You do not want to miss that one. We are going all the way. We'll see you just after this. इधर डबल डिजिट भी नहीं है आता हूँ पानी भर के आता हूँ इतना भी बदलाव हो कि सही में स्किन पे भी असर पड़ जाए भाई मैगी बनाता हूँ मैं तो खाऊंगा मैगी बस
पता नहीं मेरे हिस्से कितनी आएगी, पर मैं तो खाऊंगा। मुझे नहीं पता, मैंने तो बोल दिया मैं भी खाऊंगा। सीरियस स्किन केयर चल रही रिमूव भाई। भाई जिनकी बंदी होती है उनका सीरियस ही करना होता है। बेबी योर स्किन लुक्स डल। You've been going out in the sun a lot. Please take care of your skin. Babe, come on, go to bed. It's 12 already. You sleep late and then you get dark circles. I don't like it, man. Please take care of yourself. Oh my God, Priyanshu, you have these sleeping bags. When did you sleep last night? 7 a.m. That's when I woke up. I went to the gym. भाई ये बीमारियां उससे हैं, डार्क सर्कल्स इसमें दिखेंगे। मैं तो काला हूँ। ओ भाई बाहर गया ना, वो तड़का लग रहा था तो मैच फाउंड। नाक खुल गया, शुरू हो गया वापस रनी नूडल्स। मुझे स्टोर तो बढ़िया है आज का। जरा एक स्किन आ जाती नॉर्थ अमेरिका से। कहाँ हो आप? अमेरिका में ही हो ना? न्यूयॉर्क यूयॉर्क कहाँ पर हो आप? एक फैंटम की स्किन गिफ्ट हो जाती तो नेवर माइंड। स्किन की केयर तो वो करवाती थी। हम लड़के हैं ओंकार भाई, हमारा यही होता है। Stay in range of my stim beacon, and we'll mow them down. Fight. मैं हूँ अटलांटा में। मुझे तो लगना ही नहीं था। यश भाई कौन सी दिला रहे? सोवरिन गोस्ट या फैंटम? चौक दिया मैंने, मैं रेडी नहीं था। Out of here. तुम कभी खाएगी तो खा ही गए। ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर मैं नहीं खाऊं तुम चाहते ही हो तो पानी में थोड़ा सा बियर मिला दूं, आराम ज़्यादा। कॉम्प क्यों कर लूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी मैच चालू होने वाला है भाई। अरे यश भाई आप स्किन विन का बाद में बताना, आपके कौन से स्टोर से निकली? आप फैंटम दिला रहे हो कि नहीं दिला रहे, जल्दी बताओ। हाँ या ना इतना लिखो। ये लगाओ ना, स्पाइक रश लगाओ। ये क्या खेले? मजा नहीं आता।
स्पाइक रश लगा दो। हेलो ओ एटीट्यूड किंग हुक्का लवर, एक डीएनए खेल लेते साथ में। ओंकार भाई अस्त ब्रो, मैं तो अभी भी कभी कभी सोप से ही धो लेता हूँ भाई मुंह। मैं भाई हम लड़के हमारा ऐसा ही है भाई, हमारे साथ ऐसे ही होता है भाई। ग्लिच अप चाहिए जनाब को। जर्सी मंगा दी दिस वेजी डैड ने। ये बोलना मत भूल के पीछे कि पैसे तूने पे किए, मैंने ऑर्डर करी बस, मेरे वो जिस बंदे से कराता हूँ। डालो कूपन कोड वेजी डैड रेडियंट 100 मिल जाएंगी। यश भाई कहाँ गए? यश भाई हमें स्किन दिला रहे नहीं दिला रहे, तो हाँ या ना भी नहीं बोल रहे भाई, मना तो कर दो एटलीस्ट। बेरा ने कर दे लॉन्डो को जी। आज सुबह सुबह सुनना रहेगा ना, अब यही गाना सुन रहा हूँ। मैंने करी कमी ना है तभी जली पड़ी बावे लौंडे बड़ी बड़ी दागे लेती घड़ी है घुमा के गाने स्क्रीन शेयर ऑन है। बड़ी मेरी ची लगा रे विजनरी सी हैं बातें तभी तेरी छी निगाहें बम्बारी दम बिजली से भारी रंग तितली के भांति बम भोले के पुजारी राम खोले तो सुनाई अजीबाजी के जो रेडियंट भाई वेलकम। के मुझे रे घोड़े पे सवारी मेरे पैंथर दागे माइक पे है पीतल सुलगाओ रैपर रोको बनाई इधर चल बॉन्ड करियर जस्ट पीटर वांना सी सम देख मेरा शीशम हिलाने बार्स लाया तेरा भाई सीजन ब्रेव हार्ट में ब्रेंडन गीसन है फ्लाइंग प्रेशर ऑफ सीजन हम देसी ये लौंडे है बीजर फ्लावर बना देते हैं उड़ेगा ऊंचा तो सीधा हम टावर चढ़ा देंगे पे पावर लगा देंगे रे हजा करा देना से ये रैपर हमारा दिन के टिकने आगे मेरे डॉज हो गया। तो आना नहीं तेरा पर हमसे भेड़ा तो बचवा तेरे पारा देंगे। आज बहुत लेट है स्ट्रीम करने। हाँ बाहर के देखो ना, कपड़े वपड़े पहन के बैठा हूँ। कर देते हालत ऐसी सोचोगे नी सैया पे राने कर दो लौंडो को जी देते दो गोली हम जैसे होम्योपैथी सैया पे राने कर दो लौंडो को जी कर देते हालत ऐसी सोचोगे नी। क्या बोलते हैं प्रीमू, इस गाने में जो शर्ट पहन रखी पैंथर ने, वो मैंने आज पहन रखी वैसी नहीं है? अच्छा हाँ हाँ याद आया, हाँ सेम ही लग रही है। सैया पे राने कर दो लौंडो को जी देते थे दो गोली हम जैसे होम्योपैथी। नॉर्थ पे तू जाके पूछ मेरे बारे, धूत थे बिगाड़ी म्यूट थे बेचारे मेरे आगे बने कूल तो ये टूटते हैं सारे फूल में वाली हमारी बीट पे मैं करूँ खूब तानाशाही लूज योरसेल्फ एम की पुजारी क्षमता से भारी बजरंग बली रैपरों की लंका जला दी बम गोला बारी हम तालिबानी तक तपल। लेट्स गो। हेलो 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 कॉम्पी खेलेगा फ्रेंडिंग। नहीं एक मैच बचाए ना, अभी रेडिंग पे मैच देखेंगे एक और। फ्यूचर में जरूर है यश भाई। मटरिंग काम नहीं बीता दिन का ये हार्डेस्ट पर है मीठा सिरका किस चिरागी सलाह दिन का फिर हमसे ले बड़ा मिर्चा मैं नकुल हड़पू तेरा सिरसा जीते की तेजी है कैटलिसा लगानी होगा करूंगा ऐसा कि किसी ने ऐसा कुछ करा नहीं होगा बजू मैं बीटों पे ऐसे कि लगेगा जैसे मैं शराबी हो गया खरा नहीं होता इन लौंडों की ईगो के सिवा कुछ खरा नहीं होता और हूँ मैं डैम श्योर इनका पाला हम जैसों से पड़ा नहीं होगा सैया पे राने कर दूं लौंडों को जी कर देते हालत ऐसी सोचोगे नी सैया पे राने कर दो लौंडो को जी देते दो गोली हम जैसे होम्योपैथी सैया पे राने कर दो लौंडो को जी कर देते हालत ऐसी सोचोगे। बोलो कि हमारा गेम दूसरों को देखने से तो इम्प्रूव होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन जो अपने से अच्छे हैं उनके साथ खेलने से ज्यादा इम्प्रूव होता है। तो जिनके साथ मैं खेलता हूँ आयरन लॉबी में, उनका तो इम्प्रूव हो जाता है, मेरा नहीं हो पा रहा यार। बराबर बराबर बराबर। आई सी व्हाट यू डिड देयर। Spike rush. It doesn't matter what this place used to be. It's just a great job. I'm out of here. तेरा भाई गाना पेशे के बाद
No. No, nice work. No. Spike planted. Wing exit using. No, I'm not, Bosh. Enemy A. Go, go, go. Hey, manners. ये मेरे गाना सुनिए तेरे लिए गाना लगाया ये वाला तेरा भाई पैंथर what's up let's go Dizzy's up. यूपी वाले जब लौंडे आए असल हो से दिवाली मनाए साले का हील करना तुम हाँ उधर आ रहा हूँ हील कर पीछे नहीं स्टेज आराम जादे भूलो ना हमरे विधायक है चच्चा इतना पेलेंगे बनोगे बच्चा अपनी कमाई का है गांव में बंगला बाहर के गमले में थूकेंगे कमला आतंकवादियों की फटती है थैंक यू और फिर भी पूछते हो कहाँ से हैं तो सुनो यूपी से 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 रुक जा भाई और छोटू भाग गया यूपी से 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 और कितनी बार बताएं बे देहाती शक्ल देहाती अकल पास हुए पेपरों में One enemy remaining. दखल तो करेंगे कत्ल कहना गवारों से हमारी शक्ल हाँ Last player standing. मन अंग्रेजी नहीं आती हाँ अम्मा बहनी गरी हती पर मैंने तो पूरिया चांदी उठाती Last round before the split. दिल है ये भी बताना पड़ेगा क्या They mess with all of us. यूपी से यूपी से यूपी से बे यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से बे यूपी से कितनी बार कहें तुमसे यूपी से यूपी से यूपी से बे यूपी से यूपी से यूपी से भाई तू कमबैक अच्छे नहीं मार पा रहा भाई रहने दे भाई 2 किल है तुम्हारे यार क्या बोल रही हो अब इसमें भी किल गिनाएगा क्या भाई डायमंड आप तो बात Anyway, he's pushed off the ankle. There's no way they're anticipating this. Enemy spotted A. From it, and it does, but he's going to get stuck. Dizzy's up top. Somebody's there. Too late. No, you little homie. This guy. Spike planted. Crash got a hit. 19 health. Forsaken trying to open up some space on the side. One enemy remaining. That's a big miss from Forsaken. Trying to create. Forsaken individually did not do too well on split. Maybe feeling the after effects of something like that. Hey, nice work. Hero operator from Aspas, and not even playing it in a position where he's half committed. They will cover. It's mad, but they're in a 5v2. My bad. Last player standing. Clutch. ये क्या बाइक है आसपास में ऑफ लिए बाकी चारों ने पिस्टल और राउंड भी निकाल दिया Switching sides. Wonderful. Could find some kind of opening. Look at me. It really Wonderful. does feel like it. Yes. Watching out towards sewers. No help needed. He's going to be running all the way down. It has to be a save at this point. But I just cannot believe the sheer insanity of Aspas buying the hero operator. Bladestorm online as well. Economy swings drastically in opposite direction. You see teams go for the bombers round up a lot. They're not too worried about losing it because normally you're getting close to getting your Bladestorm online, something like that. Let's go. One enemy remaining. In order to not ruin this team's economy. I guess he's not too worried about giving something an op on the attack side. कहाँ जा रहा है That's spike, Wings. My advice? Incredible. Don't get shot. The call.
Be quiet. Now he's going to look to get posted up towards B with the breach utility, and we see finally this big clash in A main. Loud not going to be able to fight for this one as heavily though, because the stun isn't there. All of the flashes all combined as well, posturing them away from the angle. Aspasto's reloading information about the middle portion of this round. Enemy spotted me. Please drop the kill. Get out of my way! This really does feel like a whole lot One enemy remaining. Monster on the loose! PaperX looking like they've overcooked. You had it coming. Reloading. Played out towards the backside of pit. There's a lot of spam damage, but no kills, real connection. Match happening. point. Yo, we are so close. Plan granted and gained. That's fast. Not On here. Trying to make a play for it happening. Still, curveballs. Hey, nice work. Right in their face and wide. Jing with the reposition. Now taking his timing for himself. Dream big, make it happen. It was impossible really for Loud at this point. They don't have Up and away. control of main. Smoke crossed up though. Big man's gonna plant spike. All sorts of kills, but a rifle for Jing. Nice pick. Doesn't get it. Started for an attack. Spike planted. Thanks, One Singh. enemy Rush is remaining. ready. And he is brought down just in time. That is a mad round again. Saw you, little homie. Mad round once again. It feels like PaperX get themselves into really good Fresh got him. and we saw this actually on Split a couple of times, Lotus a couple of times too. The way in which Loud are able to double face from high-low setups on the fly. Attackers win. Is one of the most impressive factors. Along This with is who I was made. Legends winning duels everywhere. But the team play, the way in which Loud are facing on these retakes, holding, you know, भाई killers गया है तो. 3 of them posted up in A main, ready to punish. बे इसका बीपी हाई नहीं होता होगा भाई. तू पीआर ऐसा कोच है भाई, तेरा यही हाल होना है. This time, the stun is there, the suck not used. Loud choosing not to commit too heavily. वैसे ये बात तो तुम मुझे ही बोल सकती है भाई. तुम क्यों प्लेस, तुम तो मुंबई शहरों में खेलते हो. मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए. Slow it down. Not just yet. Alarm bot broken. Side divided enough that they can potentially go for the plan here. Bit of a tap as well. Pull after shot. Knife into the corner. Sadak getting cheeky with it. Body blocked the nanoswarm actually. Still planted down here. Bit of friendly fire. Bit of damage being done to the device. Still भाई साडक में balls तो हैं. Scatters through. And the bullets finding their mark and more here. The complete collapse of PaperX. That is absolutely unbelievable pressure applied from Loud. I know there's an economy advantage, but frankly, the guns didn't even make the difference. It's the utility coming through. There's a nanoswarm at default, so they know they can't plan. Aftershock stops them from pushing the right side of default from defender's perspective. Another nanoswarm was about to be committed on the other side, and then Les decided to use it to clear out the corner. Nightfall pushes them back. Op is there. Nanoswarm in the corner picks off another. There's just constant pressure being applied at all times to these PaperX players. This is what you get. It feels too easy. Yeah, when you play against a team like Loud, when they come into their own form, right? Heading into this tournament, the rumours about their death greatly exaggerated before we're heading even into the tournament. That is so true. And yet still, their opening game, they look like they're in the same. Ball in an attacker-sided map. Now maybe we're going to look back and look at the match later on, and DRX are going to absolutely blow everybody out of the water from here on out. But attacker map है पर ये तो defense में मार रहे हैं भाई. this tournament, and it feels like they have. मैंने पहली बार भूल गया किसी मैप के लिए. You think back to last year, they are the defending champions. They lifted Champions Trophy in 2022, but the way in which they did it, they bombed out in Copenhagen. And yet we're then able to go on the run towards the end of the year. It's the exact same story. Finals in the first tournament, bomb out of the second, making a run towards the trophy in the third. We're getting lazy with the writing. It's plot armor. And Loud have taken down everyone's tournament favorites Fnatic on the way to this spot. And after, I think, feeling like they got robbed on Lotus, have just come out with fire and fury here on Split and Pearl. This is it. Yeah. PaperX. Got to put a stop to this now with all this momentum on the side of Loud.
Drop down into mid. There is those weaknesses into mid as well. You know, you don't have the util. It's going to be watching. I definitely agree. I feel like Sadak and B-Link are big weaknesses for the way that the Loud defensive setup works. Spotted one player, but yeah, they had to give up control of mid as a result of this Sadak. This is very reminiscent of overtime on Lotus. Alex takes a timeout and they go for a contact push. Will Loud read into it? So much danger now, especially with that Prowler getting broken. 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏's going to be aware. He's making a call for it. Still got Aspas holding down that one angle straight down to B. Long angle. Flash wasn't there. Seekers all the way up here. Shot fired. Rattle something inside of the smoke. Just barely an edge. A glimmer. A pixel legged into it. Damage is being more than done. The kills are collected. A corral, but he can't get out of there with the movement. It's a nice stun from Sadak, but he ends up getting caught there. And it's a 2v3. Smoke's fading. Plant. Forsaken is so committed. He had a lockdown. If he was able to escape, might have been able to play for that one. Instead, he's the lone player towards back halls, unless they're still watching. They have a star for a pull on the spike. Mindfreak's in a great spot, miles away. It does feel like Loud. Surely they don't do this. Surely not. Forsaken. Good duel to win Divide. Swinging through. Timeout liya, let's go. Right through, through the smoke. Second round though for PaperX. And another nice one coming out the back of a timeout. These tactical timeouts are working. Alex is getting some good value off the rounds that they're calling once they can take a moment and pause. Yeah. Forsaken on the pinch back through. Being able to have outsized impact and avoid getting caught in back halls. The timing between him and Divide, pretty excellent on that. But PaperX is still on the back foot here. And something's pulling out the attack side operator. And that one back. Picked it up. The corpse of Aspas, but he's also reinvested one of his own in his hands. This time, looks like this is the way they want to try and plug up the gap in mid for those contact pushes. Just slap Aspas on there with an operator. That makes sense. I don't think PaperX are going to contact into this spot though, having done that in the previous round. Oh yeah, Nanoswarm is very nice. Pushing them all the way. Sadak. Good timing with the stun. The Nanoswarm lineup and Jing's Molly landing at the same time to clear out corners where the flash wouldn't connect. It's excellent from PaperX. One of the reasons why they've been 3-0 on Pearl here. Chance for Aspas. Jump spot. They're worried about him. Just the narrowest jump spot as well. Yeah. Trying not to give even a finger away to Aspas. We've seen it. Does he hit the shot? Flash waiting for the very final moment. Dead, but he's tucked to the corner now. The rest of PaperX starting to make their moves over towards B long, but time is starting to run pretty short here. 35 seconds left. Tucked to the corner. With the ultimate, running it back into their faces, colliding and collapsing. 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏 cannot withstand it. The ult's taken out, but another shot missed and wide. Lockdown. Really putting the pressure in the heat. Turned all the way up. Aspas with an opportunity to do something absolutely incredible. Coverage is there, but something might just be a little bit better. Time though, still burning off the clock with one player left. 𝘼𝘽𝙗 is taken out. PaperX have found something that's working for them. These B splits, or even in that situation, sending everybody down B main. Getting themselves in spots where the ultimates can end up doing the work. The entry off the Trailblazer is also fabulous. And it pushes them into such deep post-plan positions, you know, puts the pressure on Aspas and Sadak with the lockdown in backside. PaperX used a lot there, a huge amount. Oh, मैच नहीं जीत गए भाई. Keeping the attack side on, running up into their faces, stun on the Prowler, an attempt to catch onto the. वापस पूरा वापस आसपास भाई पूरा वापस. चलो उल्टी गाड़ी. Good read by PaperX once more, realizing that, okay, with that amount of emphasis being placed by Loud over towards B main, it can start to, again, contact lurk the way into mid. And now Aspas and 𝘼𝘽𝙁𝙎 are going to go for this repeat. Oh, it's mistimed. Yeah, I think that was a flash as well from Sadak. Yeah, just a team flash. Yeah. Lambot broken, they've already taken up that ground, all the way pushed up through. I mean, not watching for it, not worried about it. Curveball around the side, flash, no connection here. Still, it is a really precarious spot for these Loud players to be into. How would they deal with it? How would they handle it? Forsaken. Expect तो करेंगे एक और. Up to the corner now. Nice, he is spotted. अरे पीछे जाना 4 सेकंड वो कोई पोजीशन है होल्ड करने की. 2 प्लेयर था.
आसपास में तो बुंड मार दी। This ऑफ was भी another दे आया। round actually where PaperX got themselves in a position to win though, and then they just fumbled the bag. I mean, they completely caught Loud off guard in terms of that push into spawn. And if they tried to consolidate their आसपास position 14 out, किल। they would have been in more of a जेट winning डिप spot. करूंगा बोल रहा था But because their आसपास को। ideas have to be so unorthodox, and they're constantly improvising on the fly and calling audibles, things are getting too chaotic and too scrappy to find those moments to return to sanity. रैंक मैच की तरह हो गया भाई ये तो। That brilliance, yeah, it's the rock steady आसपास the jetter। letting the chaos take over. आसपास jet is jetting the way how jet should jet, and some things jet isn't. 14 kills right now, looking for even more. There's the dash. Knows that they're trying to poke themselves up onto the angle, but never declare it. If you walk up onto him, he will rip your head straight off. And the timing is excellent right before Art got मैं होता ना अभी पेपर है PaperX कोच are getting into a nice बुंड position मार with देता ace भाई play. अलग से। But Aspas and Cowanzine holding hands, looking to hold strong. Updraft into the side there eventually. A connection with the blades finally with Aspas falling. A chance potentially there. Sadak, yeah, I mean counter spam. We got this boys tonight. Sadak ult कर दे। पछताएगा जब लेट करेगा तो हाँ। Using the ult, was there that connection? Did it? I think it did. Tag, yep, stun. Pushing them away here, but still with 50 seconds left. So he might even just call as well, a bit of a rotate wrap around. But Nice turret. Forsaken committing to this one. Something has to try and hold on to this one. One knife left. No longer. The flank around the back. हाँ सही है प्रेशर करो फ्लैंक आ रहा है प्रेशर माइंड पिक थोड़ा जल्दी बोट डग आउट समथिंग जेट इज ऑल्सो जेटिंग क्लासिक पीआरएक्स मोमेंट 30 एचपी ये राउंड जीत गए चलो लॉल lol dude let's go something's jet is also jetting let's go हाँ फिर ऑफ ले ली फिर अगले राउंड में वापस दे देना उसको अब हक देना अब आसपास ने इंस्टेंटली ऑफ बाय करिए 2 सेकंड का भी वेट नहीं किया है जल्दी लिख दिस टंग इतना बुरा था खुद ही भूल गया क्या बोलना था जेट के बारे में नहीं बराबर बोला वो It's been a delight so far. Galvanizing. Difference in the defensive setup. Alarm bot put over towards B link, so that means nobody has to watch there. PaperX are countered if they try and go for some kind of contact play in that area. Broken for something, still locking down his angle at the same time. अबे कितना सही होगा अगर कोई समथिंग के लिए प्राउलर वेट कर दे तो बस बॉडी दिखा दे उस प्राउलर को पीछे आ जाए बस वो प्राउलर खींचता चला जाएगा उसकी तरफ समथिंग को शॉट मिल जाएगा एक पैडक साला हराम ज्यादा शॉटगन निकालता है ना जब भी तो पूरा राउंड ही निकालता है फिर ये शॉटगन नहीं निकालता है पूरा राउंड निकालता है फिर Something was there with the shorty play. Still, players moving up now from Art, trying to link themselves together. Do they know 2 years is back here? Chance to deny, poking out wide into the corner. Everybody. Something jet is also jetting. Let's go. आसपास भाई सेव कर लो. अरे कहाँ जा रहे हो? Forsaken operator लिए मतलब वेजी की तरह नहीं कर लोगे भाई. रुक जाओ शांति रखो. ये क्रॉस करे और इसका टर्रेट एक्टिवेट हो जाए मजा आ जाएगा. जल्दी पढ़ भी लिया था. Regretting. बहुत बढ़िया समथिंग भाई बहुत बढ़िया ऑफ दिया है अपनी बुंड में Has big economic damage but at the same time we're headed towards the end of this first half and PaperX have the cash to be able to work with. I'm just in disbelief at how they've managed to bring this even. But at the same time, Brent, PaperX have actually been excellent ever since like round, I'm not exactly sure what it was, like round 5 or something, of being able to take map control. They're actually just taking huge amounts of map control at the start of all of these rounds. Yeah, Loud are not fighting over A main control particularly. They're not doing that stun suck combo that we were talking about. And they're also, PaperX, being able to bully their way through mid. You know, they have so many tools to be able to take this map control early on. And Loud are just giving it to them. And that means that PaperX are getting splits into B and splits into A whenever they like.
That's one of the 7.5 तो चाहिए PRX. see PaperX versus EDG, for example, having just massive team fights over A main control at the start. Because if you पर यार आसपास को कुछ ज़्यादा ही kills मिल गए यार. जेट डिप तो आसपास के फेवर में जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे. भले ही PRX मैच जीत जाए, पर हमें क्या जेट डिप करते रहो, हमें तो मैच जीतने का मतलब है भाई. हम किल्स के लिए थोड़ी खेलते हैं भाई. तू खेलते रहे किल्स के लिए. लॉलीवुड जो कह रहा था फिनिक्स नहीं खेलते, लो फिर देख लिया फिनिक्स. हाँ मैंने बोला था कि फिनिक्स खेलती PRX इस मैप पे, और वो भी सिर्फ यही टीम खेल रही है और कोई टीम नहीं खेल रही फिनिक्स, क्योंकि मोस्टली सब टीम सिंगल डुएल जाते हैं और इस पे सिंगल डुएल तो जेट खेलना ही पड़ता है. अच्छा हुआ, अच्छा हुआ. ए हक दिया. स्मोक का वेट कर रहे भाई. स्मोक आने दो मेरी जान. इसमें लोग केओ भी बहुत खेलते हैं. हाँ मतलब एक स्काई ले लो और दूसरा तुमको जो भी इनिशिएटर लेना है ले लो. स्काई या फेड में से एक तो चाहिए. Really all on Forsaken, and they're just trying to play up close as well, trying to hit these shots here. It's going wide with the Guardian spam and the spray down. Lockdown has to be brought down on top of it, spray through. गया. समथिंग तो मरेगा. ओह बच गया. ओह व्हाट द फक. ये W राउंड बहुत सही राउंड. आसपास भाई नहीं हो रही ऑफ, भाई नहीं हो पर. लेट्स गो. ऑफ ले ली मैच, मजा आ गया. पैसा तो है. डबल इनिशिएटर में जो भी कॉम्बो बनाना बना सकते हो यार प्रीमो. जैसे इन्होंने स्काई नहीं लिया, इन्होंने स्काई लिया इन्होंने, लेकिन फेड और ब्रीच ले लिया. तो तुम स्काई केओ ले लो, फेड केओ ले लो, सभी कर सकते हो. ब्रीच फेड ले लो, स्काई ब्रीच भी ले सकते हो, पर स्काई और ब्रीच दोनों ले. हाँ देखो, अरे वो क्या होती थी पूरी लाइन यार. धीमहि दियो यो ना प्रचोदयात्. भूल गया यार मैं, है ना. स्काई और ब्रीच दोनों इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि ब्रीच पे फ्लैश है तो स्काई के फ्लैश की जरूरत नहीं है. और फेड, अगर अच्छा फेड है ना तुम्हारी टीम में, तुम्हें बहुत सही पिक्स मिलेंगे अगर रैंक में भी खेल रहे हो तो. अब क्या, अब तो नहीं खेलना है मैप. नहीं, किसी और मैप में भी हो तो बता रहा हूँ कि इनिशिएटर का कॉम्बो इस तरीके से बनता है. ये क्या ना Aspas to peek off. Sound cues or something. I mean, lockdown. This corner, you cannot withstand this. Aspas, you've got to reposition here. Does he wait until the very final moment to try and strike back here close to the corner? Tucked, it's a flash in his face. Dash is there. Looking for the kill. Noah has to respect it. There's a molly at his feet. He got detained anyway. Yeah, I love this. तड़पा के मारो सा. पास रीटेक से भी कुछ नहीं होगा. ओह क्वाउजीन तो भाई, जिंग भाई डब. अगर वो चला जाता पीछे, हील कर लेता, उस पे फ्लैश भी था, एक और मारता, पता है जिंग. ये अच्छा हुआ उन्होंने तुरंत हाउंड डिस्ट्रॉय कर दिया. अब इनको कंफर्म नहीं है हॉल्स में बंदा है कि नहीं, पर हॉल्स में बंदा है नहीं, ढूंढते रहो उसको. जाओ. तो इसने तो एक और दे दिया. दवाई भाई एक तो मारना पड़ेगा आपको, फिर माइंड फ्री कर लेगा 1v1. बोला ना, एक मारना पड़ेगा दवाई भाई, बाकी मार लेगा अपना. ना 2 सेकंड में लाइफ फ्लैश हो गई होगी आसपास के सामने. पर एक राउंड और चाहिए था, पर 7-5 के लिए मैं खुश हूँ. आसपास थोड़ा ओवर एम्बिशियस हो गया था बेसिकली. इधर 2 किल नहीं देने थे रे. लेस ने हक दिया वो भाई. और गुस्सा कर लेकिन और एक सीट मैं भी डिजर्व करता हूँ यहाँ पे. क्या बोलते हो प्रीमो भाई? थोड़ा पहले निकलता तो बच जाता. हाँ वो सोच रहा था कि एक 2 बुलेट मार के डैश आउट करूंगा, सोच रहा था. वो करता तो भी मरता ही. वो उसको मरना ही था वहाँ पे, पर वो ये कि शायद अगर एक किल लेके मरता तो विन विन सिचुएशन हो जाती. They did such a good job of stabilizing after they started
started making those adjustments. It was out on the other side of a timeout, and then PaperX just flipped the switch, man. They started to exploit mid control more. They started to aggressively push into their spawn and catch flat. ड्राइवर्स का नाम भी लिखा है. Yeah, there was the link play to open things up, the try contact play that Alex pulled out of that timeout, and that put a seed of doubt in Osmus's mind the next time they did a B strat, and the ult value from Jake, 3 out of 4 of those rounds, they won 4 Phoenix ults that half. Yeah, yeah, I mean, I'm glad you mentioned Abhivan because he was having a crazy game to begin with, but something dark just creeped ये बहुत पॉपुलर है क्या डेट यार F1 अरे मतलब मोटर स्पोर्ट में क्या है पता है बेबी रेक मोटर स्पोर्ट का सबसे पिनेकल स्पोर्ट है F1 और F1 में टोटल 20 सीट्स है बस तो मतलब वर्ल्ड के सबसे टॉप 20 ड्राइवर्स है वो तो फेमस तो बहुत हैं इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है F1 लेकिन फेमस तो बहुत हैं वो लोग और वो जो एक ड्राइवर है ना वैल्ट्री बॉटास वो पहले मर्सिडीज में था और वो लुइस हैमिल्टन का पार्टनर था वो मतलब वो तो बहुत ही पॉपुलर है वैल्ट्री बॉटास तो बहुत पॉपुलर है हमको लेता तो देखता मैं वीडियो इसकी वो उसने कोलैबोरेट F1 ड्राइवर के साथ नहीं किया उसने कोलैबोरेट किया अल्फा रोमियो के साथ क्योंकि करण औजला और अल्फा रोमियो दोनों एक ही ब्रांड से स्पॉन्सर्ड हैं तो इसलिए वो ब्रांड ने कोलैबोरेशन कराया बेसिकली ये वीडियो का है ना वरना औजला का इतना F1 ड्राइवर के साथ कौन ही वीडियो शूट कराता है वैसे स्टेक की वजह से हाँ स्टेक से दोनों स्पॉन्सर्ड हैं हाँ मजा आया भागो पीछे 4 सेकंड भाई जिंदा रहना 4 सेकंड भाई जिंदा रहना बस राउंड जीतेंगे 5v5 रीटेक करेंगे राउंड जीतेंगे एक ने भी बोन दे दी समथिंग बोन दे के आएगा अपनी बस गया सब बंदे लो हैं उनके 2 बंदे लो हैं आराम से चिल करो भागने दो पीछे भगाओ नाइस वन टाटक भाई छुप के थोड़ा ज्यादा एचपी नहीं अपनी अभी एक बुंड मारेगा ना उधर से ऐसे ही मर जाओगे स्पैम में ही अब अगला जीपी कब है समर ब्रेक चल रहा है अभी तो पता नहीं ओ रे अरे स्मार्ट चलो कोई बात नहीं जिंग भाई एक फ्लैश हो जाता ए पहले कौन पीक किया उधर ऊपर से मॉली कर दो टावर पे मॉली कर दो जिंग भाई निकलो यहाँ से जल्दी यहाँ से हटो समथिंग की 10 HP जिंग भाई आपने बुंड मारनी है वरना ये राउंड जाएगा समर ब्रेक चल रहा है ना देखते हैं अगली ग्राउंड पे अबे यार वो अगली डच है ओ भाई 27 को है अगले वीकेंड और ये तो वर्स्टैपेन की वो है होम ग्रैंड प्री और इस अबे यार नेक्स्ट वीकेंड बहुत इरिटेटिंग होने वाला है मतलब सैंडवुड में है और ये रेस तो वर्स्टैपेन ही जीतेगा और उसका वो रिकॉर्ड इक्वल कर देगा यार सेबेस्टियन वेटेल का 9 कंसेक्यूटिव रेस विन्स इन अ रो वो भी रेड बुल ड्राइवर था भाई रेड बुल सही है भाई क्या कर सकते हैं उनका टाइम चल रहा है रेड बुल जीतेगी और ये वाले सर्किट पे तो रेड बुल और ज्यादा डोमिनेंट है कोई भी सर्किट हो ये अभी तो इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड कार है ना उनकी और वर्स्टैपेन मिस्टेक्स भी नहीं करता भाई डेड आपकी नॉलेज में तो गीला हो गया क्या करें लेकिन इस नॉलेज का स्पॉन्सर तो मिल नहीं रहे इस चैनल के लिए थोड़ी सी कोडिंग अच्छी आती होती तो मजा ही आ जाता भाई अच्छा इसी को मारने दो अरे एक किल लेके मरता ना अल्ट आ जाती भाई अब जिंग की अल्ट आ गई चलो बढ़िया है भाई फिनिक्स अब बहुत हो गया यार फिनिक्स की अल्ट 7 और की कर दो भाई रायट को मेल डालो क्या ये अभी बहुत हो गया भाई अब बहुत हो गया भाई अब 7 और कर दो फिनिक्स की अल्ट के रेड बुल स्पॉन्सर करेगा तो 1-2 पेटी मेरे घर भी भिजवा देना भाई यार रेड बुल की स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत मुश्किल है यार अंकित पंत ही स्पॉन्सर्ड है बस इंडिया में तो और रियान पराग था जब ही वो करता था स्ट्रीमिंग रेड बुल वाले करते नहीं यार स्पॉन्सर ऐसे ही किसी को पर अगर उन्होंने कर दिया ना बहुत बड़ी बात है भाई
क्योंकि एक दो बहुत पॉपुलर क्रिएटर्स थे जो चाह रहे थे कि हमको रेड बुल की स्पॉन्सरशिप चाहिए, मतलब खुला स्ट्रीम पे बोलता था भाई ठग तो मेरे को रेड बुल की स्पॉन्सरशिप चाहिए, रेड बुल की चाहिए, रेड बुल की चाहिए। मतलब उसने इतनी डेस्परेशन दिखा दी थी ना ठग ने रेड बुल की स्पॉन्सरशिप के लिए, नहीं किया उन्होंने। जबकि सबसे बड़ी और है भाई इंडिया की, मॉन्स्टर वाले दे देते हैं। हाँ स्काउट मॉन्स्टर स्पॉन्सर्ड है, सबसे मतलब मेन स्काउट ही है अभी इंडिया में मॉन्स्टर का। मॉन्स्टर के सारे शूट्स वगैरह वही करता है यार। थोड़ा गुड लुकिंग तो हूँ यार, मैं भी डिजर्व करता हूँ कुछ स्पॉन्सरशिप, क्या बोलते हो? क्योंकि बहुत सारी ब्रांड है जो गुड लुकिंग स्ट्रीमर्स को स्पॉन्सर करती है। जिलेट विलेट वाले तो मेरे को कर ही सकते हैं यार, दाढ़ी भी आती है मेरी, क्या बोलते हो? जिलेट वाले कर देंगे, फिर उस तरह से ले लूंगा स्पॉन्सरशिप। अंकित पंत है भाई, उसको उसके 100 के है भाई, फिर भी मतलब 100 के क्या, वो बहुत पहले से स्पॉन्सर्ड है यार वो अंकित पंत तो रेड बुल से। स्काउट से तो गुड लुकिंग हो ही ऑब्वियसली। एक तरीके से अगर मेरे को ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी का पार्ट कंसीडर करोगे तो टॉप 3 गुड लुकिंग में आऊंगा मैं। मजाक कर रहा हूँ, कुछ तो खाने के लिए मन कर रहा है, भूख लग रही है। Does reveal, does break it. Jinx going to be using his ult though. Run it back. Pushing forward. It's dealt with. Cleaned up. Lovely aftershock. Mind free. On the wiser here. Attempt to fight through into the ये तो नुकसान हो गया बहुत। flashes on flashes. Who will be favored? Well, the guns. प्लांट ही नहीं करने दे रहे भाई। दवाई नाइस पोजीशन, क्वाउजिन को पेल दो। अरे जिंग भाई कहाँ, अकेले कहाँ जा रहे हो? दवाई भाई आपने बाय किया है, या तो 3 किल लेके मरो या मर सेव करो। नहीं, पोजीशन रिवील्ड, लेट्स गो, क्लीन राउंड। ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं सर। 2-0 मार्की जो कर पीड़ा। 2-0 क्या बोल रहा है? अरे किस चीज का 2-0? अरे प्रीमूव कैलकुलेट करके बोला था मैंने यार। कौन है बताओ मुझे तुम। ज़्यादा बकचोदी होती है। चल इन जनरल ये बताओ कि कौन है गुड लुकिंग प्लेयर्स कंसिडर कर लो या कंटेंट क्रिएटर्स, गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स में से। ऊपर वाला मैसेज पढ़ो। अरे कौन सा? कुछ तो मैसेज आया नहीं तेरा सबसे हैंडसम। Attempt to punish, definitely some damage done there. Yeah, they're reading into the fact that Sadak was one away from the orb. They knew that somebody was going to be going for the ult, be it Sadak or 2Es, and PaperX were trying to reclear that area. Now, where, I mean, a little bit of an audio bait, perhaps, as Sadak fakes like they're looking. रिमूव तुम बताओ ना कौन है गुड लुकिंग e-sport प्लेयर्स इंडिया में? On the other side of the map. He's collecting it all and he's making a call for his team. And look at this, is PaperX trying to fight over this again? This is no way to finding the timing with the flash. They're trying to push into it. अच्छा ये था, अच्छा ट्राई था ये फाइट जो लेने का ट्राई किया ना उन्होंने ऑन द बैक ऑफ स्काई फ्लैश। ए कर दे स्पैम यार, मैं होता ना यहाँ पे इस प्लांटर को मार दे। क्वाउजिन अगेन, दिस क्वाउजिन गाइस। आप भी स्पीकर वगैरह कलेक्ट करते क्या? पैसा नहीं है तो जब इसलिए, वरना कुछ है मेरे पास। अल्ट भी आ गई, 4 किल 4 सेकंड। That's my boy. कौन से हैं? बताऊंगा, इंस्टाग्राम पर फोटोज भेजूंगा। Forced to back up. And PaperX are winning moments like this. Look at this. Look at the positioning in the moment. Galaxine had such excellent composure early on in the round to be able to grab 2. क्वाउजिन ने कैसे मिस किया ये? Story is told there.
on Sadok's face. Yeah. They had a crossfire set up and they just could not land the shots. I gotta say, that is just a Forsaken moment. Yes, there's it no really way, is. there's no, I mean, I wouldn't even be mad if they showed me the replay again. Because Oh भाई Loud versus Fnatic again. Oh my god. Interesting होगा मैच बट मुझे तो धक धक हो रहा है भाई. precarious barrier and doesn't drop off. Exactly. It's ridiculous. It's ridiculous. It is ludicrous what Forsaken's able to do on every agent he plays too. It's just the absolute 25k के जूते लिए तुमने. unreal. सही है भाई. And he's also picked himself up from the एक स्किन नहीं दिलाता ये लड़का मुझे. on split. He had an awful individual split performance. ओ ये कौन सा सिंगर है बे? कोई नया है क्या ये सिंगर कौन है? Everybody on PaperX just cycling their time to step up. This is a team that's still hunting for their first trophy. They've made it deep in tournaments before, but this feels like their time with something in the roster. Knocked down on split. Not to skew, could have easily been a 2-0. तुम तो कोठी बंगले वाले हो. अरे बेबी रे अपन दोनों को छोड़ के सब कोठी बंगले वाले ही मिलते हैं भाई मुझे तो. मेरे कॉलेज में जितने लोगों से मिला सब कोठी बंगले वाले. साला जिधर जाओ सब कोठी बंगले वाले. हम ही दो रह गए भाई. With a sub in the roster and deliver above and beyond. They've got again something holding down B on his own. भाई जेट डिफ करता रहे तू. हमें जीतने से मतलब है. समथिंग भाई 2 किल लेना है उसके पहले डैश नहीं करना. चैलेंज करो. Jet diff, baby. Absolutely no way. Just a little micro adjustment. I didn't even see it on the screen. It looked like his crosshair was off, and yet he adjusted it so quickly. Movement clean enough as well, just to dash backwards. मेरे पास 4 sneakers हैं, पैसे आते हैं तो खरीद लेते हैं. Something is on one. He's on an अरे रे रे माइंड ट्रिक का दिन नहीं चल रहा है पता है. इसकी किस्मत भी खराब थी कि लेस से फाइट हुई. Unless it's contained. He can't fight them all. Something picks them off one by one. Excellent exploration off the back of the distraction that something was. बोला था 2 किल लेगा The fact समथिंग. that something required no extra resources to do that. No player to break the horn for him or to set him up. And here come Loud. The trickles finally coming back through Arc. अरे Forsaken, but Jing is still here. जिंग भाई फ्लैश करके अगर पीक हो जाता तो. और अब तो तुम्हारी बुंड लगने वाली है. Yeah, okay. जिंग इतना डर के कब से खेलने लगा बे. ओ हील कर दिया ये बढ़िया. Lotus one down. That's 2 players spotted. They know exactly where they are inside the smokes. Help! Lovely recall idea. चल चूज it. चल. हवान दे भाई. Be hard pressed. एशिया पैसिफिक लेट्स गो. मेरे पास एक जोड़ी है वो भी 2000 के. अस ब्रो अस. PaperX stole control of this map away after the first. बेबी रेक भाई अपन एक टीम में है भाई. मैं तो वो लेता हूँ भाई सरोजनी मार्केट से सस्ते में. Like I was saying, PaperX stole हजार रुपए में. Somewhere in the first quarter, and it's just been theirs ever since. Loud 60-50 है सस्ता सा. पिंगो ये हम्बल बनने का ट्राई मत करो. तुम्हारे पास भी अच्छा लैपटॉप है और तुम ले भी लोगे बाद में और भी अच्छा है ना. यहाँ घिस के लिया है ना ये. बड़ी मुश्किल से लिया है ये भी. एज गैप तो देखो. पुणे में रहते हैं ये साले. पुणे में कौन सा सरोजनी भाई वहाँ से मंगवाता हूँ ना दिल्ली से. ये मेरी एक कजिन रहती है दिल्ली. 20 साल से दिल्ली रहती है. शादी हुई तब से दिल्ली में शिफ्ट. मतलब जीजू मेरे वो कोठी बंगले वाले भाई. वो कोठी बंगले वाले. वो कोठी बंगले भाई सब जीजा कोठी बंगले वाले मेरे. मेरे को छोड़ के बस. भगवान मेरे को कोठी के बंगले वाला बनाने का प्लान कब है आपका. मैं भी जरा मेन स्ट्रीट वाले मेरे भी घर पे आके स्नीकर कलेक्शन का वो वीडियो बनाए है ना. हम भी थोड़ी हवाबाजी करें भाई. 2-4 स्पॉन्सरशिप दिला देते तो कोई बात नहीं. Here it is, the money short for Loud, and really no breathing room. You just got to win out from here to have. हम भाई अगर पीसी पर एक धूल भी आ जाए मौत हो जाए. 2.2 लाख के लिए फ्लेक्स करें उतना तो मुझे नहीं लेना. मेरे पास होंगे तो भी मैं कुछ और काम कर लूंगा. पर ऐसे 3-3 लाख 2-2 लाख के जूते तो नहीं लूंगा. जैसे मैं नाइफ स्किन लेने में बिलीव नहीं करता ना वैसे अननेसेसरी महंगे जूते लेने में बिलीव नहीं करता हूँ. मैं स्नीकर एंथुसियास्ट हूँ. स्नीकर हेड नहीं हूँ मैं. मतलब मुझे अच्छे लगते हैं पर ऐसे भी नहीं कि अंधा कलेक्शन है. ऐसा कुछ Still a lockdown and a nightfall here, and the nightfall's great to fight these players over in spawn. Only 2 connection, and
Does allow, yeah, I mean, loud now, no. मुझे तो न्यू बैलेंस ज्यादा अच्छा लगता है भाई. नाइकी इतना, नाइकी को छपरी कर दिया, पता है सही बताऊं तो. इंडियन इन्फ्लुएंसर ने नाइकी को छपरी कर दिया भाई. नाइकी तो बहुत छपरी हो गया भाई. They're all collected into the corner, collapsed upon, and with the Odin spam, it's all together. No one knows which way to face Loud. No, they have to hold on, and they do. How on earth have they done that? No shot. They were all grouped together, so tightly stuffed like sardines. क्या हो गया भाई ये राउंड? A tiny amount of space afforded to them by the defensive lockdown, and yet as the rest of PaperX. यार माइंड फ्रीक ने स्पैम क्यों नहीं किया इधर? पूरी की पूरी टीम एक कोने में है. फॉर सेकंड यार डग आउट जाके खेलना था भाई. Missed that one from Aspas initially, didn't he? Plucked something out of the sky. Sadak knows he's gotten away with it there. So does Fraud. Yeah, that's it. नाइकी के इतने कॉपीज बिकने लगी हैं, साला छपरी लगता है. AJ1 एग्जैक्टली ब्रो. Bailed out by the individuals. And Loud, maybe all they need is a chance. अबे नकली हो असली हो, उससे तो उसमें तो मैं घुस ही नहीं रहा. नकली असली की बात नहीं है. मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो खुद नकली पहनता हूँ भाई. सरोजनी वाले बच गया यार. Survives on 7 health, still vulnerable, tucked to the corner. He needs some help in the rest of his team. And PaperX really just peppering them. There's the turret. टरेट 1 आसपास 0. लेट्स गो. फ्लॉलेस प्राइम गेमिंग फ्लॉलेस. लेट्स गो. प्राइम गेमिंग स्पॉन्सर मी. लेट्स गो. है ना, नकली असली की बात नहीं है. बात ये है कि भाई उसको इतना रद्दी कर दिया ना भाई. And it's not rejoicing on that क्या ही side. बोलूं. They know that they deserved it from the previous round. This one just righting the wrongs. 12-7. जॉर्डन्स तो मतलब रद्दी कर दिया यार. जॉर्डन्स को तो The defensive utility as well. One enemy remaining. It's so varied from PaperX. Some rounds they're going to be going for a contact push. Some rounds it's going to be a heavy fight over A main. They're quirky, man. They're a quirky team to fight. You just don't know. You have no clue what PaperX are going to throw at you because they have so many tools. And that to me is because they don't play off a strat book. They play off the ideas that they come up with in the moment, built from the building blocks of those micro interactions. They know that, you know, they can bring X to the table. Their teammate brings a different quality and they cook that up on the fly. It makes them an extremely difficult team to read. And at the moment, जैसे NB 550 को छपरी कर दिया ना, वैसे ही AJ1 को छपरी कर दिया. एडिडास बेटर भाई. मेरे पास है बैड बनी, वो भी ईस्टर एग कलेक्शन. मैं एडिडास पे शू टेस्टर हूँ तो 1-2 जूते फ्री भी मिलते हैं बास्केट में टेस्ट करने के लिए. भाई प्रीमो तुम क्या क्या हो भाई? तुम ये कैसे बनते शू टेस्टर? मेरे को भी बैड बनी है क्या? हाँ जी. Just the prospect of getting knocked down to the lowers. It's the idea of having to fight your way out of it. And the team that's hunting for their मैं वही लेने वाला हूँ. W champions, but it's PRX in the ascendancy at match point. मैं मतलब नाइकी सर्च भी नहीं करता हूँ. ऐसा हो गया मुझे नाइकी से. मेरा एक दोस्त मुझे बोलता है कि तेरे पास एक अच्छे जॉर्डन्स मिसिंग है. मैंने कहा मेरे को लेने ही नहीं है भाई. मेरे को जॉर्डन्स लेने ही नहीं है भाई. मेरे को छपरी क्लब में घुसना ही नहीं है. भाई इस तो बनी जो तुम तो छुपे रस्तम निकले. अभी वो उस दिन वहाँ गया था ना TC एरिना में, तो वही पहन के गया था. एक भाई ने पैर रख दिया ऊपर. मुझे तो बुरा लगा पर मैंने दिखाई नहीं है. रख दिया है पैर तो मैं क्या उसको वो करूँ यार. बेचारा बंदा कैसा हो गया पता है? उसने देखा जूते की तरफ और बेचारा वो हो गया, कॉन्शियस हो गया. ब्रो सॉरी आई अंडरस्टैंड. Even I would feel bad. ऐसा करके मैंने बोला ब्रो इट्स ओके. कितने के है मालिक? ईस्टर एग एडिशन है मेरे पास. पैसे वैसे की बातों में नहीं जाएंगे. अभी हम मैच देखो 7-13 तो ऐसा भाई तेरे को डैमेज नहीं लेना था यार. तू तो हील कर सकता है दूसरे को. तेरे को कौन हील करेगा दोस्तों? भाई ये क्या करता है यार? 4v4 4 सेकंड एक्सपेक्ट कर रहा है और पेलेगा भी. लॉल मरेगा. अरे बच गया रे. चलो कोई स्पैम भी नहीं कर सकता इसको. 3v3 gave his own life away for it. Here comes the retake from Paper. It's a flash. It's just a 1-for-1. It's replied and responded with. Still, the pull is there. 2 years.
होल्ड कर लिया और गया रुकना था रे दवाई, उसको आने देना भाई। तेरे घर का गेम है क्या, तू फाइट ले रहा है उधर उससे अकेले? They're going to have to be able to pull another 4 of those out of somewhere. That's what it takes. I mean, they don't have those ultimates available anymore. They don't have the lockdown or the rolling thunder to be able to generate those advantages. When Aspas tried to make the play, आपने खरीदा कैसे भाई? आते ही गायब हो जाता है वो साइड से। सरोजनी से लिया है बोलते भाई, तुम लोग पूरी बात ही नहीं सुन रहे हो यार। क्या तो रहा हूँ, सरोजनी से लेता हूँ भाई। Aspas definitely heard something there. भाई मैं थोड़ी पैसे वाली पार्टी हूँ, मैं ओरिजिनल लूंगा सब। घर जाएगा भाई मेरा वो ओरिजिनल लेने में। मैं नहीं मानता भाई अब। अरे सही बोल रहा हूँ यार, कैसे मनवाऊँ? मत मानो मेरे को, तुम्हारे सामने मनवा के क्या ही करना है मेरे को। मुझे तो मेरी सच्चाई पता है ना भाई, मुझे तो मेरी सच्चाई पता है ना कि मैं मॉडल 3 डिजर्व करता हूँ, भले ही मैं सन 2 में झूल रहा हूँ अभी। I assume off the Vi's contact. Stun is good. Dash forwards as well. There's the punish. Nasty stuff. Aspas. फ्लैश ही कर देता पहले यार। Absolute brilliance on display, but a backstab attempt to buy. He's a menace, man. He's an absolute मैच फंसेगा, मैच फंसेगा। पिछला राउंड 1v2 दे दिया काउजिन को। Ready for it. But a decision is made for something. Can't take it into the 1v3. Got to back away and save the operator. Has to be one round at a time, and so far, it's been the case for Loud. These rounds are on the slimmest of margins. Yes, this is a 3v1 where something has to save, but that entry from Aspas was so close to getting punished by the flash. Jing, if he'd been half a second earlier, would throw the curveball. जहाँ पे जाता हूँ ना ईस्टर वो बैड बनी पहन के, भाई मेरे को 10 सवाल पूछते हैं। मतलब पहन के जाना ही बंद कर दिया क्राउडेड प्लेस, मतलब पार्टीज वगैरह में। That is 5 chances whittled down to only 3. मजाक कर रहा हूँ, मतलब पहन के जाता हूँ अच्छी पार्टी के लिए पहन के जाता हूँ। The economy should be better and better for them, building back up to ultimates that they can use. But in every situation, it only takes one big play from a PaperX player. I mean, look at that. He's essentially full blind when he gets the first kill onto Jing. And then denies Devi a hero play that would have sent them sailing to the upper bracket finals. There's a tiny bit of frustration there still showing for Alex. But I think a lot of that is the building tension and anticipation for the team's victory that ends up getting burned away. Sometimes these can be the hardest rounds to convert, though. If you are Loud against the weaker weaponry, you have to respect a lot. Good news for them, though. They're a couple away from these ultimates. Someone's got to deal with that. The horn broken, spam into the corner. Taken. Now he's really trapped. It's going to be util here, surely, to try and clear him out, but it's smoked across. He gets away with his life. And he's still going back for more. It is a weaker buy from PaperX. So they can afford to go for these kind of risks. This entire time they have just been pushed up here. They have no control of A main. Something's here with the operator. Yeah, if they start rotating back over, do they clear this jet properly? Oh, the cancel called. They're going back over to B. Loud. Why are they rotating here? Maybe not exactly sure where they want to end on the map, but they've just dodged a bullet, I think. Yeah, but specifically from something. Seeker's pointing it to wherever. Okay, Forsaken falls. Loud should be able to get onto this one fast enough, but yeah, there it is. Devi, he was just trying to flood into the back of the site before to try and take that timing off of them. Players holding the cross here, but it should be the weapons to get them through it. The dash and the flash. Attempts once more. Jing is so wide with it with the Bulldog. Another flash available. Everyone's blind. And it is really just that coin flip. Something. 1v2. Does he go for this now? Only with the operator. Has the dash. But doesn't know where any of these players are. What a moment this is. Tugged together for Loud. It's all about how they shut it down. No damage done. And where is the reposition? 2 years close to the corner. You can breathe a sigh of relief. Oh. A chance for the young superstar to pull his team into the upper bracket finals to win an unlikely 1v2. But he's not quite up to the moment just then. Loud
navigate another one of those difficult rounds where Ching looked like he was potentially going to do it all with the flashes. He gets his ult back online. There's a lockdown here on defense as well. This could be the most challenging round for Loud to win yet if they want to pull this back into overtime. It's been 3 in a row for the Brazilian side. ये टीम क्वालिफाई होगी भाई। पैराडॉक्स और ये सब किसमें है? मेडल क्वालिफाइड फॉर आरबीसीसी इस्तांबुल जाएंगे अब ये लॉन्डे। लेट्स गो। आज पैराडॉक्स बहुत गंदा खेलता है भाई। कुत्ता बनाता है पैराडॉक्स। No one's going to be walking in that though. Paperex happy to play retake towards B. This is a fake with the Nightfall and 2 smokes over towards A. Somebody's just calling the bluff, man. Horns in his face here, still holding it down. He actually can't hit a sound cue, so it has thrown a bit of disarray now. The lockdown! Lockdown, yeah, this is the key. Piece of utility, there needs to be a deal. Try and break this one. It's a stun and an aftershock into the corner, enough damage done here. What are you going to do? Just tickle it. Stun though, still there. Aspas close to the corner. He's brought down, and this could be it. The final blow, corner. Let's go, bro, let's go. Let's towards the back. So much more to do here. The reposition and the run it back. भाई, it's disgusting. ओ भाई, let's go. जिंग ने क्या कर दिया? आज ये, अरे नहीं रे. Blocked off entirely. It's an absolute heroic attempt, but Paperex have done it. लाउड वर्सेस फनाटिक, लेट्स गो. अब की बार नहीं जीतने देते भाई तुमको. What a magnificent performance from Paperex there. In control of the final map, fending off the comeback. After they got smoked on their own map pick, 13-2 down on split. This series could have very easily been a 2-0 and sailed Loud through in dominant fashion to an upper bracket final where they look like the best team potentially in the world. You know, that could have easily been the narrative coming out of Lotus and Split. And yet Paperex subvert that with magical performances to steal Lotus away. And then a dominant performance again. 4-0 with this Jet Phoenix composition on Pearl. Like they have so many good ideas, but for Loud, the journey isn't over yet. They got pushed, couldn't grab the win today, but another chance of glory into the lowers. That's where they're going to have to fight from. And they are going to play against EDG Edward Gaming. That is one to keep your eye on. Acha. Go the way of the Brazilians at Tokyo. Fist bumps all round though, as Loud have gone 3-0 against the EMEA teams, but 0-2 against the Pacific. तो बच्चे छोटे ही होते हैं भाई एज में, स्पोर्ट्स प्लेयर सब यंग होते हैं. Paperex on top. Paperex are your first team to book their ticket into that upper final with something finally in the roster, showing himself, the team in full force. The scary thing is, man, I mean, talk about individuals stepping up. It's a whole team effort across the board in our final map. Aspas was on a heater. It was 27-14, that's how he ended it. The whole team came together to shut him down. There was moments of brilliance. For a second, बेचारा कितना innocent है यार. Yeah, I really feel like this was a great series in terms of showing the fact that Paperex's roster is extraordinarily stacked and balanced. You know, there are different players that can turn up whenever needed to save a round or to make a play. And that is why they play such a chaotic style, because all of their players can be playmakers. If they spot the opportunity to PLR.gg, hello. It's about finding the right Loud इधर भी, Loud इधर भी. हाँ, Paperex को बाहर घर भेज दो. बराबर. Scrappy team into a team that can win a championship, and at the moment, Paperex को घर भेज दो, ठीक है. Yeah, the teams that we've got remaining, I mean, man, they are just sailing all the way through as well. There might be a bit Paid of by Loud. in that upper finals that they've earned themselves to, but yet to be seen. अच्छा तो DRX और EG में जो जीतेगा वो फनाटिक से. भाई EG हारनी चाहिए आज. वो Demon 1 बहुत बकवास, वो बूस्टी और ये सब बकवास करते हैं ना. DRX जीतो आज EG और फनाटिक का मैच चाहिए मेरे को कल. मेरे को नहीं पता. 21 को ना कल ही होगा ना ये मैच. 23 घंटे. अच्छा तो ये मैच. अरे यार कल पहला मैच लाउड EDG का स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा, फनाटिक का मैच है. अभी और कौन से मैच? अभी है EG और DRX W मैच. बहुत मस्त मैच होने वाला है. हाँ एक बार बताता हूँ भाई, Demon 1 मैं उस कैटेगरी में ऐड करता हूँ, टेंस वाली कैटेगरी में, कि मारता तगड़ा है पर मतलब समझ रहे हो कि
कि रैंक प्लेयर है बेसिकली, लेकिन पिछले मैच में बहुत मस्त खेला भाई, बहुत मस्त खेला और पिछले मैच में एस्ट्रा खेला है भाई, जेट प्लेयर सीधा एस्ट्रा। भाई रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी उस बात के लिए। जो भी देख है जी, तुक्के चल गए हैं। नहीं नहीं, एस्ट्रा पे तुक्का नहीं चलता भाई। जेट पे तू बोल सकता है कि क्या पता मार रहा है, चल जेट पे मार रहा है। एस्ट्रा पे तुक्का नहीं चलता। एस्ट्रा लेके भी टॉप रैक किया था दोस्त उसने, किधर गया? स्प्लिट पे देख, 20 किल सबसे ज़्यादा। एस्ट्रा लेके 20 किल किए उसने, 1.1 का उसका वो है रेटिंग, 206 एसीएस एस्ट्रा लेके। मजाक है क्या? असेंट पे देख कुत्ता बनाया इसने 22 किल, पर्ल पे कुत्ता बनाया 25 किल। मजाक नहीं है भाई। भाई तुम जब वो बुरा खेलता है उसकी बुराई कर देते हो, पर अच्छा खेला तो तारीफ भी कर दो ना यार। कहाँ जा रहा है? हमसे थोड़ी पैसे ले रहा है, या हमें हमारी कौन सी टीम खेल रही है भाई? मेरी स्पॉन्सर टीम है जिसके अगेंस्ट जीत गया हो तो मैं उसको गाली भर दूँ कि साला मेरी टीम को हरा गया। अच्छा खेला है तो कर दो तारीफ। सॉरी डैड, हाँ कोई बात नहीं। ट्रैश टॉक से टिल्ट हो गया। ट्रैश टॉक तो बूस्ट ही करता है भाई। दिखाना मुझे कलेक्शन भाई आईजी पे, दिखाता हूँ बाद में। क्या ही करोगे मेरा कलेक्शन देखे भाई? कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। ईस्टर ईस्टर कुछ नहीं है, मजाक कर रहा था भाई। मेरे पास है वाइट कलर के जूते उसके, एलेक्जेंडर मैक्वीन के बेसिक, और कुछ नहीं है। ऐसे ही देखने का मन है। नहीं, मेरे पास है गोल्ड स्टार की ई स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट। देखो एलेक्जेंडर मैक्वीन, और क्या चाहिए भाई? सरोजनी वाले हैं भाई। 20,000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम कंप्लीट हो गया अपने चैनल पे 2 दिन पहले। यूट्यूब एनालिटिक्स बता रहा है ये चीज़, 20,000 आवर्स। उसमें से 1,000 घंटे तो उसी का है जो स्ट्रीम टाइम वाली वीडियो। 830 घंटे उसका इलेक्ट्रोबॉट पीसी अनबॉक्सिंग वाले का, 801 घंटे इस वीडियो का, 387 इसका, 366, 286। ना मुझे पुष्टि चेंज आती है लेकिन वो चेंज नहीं होते। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। अरे यार, और सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किसने देखी है और चैट किसने करी, ये भी पता लगता है क्या? हाँ वो नाइट बॉट बताता है, नाइट बॉट की वेबसाइट पे जाता हूँ। अभी टॉप चैटर में शायद तुम ही होंगे फिर। अभी तो पहले मर्लिन हुआ करती थी परमानेंटली, 3 साल से वही थी, अब शायद चेंज हो जाएगा। अभिनव पांडे दिखा रहा है अभी टॉप चैटर। ये कितने दिन का बताता है वो नहीं पता मुझे, मतलब वो इंटरवल्स का होता है, कुछ कुछ इंटरवल का। तो पहले हमेशा मर्लिन होती थी, अभिनव होगा शायद। हाँ वॉचिंग आवर्स मैंने डाला नहीं है। टॉप कमांड में भी जीजी आ रहा है और टॉप चैटर अभिनव पांडे आ रहा है, सेकंड तुम हो। सिंस सिंस 8/13, मतलब 13th ऑफ अगस्त से अभी का है। वो शायद वीकली वीकली दिखाता है शायद, ऐसा कुछ तो है, वीकली या मंथली कुछ तो होता होगा। 13th ऑफ अगस्त, हाँ। थर्ड पे मंदार भाई है, फिर अमित है, फिर बेबी रह के ओंकार है, ध्रुव जेटली, वेनम 100 क्रैश, फिर प्रियांशु। फिर गेमर बडीज, माया ओडब्ल्यू, शुभ, ऐश वाईटी, लिएवरेट, ईशान के, यश, थिंके टांके, सर्वेश कुलकर्णी, हुसैन, समर्थ भारद्वाज, मनीष कुशवाहा, प्रणव गेमिंग, आयु, और फिर वेजी बॉय वो फेक वाला, ऐसे है।
हार्ट वॉचिंग कैसे आ रही है? हाँ अभी तो मैच ही बंद कर दिया। जस्ट सेटिंग के टाइम क्यों इतनी वॉचिंग आ रही है भाई? पहले आ जाते भाई, इतना अच्छा मैच देखा हमने PRX का। 9 हो गई क्या? कौन है भाई ये डब्ल्यू गेमर्स रात को आ रहे हैं जो? चलो भाई कल आना फिर सारे लोग। सब्सक्राइब कर दो अगर कोई नया आया है चैनल पे तो। सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहा कोई ना। कोई चैट 9 लोग में से कोई चैट कैसे नहीं कर सकता है भाई? चुपचाप क्या देख रहे हो तुम? हाँ कल एक वीडियो डालनी है, उसका थंबनेल बना के सो क्या? हाँ बना के सोता हूँ। और उस वीडियो को एक्सपोर्ट भी नहीं किया, उसको एक्सपोर्ट लेट्स गो। यश भाई पूरा मैच देखा ना?